A very good morning to everybody. We are starting the program now. But before that, I'd request our honorable dignitaries, Madam Rekha Sharma, Honorable Chairperson, NCW, Shri Balaji Srivastav Sir, Director General, BPR&D, Shri A. Asholi Chalai Sir, Joint Secretary, NCW, and our esteemed speakers, Shri P.M. Nair Sir, Dr. Shekhar Sheshadri Sir, Shri Virendra Mishra Sir, and Madam Hasina Kharbib to come up on the dais, please. Namaskar. On behalf of NCW, I'd like to extend a very warm welcome to everyone, our honorable dignitaries on the dais, our distinguished speakers, and our esteemed audience spanning across different states and UTs, right from Ladakh to Tamil Nadu. Our sincere gratitude to each one of you for being with us here today. We are deeply grateful to our honorable chairperson, Madam Rekha Sharma, for her unstinted support and guidance 24/7 for organizing this program. We are also deeply grateful to Shri Balaji Srivastav Sir, Director General, BPR&D, for actively collaborating with NCW with equal zeal, concern, and commitment to this important cause. Human trafficking is one of the gravest deprivations of human rights and dignity. With each day, this organized crime network is growing in dimension, intensity, and spread. Trafficking trends, patterns, and strategies evolve over time and adapt to new demands, challenges, and law enforcement responses. This is the reason why all of us, the anti-human trafficking warriors, we are the anti-human trafficking brigade, we are here today to revisit the gravity of the whole issue and the renewed efforts that are required at various levels to contain it. Combating human trafficking requires a well-coordinated and integrated approach by all the stakeholders, and it will only be possible if all of us are united in our common goal to fight trafficking together. The first step to address any issue is to have complete understanding of the problem at hand. And this is the reason why we are here today, to empower ourselves, to enlighten ourselves with all the knowledge, all the tools, and all the insights that are required to combat this issue more efficiently and effectively. On this encouraging note, let's begin the program by having the auspicious lamp lighting ceremony, and I'd request all our honorable dignitaries to kindly do the honors, please. Thank you so much. We'll have the felicitation ceremony now, and I'd request our Joint Secretary, Sir, Shri A. Asholi Chalai,
to kindly felicitate our Honorable Chairperson, Madam Rekha Sharma, with a small token of our gratitude. I'd also request our Joint Secretary, sir, to felicitate our Honorable Chairperson, Madam, to felicitate DG BP R&D, Shri Balaji Srivastav, sir. I request our Under Secretary, Madam, Dr. Shivani De, to felicitate our Joint Secretary, Shri A. Asholi Chalai, sir. I request our Honorable Chairperson, Madam, to felicitate our esteemed speakers, Dr. P.M. Nair, sir. Dr. Shekhar Sheshadri, sir. Shri Virendra Mishra, sir. Ms. Hasina Kharbib. And our Joint Secretary, sir, Shri Asholi Chalai, sir. Thank you so much, everybody. I now request our Joint Secretary, Asholi Chalai, sir, to kindly deliver the welcome address. Honorable Chairperson NCW, Srimati Rekha Sharmaji, and Sri Balaji Srivastava, respected Director General, Bureau of Police Research and Development, respected chairpersons and vice chairpersons of the State Women Commissions from various states, respected resource persons sitting on the dais, officers of various ministries and departments, police departments, paramilitary forces, civil society organizations, NGOs, distinguished guests, ladies and gentlemen, girls and boys. A very good morning to all of you. On behalf of myself and NCW, I extend a very warm welcome to all of you to today's seminar on anti-human trafficking awareness. Trafficking in persons, especially women and children, for sexual exploitation, prostitution, forced labor, forced marriage, domestic servitude, adoption, begging, organ transplants, surrogacy, drug peddling, etc., is an organized crime that gravely violates human rights and of that of the individuals. Combating and preventing human trafficking requires a holistic approach involving crucial stakeholders. An integrated action in the prevention of human trafficking, protection and rehabilitation of victims, and prosecution of the offenders is essential. Some factors responsible for trafficking in women are gender discriminations prevailing in our society, poverty, lack of access to education, lack of livelihood and job opportunities, search for a greener pasture, economic opportunities, etc. Certain challenges and issues associated with human trafficking are underreporting or no reporting of cases, challenges in the investigation and processing,
the cases, especially establishing evidence against accused traffickers, poor implementations of the schemes related to trafficking, lack of awareness among young girls and boys, even and especially women, about human trafficking, lack of rehabilitations of victims, and their reintegration into the mainstream of the society. Trafficking trends, patterns, and strategies evolve over time and adapt to new demands, challenges, social and political realities, and law enforcement responses. In this context, it is imperative to revisit both the gravity of the whole issue and the renewed efforts that are required at various levels to combat the issue of human trafficking. Today we have esteemed speakers, Dr. P.M. Nair, ex-DG, National Disaster Response Forces, and ex-chair, Professor, Tata Institute of Social Sciences, Sri Vendra Misra, Assistant Inspector General, State Industrial Security Forces, Madhya Pradesh Police, Dr. Shekhar Sashadri, former Dean Behavioral Sciences Division, and ex-director Nimhans, and Ms. Hasina Kirby, founder and chairperson, Impulse NGO. We also have among us the chairpersons and vice chairpersons of the state women commissions and officials from various state commissions, and also officials from WCD and social welfare departments of various states, UTs, senior police officials, senior officials from paramilitary forces, government organizations, National Commission, administrative and police training institutes, civil society organizations, medical institutions, universities, colleges, and media personnels, among others, to deliberate on key aspects of this human trafficking, the ground-level challenges, and also existing legislation and its implementation. In the recent past, we have had consultations with various experts on the same topic. The Commission has observed that difficulties in combating human trafficking includes various factors like lack of rehabilitation of traffic victims, fear of re-trafficking, and insensitive attitude towards traffic survivors and their families. Therefore, it is imperative to improve the monitoring mechanism and encourage government agencies regarding measures being adopted for prevention of traffic and rehabilitations of the victims. There is a need to assist and support survivors of trafficking in rebuilding their lives by imparting need-based training, organizing capacity building programs to provide them alternative source of livelihood and employment, and also create awareness to equip the society to proactively address issues regarding human trafficking. Therefore, it is very important to focus on dealing with the subject matters from a human rights perspective and a victim-centric approach. Thus, creating awareness among the key stakeholders of various aspects of human trafficking is a foremost step in addressing the issues and challenges. Creating awareness regarding the offense of trafficking will not only provide requisite information, but also enhance knowledge and empower them to combat this heinous crime more effectively. It is with this objective that the National Commission for Women, in collaboration with Bureau of Police Research and Development, feels privileged to organize this important seminar on human trafficking, to deliberate on some key issues. On behalf of the NCW, I appreciate respected DG BPRND for having this important collaboration in organizing this important workshop. I'm also grateful to our Honorable Chairperson, Madam Rekha Sarmaji, for taking this initiative
to organize this important seminar in collaboration with BPRND. Madam has been a source of inspiration for all of us always. I'm sure as we have this full-day seminar, we would be able to deliberate on all the important aspects and will be able to come out with feasible recommendations. With these few words, once again, I welcome all of you to this important seminar. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir, for setting the tone for today's program and enlightening the audience with your enriching insights. Moving on, I now request Shri Balaji Srivastav, sir, DG BPRND, to share his thoughts on this occasion. माननीय अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग श्रीमती रेखा शर्मा जी, संयुक्त सचिव एनसीडब्ल्यू श्री ए अशोली चलाई, तमाम जो टेक्निकल सेशंस के डोमेन एक्सपर्ट्स हमारे साथ मंच पे विराजमान हैं, श्री पीएम नायर साहब, श्री वीरेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर शेखर शेषाद्री और मिस हसीना कारबी, विभिन्न राज्य महिला आयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधिगण, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारीगण, एनसीडब्ल्यू और बीपीआरएनडी के उपस्थित अधिकारीगण, विषय विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित शिक्षाविद, मीडिया के यहाँ उपस्थित हमारे मित्रगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग श्रीमती रेखा शर्मा जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अवैध मानव व्यापार के विभिन्न आयामों पर जागरूकता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरएनडी के सहयोग से इस महत्वपूर्ण विषय पर आज की संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मानव तस्करी, देवियों सज्जनों, व्यक्तियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के साथ साथ उनकी गरिमा और सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। विश्व में इस अपराध का शिकार सभी उम्र तथा पृष्ठभूमि के पुरुष, महिलाएं और बच्चे हो रहे हैं। अवैध मानव व्यापार करने वाले अक्सर झूठे रोजगार के वादे, बेहतर जीवन यापन का लालच, परिवारजनों को आर्थिक सहायता इत्यादि का प्रलोभन देते हैं और जिन्हें ऐसे वादे वैध लगते हैं वे मानव तस्करी के आसान शिकार भी हो जाते हैं। हम सभी के लिए मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी प्रावधानों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिससे इस गंभीर समस्या को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए समन्वित संस्थागत व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना और किया जा सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत मानव या व्यक्तियों की तस्करी आप सब जानते हैं कि निषिद्ध है। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 and the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, PROXO, ये तमाम एक्ट स्टैट्यूट्स जो हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी से संबंधित कुछ बहुत ही प्रमुख कानून हैं। आप लोग को अवगत कराना चाहूंगा कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के तुलना में 2020 में करीबन 22.4% की गिरावट के साथ साथ मानव तस्करी के कुल 1714 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें कुल 4709 पीड़ितों में 2222 बच्चे यानी कि 47.2%, 47.2%, और 2487 वयस्क व्यक्तियों, एडल्ट्स 52.8% की तस्करी की गई है।
इसके अलावा 4,680 पीड़ितों विक्टिम्स को तस्करों की पकड़ से छुड़ाया भी गया है। तस्करी के 1714 इंसिडेंट्स में मामलों में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा कुल 4,966 लोगों को गिरफ्तार किया गया। I'm just giving you a sense of the proportion of the crime in this country as far as this very important domain is concerned. मानव तस्करी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए विभिन्न हितधारकों, the stakeholders, we're all present here in plenty, को इस समस्या की वास्तविक सीमा और परिमाण, the magnitude, the sheer magnitude of and proportion of the problem को समझना is therefore very, very important. मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि BPRND राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के एक थिंक टैंक के रूप में एक सुरक्षित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। देश में सभी पुलिस बलों के प्रशिक्षण पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नीति संबंधी जानकारी प्रदान करना हमारे ब्यूरो का मैंडेट भी है। हमारा ब्यूरो BPRND भारतीय पुलिस बलों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी क्षमता निर्माण के लिए संबंधित विषयों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर आयोजित और प्रायोजित करता जा रहा है, जिसमें सभी स्तरों के पुलिस अधिकारियों को विशेष अभियान, साइबर अपराध, प्रबंधन कौशल, सॉफ्ट स्किल्स और महिला सुरक्षा के साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग जैसे अहम मुद्दे पर हम लोग इन लोग को प्रशिक्षण भी देते आए हैं और देते रहेंगे। और इसमें प्रिवेंशन, डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन तमाम पहलू शामिल हैं। ये प्रशिक्षण राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, IIMs, IITs, IIITs के साथ साथ BPRND के हमारे जो आउटलाइन यूनिट्स हैं, द CAPT भोपाल, सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग भोपाल, अथवा 5 हमारी CDTIs हैं पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं, द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चंडीगढ़, गाजियाबाद, हैदराबाद, जयपुर एवं कोलकाता में आयोजित किए जा रहे हैं। We are also in cooperation with the friendly countries, I-Tech countries जिसे हम कहते हैं। विभिन्न देशों के सहयोग से ब्यूरो द्वारा अनेक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत भारत के पुलिस अधिकारियों को विदेशी पुलिस संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है। देवी और सज्जनों, पिछले कुछ वर्षों में BPRND ने जांचकर्ताओं के बीच अपेक्षित कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों व एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के मामले में भी सभी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच क्षमता निर्माण के लिए भी कई पहल किए हैं। आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो हमारी इकाई, अभी हमने उसका वर्णन भी किया, CDTI कोलकाता, ये CDTI कोलकाता जो हमारी मानव तस्करी, कम्युनिटी पुलिसिंग तथा महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा BPRND ने कई सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है, जिसमें मानव तस्करी से संबंधित नए रुझानों तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। मैं मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने में BPRND के साथ भागीदारी करने के लिए माननीय अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग श्रीमती रेखा शर्मा जी का अत्यंत आभारी हूं और इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की समस्त टीम को पुनः बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संगोष्ठी में होने वाले विचार विमर्श मानव तस्करी की विभिन्न चुनौतियों को सामना करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आपने बिल्कुल सही कहा है कि मानव तस्करी का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। बिकॉज अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग
is a victim of multiple crimes at all stages of trafficking. इसीलिए इस महत्वपूर्ण सेमिनार का आज आयोजन किया गया है. I now request our Honorable Chairperson, Madam Rekha Sharma, to kindly address the gathering. Namaskar. Good morning, everyone. Shri Balaji Srivastav, Director General BPR&D, Shri PM Nair, ex-DG, NDRF, and ex-Chairperson TIS, Shri Virendra Mishra ji, AIG, SISF, Dr. Shekhar Seshadri ji. He is former Senior Professor, Advisor, Samvad. Hasina Karbi, Founder, Impulse NGO and Network. We have officers of BPR&D, Chairperson and members of the commissions, ministries, member of ministries, national commissions, different national commissions, senior officials from social welfare, WCD, senior police officers, paramilitary forces, and young children of young students of colleges, academicians, NGOs. We have also the media persons. I welcome you all in today's program. Let me thank BPR&D for collaboration with us in this very important program. And this is not the first time, sir, we are collaborating. I think in future also we are going to collaborate. And in past we had many, many programs together and very successful one. Thank you once again. We all know that human trafficking is the most heinous crime against mankind. It is also the oldest, and it is, I think, as old as the humankind. Also, we all know that most of the women and children are vulnerable against this crime. All over the world, I think 80%, because it is just an estimate, there is no perfect data about it. 80% women and children are there who are being trafficked and who are the victim of trafficking. Around the world, three P's paradigm fundamental framework is used. 3 P's are prosecution, protection, and prevention. Though the prevention is in the end, it is mentioned, but I'm going to talk about prevention today first. Because if we don't work for prevention, this heinous crime is not going to stop. So prevention, jahan par source, the source states, source places, we should first give our whole attention towards it, and that's what I'm going to talk, especially where the women and children are concerned. ये कहाँ से होता है और क्यों होता है, इसके ऊपर बात करें अगर, तो मुझे लगता है बाकी चीज़ें, चाहे वो ट्रांजिट हो या डेस्टिनेशन हो, वो बाद की बात है, वो मेरे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो भी बात करेंगे. लेकिन फर्स्टली वी फुल्ली गिव अटेंशन टू द प्रिवेंशन. और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? द माइंड सेट ऑफ पीपल, द फैमिलीज माइंड सेट, द सोसाइटीज माइंड सेट, हाउ विमेन आर बीइंग विक्टिमाइज्ड इन द सोसाइटी, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या वायलेंस अगेंस्ट विमेन कहीं पे भी हो, ये फर्स्ट चीज होती है जहां से विमेन आर बीइंग विक्टिमाइज्ड इन ट्रैफिकिंग. तो लेट्स स्टार्ट हाउ these crimes are increasing at the source places and how women are being victimized and coming into the trafficking, this thing. We have many, I have listed many things, but I'm not going to talk about it because our resource persons will talk on in detail. But how these things happen, lack of education is one thing, because women are the, I think, worst, whereas the education is concerned. They don't get proper education, they don't have proper opportunities to earn, because they don't have education, they don't have opportunities to earn, then they don't have awareness. उनको पता नहीं है कि कैसे
लोग, घर के ही लोग उनको ट्रैफिक करते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है ये स्टार्ट होता है किसी ऐसे व्यक्ति से जो खुद जानता है उन लोगों को, फैमिली का होगा ट्रैफिकर या उस गांव का होगा जो ये शुरू करेगा। और बिकॉज महिलाएं जानती नहीं है, अवेयर नहीं है कि किस प्रकार से ये ट्रैफिकर्स काम करते हैं और वो इनके जाल में आ जाती हैं, तो उनको अवेयरनेस भी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास अर्निंग के। अगर कोई प्रॉमिस करता है उनको कुछ अच्छी अर्निंग का तो वो मान जाती हैं। और एक तो सोर्स प्लेसेस पे भी अर्निंग की ना होने के कारण, सुविधा ना होने के कारण ये दूसरी जगहों पर जाती हैं। महिलाएं स्पेशली, मैं महिलाओं की बात करूंगी क्योंकि हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में महिलाओं के लिए ही काम करते हैं, तो मैं उन्हीं की बात करूंगी। अधिकतर जब उनको काम करने की सुविधा नहीं मिलती अपने गांव में, अपने छोटे जिले में, तो वो प्रॉमिसेस के आधार पर वो दूसरे शहरों में जाती हैं, लेकिन बाहर जाकर पता चलता है कि जिस प्रकार की प्रॉमिस किया गया था वो ना वो सैलरी है, वो ना ही वो काम है। तो उनके पास ना रिसोर्सेज है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास स्किल है कुछ काम करने का, तो वो विक्टिमाइज हो जाती हैं। गरीबी बहुत बड़ा कारण है और गरीबी के कारण ही सब कुछ, ये एक चेन सिस्टम है, ना एजुकेशन है ना अपॉर्चुनिटी है। और गरीबी जिन जिन जगहों पर आप देखेंगे वो जो भी सोर्स प्लेसेस हैं, गरीबी के कारण ये महिलाएं इस ट्रैफिकर्स के जाल में आती हैं। पुलिस एपैथी, बिकॉज यहाँ बहुत सारे पुलिस के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक पुलिस एपैथी भी, जब ऐसा कुछ होता है एक महिला के पास, सबसे पहले वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन जहाँ उसको पुलिस उनकी बात नहीं सुनती तो वो भी, और ट्रैफिकर्स की बात ज़्यादा सुनती है। एक बहुत बड़ा जाल है, ये नेक्सस है जो ट्रैफिकर्स और पुलिस के बीच में भी, उसको भी हमें आज तोड़ना है। और जब यहाँ सभी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं ये बात खुल के कह सकती हूँ, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, महिलाएं विक्टिमाइजेशन बार बार होता रहेगा। और ये हमेशा देखा गया है, हमारे पास भी जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें भी देखा गया। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि 50% ऑफ कंप्लेंट्स हमारे पास जो आती हैं वो पुलिस एपैथी की आती हैं, किसी भी, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई भी किसी भी प्रकार का वायलेंस हो, जब पुलिस नहीं सुनती है तब हमारे पास आती है। और आज हमें इस नेक्सस को भी तोड़ने की बात जरूर करनी चाहिए इस प्रोग्राम में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं को जो सोसाइटी से है उसका माइंडसेट है। कोई भी प्रॉब्लम परिवार में आए, सबसे पहले ये देखा गया है कि महिला टारगेट होती है या छोटे बच्चे टारगेट होते हैं। अगर घर में पैसे की कमी है तो सबसे पहले महिला को, और मुझे लगता है फैमिलीज भी हिचकिचाती नहीं है कि उसको किस प्रकार से यूज किया जाए महिला को। अगर बेचने की बात भी है घर की बहू बेटी को, तो वो तक भी, यहाँ तक भी होता है। और बहुत सारे गांव में परिवार, ये मेरे ख्याल डॉक्टर मिश्रा इस पे बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं जहां परिवार खुद बच्चियों से, अपनी माइनर बच्चियों से भी ये काम करवाता है। और ये सेक्स ट्रैफिकिंग की बात कर रही हूँ। ट्रैफिकिंग बहुत प्रकार की है और एक्सपर्ट्स इस पे बात करेंगे, लेकिन महिलाओं की जब ट्रैफिकिंग की बात करें तो ज़्यादातर, अधिकतर सेक्स ट्रैफिकिंग में भेजी जाती हैं। अब वो और तरह की ट्रैफिकिंग भी है, जैसे सरोगेसी के ऊपर है या स्लेवरी पे भी है, जैसे काम कराने पे भी है, बहुत सारे प्रकार की है, बट मोस्टली सेक्स ट्रैफिकिंग पे ही महिलाओं को ट्रैफिक किया जाता है। आज जब यहाँ से हम जाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर देखा गया है कि इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो NCW ने एंटी ट्रैफिकिंग सेल बनाया है, ये उसकी शुरुआत है। और क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स हैं, कमीशंस हैं, डिफरेंट कमीशंस हैं, स्टेट चेयरपर्सन्स हैं कमीशंस के, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं। आज मैं चाहूँगी कि यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा लेके जाएं, और मैं प्रार्थना करना चाहूँगी अपने रिसोर्स पर्सन्स की भी कि वो लास्ट का आधा घंटा वे फॉरवर्ड के लिए दें कि यहाँ से आगे क्या, हम क्या क्या कर सकते हैं जो सोर्स पर ही इसको खत्म कर दिया जाए। बाद में ट्रांजिट की बात करेंगे या रिहैबिलिटेशन की भी बात करेंगे, जो ऑलरेडी ट्रैफिक्ड हैं महिलाएं, उनका रिहैबिलिटेशन। बिकॉज एक बार जब महिला इस रट में चली जाती है, उसको रिहैबिलिटेट करना बहुत मुश्किल होता है।
वो बार बार फिर से इसी उसमें आ जाती है, क्योंकि एक बार उसको फैमिली में लेके जाया जाता है और एक्सेप्टेंस नहीं होती परिवार में, तो फिर वो वापस ट्रैफिकर्स के चाल में आती है और फिर वापस जाती है। तो वो करने से अच्छा है कि क्यों ना हम इसको सोर्स पे ही खत्म कर दिया जाए। और मैं इस प्रोग्राम के अंत में आधा घंटा सभी रिसोर्स पर्सन्स को देते हैं कि वो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं कि एनसीडब्ल्यू किस प्रकार से सोर्स पे ही खत्म करने के लिए काम करे। उसके बाद ठीक है, हम रिहैबिलिटेशन की भी बात करेंगे, हम बाकी बातें भी करेंगे कि किस प्रकार से पुलिस उसको बचाए या रेस्क्यू करे। रेस्क्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये सभी लॉज और लीगल एजेंसीज तभी आती हैं जब एक बार ट्रैफिकिंग हो चुकी होती है। तो हम ट्रैफिकिंग ना होने दें, इस पे आज ज्यादा बात करें। इसके साथ ही मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूंगी BPRND का, आज जिन्होंने हमारे साथ ये प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसको आगे बढ़ाया, इस इशू को आगे बढ़ाया। बहुत साल हो गए इस इशू पे बस चर्चा और चर्चा, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं ट्रैफिकर्स और स्मार्ट होते जा रहे हैं, ट्रैफिकर्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और बहुत बड़ी, हम सोच भी नहीं सकते कितने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं जब हम पूरे वर्ल्ड ओवर ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। तो हम लोगों को आज यहाँ से जाते समय ये सोच के जाना है कि हमें सोर्स पे खत्म करना है। उस जो बाकी चीजें हैं, जो टैकल करना है बाकी प्रॉब्लम्स, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम ये प्रण करेंगे कि हम कुछ ऐसी जगहें, चाहे हम कुछ एक दो स्टेट ले लें जहां हम काम करें, ग्राउंड पे काम करें और वहां बदलाव लेके आए। धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम बार बार होते रहेंगे कि, और आप लोगों को तकलीफ भी बार बार देंगे, एनसीडब्ल्यू बार बार बुलाएगा जब तक ये हम मिनेस खत्म ना कर दें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for flagging the important issues associated with this subject. और आपने जो स्पेशल एम्फेसिस डाला है सोर्स एरियाज में, कि हम ये सोचे कि ट्रैफिकिंग होती क्यों है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ट्रैफिकिंग। अगर हम सोर्स एरियाज में ज़्यादा फोकस करें और एम्फेसिस करें, तो जो बाकी के जो प्रोसेस है, जो मैम ने जो समझाया, चाहे वो रिहैबिलिटेशन हो, चाहे वो री इंटीग्रेशन हो, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मैम। We are now moving into the next segment of our session, that is our technical sessions. And in this part, we'll have 4 technical sessions of 60 minutes each, followed by an open house discussion. So I'd request our dignitaries and our speakers, except Mr. Nair sir, for whom we have the first session, to join us in the audience. So our first session is introductory, which includes the basic concepts, patterns, and existing response systems of human trafficking. And for this, we have none other than the father of the anti-human trafficking mission himself, Dr. P.M. Nair. Let's have a huge round of applause for Dr. P.M. Nair. Dr. Nair has been working on preventing and combating human trafficking as a mission and passion ever since 1982. By mid-2020, he has trained more than 60,000 stakeholders in addressing trafficking. He was instrumental in setting up anti-human trafficking units across the country, the first 9 AHTUs being established in 2007. And he has also developed handbooks and SOPs for them, which all of us are using today. Thank you, sir. Mr. Nair has also set up PAHT, Panchayats Against Human Trafficking, in 2020, an innovative method to converge the grassroots democratic institutions to address trafficking in persons. By mid-2020, he has rescued and facilitated rescue of more than 50,000 victims of trafficking. He has been in the public service
since 1978 in various capacities, and finally superannuated as DGP of NDRF Civil Defense Fire Services. Dr. Nair continues, and very passionately, the mission of preventing and combating human trafficking in different ways, more so by empowering stakeholders and involving youth in the mission. I now request Shri PM Nair to kindly take this session. So the floor is all yours. Thank you. Namaskar. Yeah. Thank you. Sabko namaskar, pranam. I'm grateful to the National Commission for Women, Honorable Chairperson, for this wonderful event. I'm extremely grateful to my distinguished colleague and respected colleague, Mr. Balaji Srivastav, Professor of Eminence, whom I really adore, Professor Shadri, Mr. Virendra Mishra, another wonderful colleague in the mission for a long time, Ms. Hasina, another person who have been working together for a long time together in various capacities, and all the distinguished members in the audience. Sabko namaskar. अच्छा लगा आप सबसे यूनिफॉर्म में बाकी लोग बिना यूनिफॉर्म के भी देखने में बहुत अच्छा लगा और इस मिशन में आप आए मैं सबको बधाई देता हूँ बहुत कुछ करना है हम लोगों के लिए अगर हम चाहेंगे ना बहुत कुछ कर भी सकते हैं मैडम ने कहा है कि इट्स नॉट एन अवेयरनेस प्रोग्राम आई वुड कॉल इट नेशनल ट्रैफिकिंग seminar on anti-human trafficking awareness. I would say seminar on anti-human trafficking action. Let's all go back and do something. A small bit makes a huge difference. Let's do that. Thank you from that perspective. My presentation is a little long. You can take if you want. Anybody wants from any state commission or any state police agency, मेरा कोई cooperate नहीं. I make presentations, give it to you. उसमें 2-4 pictures of the victims. उसको आप please don't make it public. I want even the media also. There are some pictures coming up there. Please do not publish the pictures. It's only for discussion here. बाकी pictures के अलावा बाकी आप जो करना publish करें कोई दिक्कत नहीं है. And use it also if you want feel like comfortable. Thank you. So I'll rush through the presentation because time given is exactly 40 minutes and 5 minutes are over. Well, कैसे होगा बेटे? हाँ, चलो. Trafficking of women and children. Let me start with 2 examples. A month back, almost 1.5 months back, one 17-year-old girl was rescued in Thrissur railway station in Kerala. This girl has a child of 3 months. And Child Lane rescued her, went to the RPF. See, I am talking about institutions. Please do not mind I am blaming any institution. I have the highest respect for every institution. Individuals make some mistakes, that's all. Institutions do not. The RPF was approached. They said, "Bhai, mera kaam nahi hai. And if child is there, traffic kahin se aaya, mere ko kya karna hai?" They went to the GRP. GRP says, the child and themselves are saying the child has been violated in Tirupur in Tamil Nadu. So, मैं क्या करूँ? Kerala hai, Thrissur cannot do anything. So nobody bothered. Finally, the child lane was produced in child before the Child Welfare Committee. And what will the Child Welfare Committee Thrissur do? Very promptly पूछेंगे बेटे कहाँ से है? आसाम से है. And they will straightway send the girl with the child to Kamrup CWC. वो क्या करेंगे? Send the child back home. That's it. Matter gets over. Matter gets over. Is that the end of the world? Is that what we should do? Of course, message came to me. I tried to connect with the senior officials there. Very, very prompt, I must say. I really salute the officers across the country, police officers, paramilitary, SSB, BSF, ITP, NGOs, commissions. Wonderful we have, wonderful resources we have. I was telling the chairperson today, we have so much capacity, we have so much goodness in our country, we have so much very good laws, but we need that trigger factor to get it moving. That trigger factor came, spoke to the concerned people, and immediately everybody swung into action. They investigated, case was registered in the Thrissur railway station, in the railway police, but then went on to Tamil Nadu for investigation. The trafficker was arrested, person who violated was arrested. This woman was trafficked from Assam to Tirupur in a garment factory as labor, employed. Then she was beaten up because she couldn't do much of the work. Unko itna pitai kiya ki she was suffering. And night time they will all have sexual abuse on this woman, and she produced a child also. Now nobody is baby. And she was thrown out from there. Imagine the plight of this woman. Second one,
Anantapur in Andhra Pradesh. That only 3 days back I was talking to an NGO there. This woman is 35-year-old. She was taken to a Gulf country. I don't want to mention the name of the country. She was taken there, live case, taken there as a domestic help. And she said, I became a domestic slave, a sex slave. And she was violated for a few days, and finally she cried and wept and wept. She refused to do anything. And then the agent says, Tum paisa humko de do, I'll send you back. The agent who sent her after taking all the money, now the agent says, give the money back to me. Give money back, I'll come. So she said, I promise you money, please take me back. And she has come back now. She has come back now. Now, whose baby she is? She's an adult woman. The NGO is asking, Madam, mere ko pucha ki sahab batao kya kiska paas jana hai? Who is the right person who can handle this issue? Ladies and gentlemen, hundreds and hundreds of examples I can give you today, and we all know about this issue. Here is a case where we have to get involved. We have to get involved. Learning points are that there are so many people are there, so many agencies are there, but somehow legislations are in plenty. Mr. Balaji Srivastava spoke about the cardinal laws and provisions. We have. It's all very, very empowering laws. But are we taking action according to that? NCW initiative can make a huge difference. I'm sure this will take it forward, and State Commission for Women also will be part of the mission. We can take it forward. When it comes to the dimension and concepts, इसमें कुछ गड़बड़ है यार, तुम्हारा काम नहीं करता है. Yeah, 370 IPC again. DG VPRD spoke about that. 370 IPC in 2013 brought out a very interesting dimension. It says recruiting करेगा, या transport करेगा, या harboring करेगा, transfer करेगा, receive करेगा, जो भी करेगा. Any part of the offense is more than enough. And then you have a कुछ करना पड़ेगा आपका. Sorry? Can I have another one? Oh, you have another system. Modus operandi. Any crime will have an action, intention, and a method. Method could be by deception, by coercion, by lure, anything. And consent is immaterial. When it comes to the purpose, earlier 2013 के पहले it was sex trafficking, labor trafficking, organ trade. Now things have changed. I don't know how many of you are aware. Even physical exploitation is all. Slavery is also one of the offenses. Person trafficked for physical exploitation is also part of the crime. Somebody brought from Bihar, 11 children brought from Bihar to Salem for cleaning the silver ornaments, and they were made to dip their hand in acid. And all of them lost their nails. They are rescued children. They have lost their nails. No, is it not crime? Is it not trafficking? This is also trafficking because this is slavery. So any person's right has been taken away, dignity has been taken away, freedom has been taken away, that is slavery. So slavery has not been defined in 370. We have to define. This is a methodology of definition. Methodology of definition is freedom, rights and dignity have been deprived away. That becomes slavery. So ladies and gentlemen, today, if anybody's rights have been deprived of, any person's dignity has been deprived of, freedom has been deprived of, that becomes slavery, and that becomes a case of trafficking. So in such cases, just by having a case of child labor, we will not be able to do justice. We have to go for a trafficking crime. In ground, all these are mixed up. If the Anantapur lady taken to abroad as a domestic slave became a sex slave, that is trafficking. So the sexual act is also mixed up with the issue of labor. Therefore, you cannot say, oh, this is labor trafficking or this is sex trafficking. All these are mixed up. I think this is going to take my time. Yes, ma'am? Organ trade examples, okay. Exploitative labor. When you think of exploitative labor, it could be bonded labor, it could be child labor, it could be forced labor, it could be organ trade, it could be any issue. I'm क्या कर रहा हूँ? Facade of orphanage, very important. Facade of orphanage. I don't know, you must have heard about that. It's a very, very serious matter. Facade of orphanage. Orphanage के नाम पे many places is happening for different conversion or whatever it is. A lot of issues are there. Illegal immigration. But आप वहीं रहो. मैं next बोलता हूँ. Things are not working. Forced labor is slavery. Next one. Forced labor is slavery. This is slavery. This is slavery. This is slavery.
Bonded labor is slavery. I am going only by the definition of the law. Bonded labor is slavery. Any person bonded is slavery. Bonded labor, the earlier definition of bondage is gone. Now Supreme Court under PUDR case is defined even when a person is bondaged for a short time and deprived of the rights, that becomes bondage. Therefore, this is also slavery. Well, ladies and gentlemen, we have enough laws and more. Trafficking for commercial sexual exploitation, when it comes to it, it would be brothel-based. नहीं आप आगे मत करो यार. It could be brothel based, it could be non-brothel based, or it could be e-based, electronic based. Brothel based, non-brothel based, electronic based. What is electronic based? We'll come to that. Sex tourism. Facade for massage parlor. Massage parlor is okay, but facade massage parlor, facade for tourist circuit, facade for escort services. You may know many escort services. If you want to go to interior place somewhere in Masalia in Bihar, you want an escort service there, you'll get an escort service. You want a boy or a girl, you get them. What is that? What does it mean? It's openly happening. And now pornography and cyber sex, skin grafting. Madam said about the latest ones of surrogacy. Skin grafting, another latest one, trafficking for the facade of medical tourism. So if you talk to a girl child, I'm sorry my presentation is not going according the way I wish because of the issue here. Let me come to issue, sorry. Yeah, next. Yeah. A person who has been trafficked, sexually trafficked, has been abducted, another crime in the Indian Penal Code. Person criminal restraint and all sort of offenses are there. You can take any of these offenses, mental, physical torture, buying of people, selling of people, exploitation, every activity. All this together I call human trafficking as a basket of crimes. You find a basket of vegetables, where you find all sort of vegetables there. Similarly, human trafficking is also a basket of crimes. It's not one crime. Buying, selling, exploitation, deprivation of rights, bondage, everything under the law, you find different offenses. Each one can be, the human trafficking can be atomized into different offenses, and each one makes an offense under the Indian Penal Code or some special legislation. All this together constitute a basket of crimes. It's an organized crime, it's a continuing crime, and therefore I call it a basket of crimes. Next. Well, ladies and gentlemen, the commercialization is the main part. People make money out of that. I can go to a shop and buy a cell phone. I can sell a cell phone, and I make money out of that. But here people are being purchased and sold like commodities, commoditization of human beings. Therefore, this is this is a core aspect of human trafficking. Human smuggling and human trafficking difference we should know. Manav taskari or manav vyapar mein difference hai. Manav taskari means the person who is being transported is also involved. The person smuggled is also involved. Whereas trafficking, the person's consent is immaterial. Second part is consent may be taken by lure or coercion or deception, but consent is immaterial. Second part is smuggling is always across the borders. Trafficking can be across the borders or within the borders. Next. Missing person and trafficking, very important issue. In 2002, when we did a study for the National Human Rights Commission, we found 44,000 children reported missing, of which 11,000 children do not come back. And the linkages of missing children to human trafficking was established. 2011, Kailash Satyarthi, along with me, we did a study on that and found 110,000 children are reported missing, of which 40,000 children do not come back. Now, a lot of initiatives have been taken by the government of India. Therefore, this number has come down. But even then, average 11,000 to 12,000 children remain untraced every year. Every year, where are they? Most of the children you can see in begging here or there or in all sort of occasions. All sort of occasions. You come out to Tamil Nadu, Vellore Tannery, where human beings dare not enter because of the stench. I'm happy the police commissioner of that area is very much here. He will go back and take immediate action. You know, people don't dare not enter. Children are there. You go to Aurangabad, the slaughterhouse. I went personally there. 120 children there. No human being dare not enter because it's the stench. And there you find children there. You know, this is an area where exploitation is galore. We think we don't know. Therefore, we need to take action on this. Missing issue children. Missing issue is very important. I would urge upon the police fraternity here.
आप एक केस को आप ठीक से इन्वेस्टिगेट करो. मिसिंग आप रेस्क्यू करते हैं तो ऑपरेशन मुस्कान काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं. बट टेक वन केस ऑफ ट्रैफिकिंग एंड डू अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. वन केस, one district, more than enough. You'll get all the traffickers on board and the case will stop. Madam spoke about prevention. Enforcement of the law. We have enough laws, we have enough capacity, we have enough good people. Enforce the law accordingly, we can make a huge difference. Bachchan Bachao Andolan Supreme Court ruling came, and then the Operation Smile has taken place and going on. But what is required is the traffickers have to be arrested. Well, the child line data is very, very disturbing data. Child line data, you take the data from the child line and take the data from the crime in India. You know, there's a huge gap there. The data is given here. Mr. Balaji Srivastava also spoke about the data. And somehow I have my question mark on this data. Is it correct or not? When some of the state governments are properly reporting data, some of the state governments are not reporting data. See, data cannot be suppressed. Crime is crime. Whether we like it or not, it's not a political matter. So I would call upon the entire dignitaries across the country, please allow the crime to be registered, get it investigated. That makes all the difference. See, the women victims trafficked is a matter of concern for the National Commission for Women. You know, so many women, if you say trafficking data, ma'am, is some number. But you go into details, buying and selling data, then procuration data, all this data is somewhere all in disparate manner. So when you come together, the total number comes to a huge number. Next. Disposal of crimes, the percentage of conviction, very important. At the end of the day, the proof of pudding is in eating. When you have a case registered, arrested, investigated, prosecuted, the person has to be convicted. See the percentage of conviction? So here is an area where we need to work. Ladies and gentlemen, railway child and rescues. Let me pause a minute and say 444 children were rescued in 6 railway stations. 1, 2, 3, 4, 6, 7 railway stations in and around Hyderabad. I'm again not blaming a state or any agency for that matter. I'm giving an example. Facts speak. In 7 railway stations in and around Hyderabad, Secunderabad, in a COVID time, post-COVID time, when we are all under lockdown, when we said we are safe at home, you say stay safe at home, you say your child is safe at home, and my child was safe, your child was safe, and all our children were safe. But 444 children were rescued by the child line in these 5 railway stations of Hyderabad and Secunderabad area. Where are these children from? 60% of the children are coming from Manipur, Assam, Mizoram, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand. Who are these children? They don't come of their own. They have been brought there. So traffickers were very much active even during COVID time. Traffickers were very much active even during COVID time. Whereas we were thinking we are all safe. Not only children but women. Many of them are girls. Which stage they are coming from, that data speaks volumes. Next. Well, the place of rescue, how they are linked. I mentioned about the particular case. CWC produces them and takes them to CWC Kamrup and sends them back home. Trafficker brings the child back again. And a lot of children are being recycled and recycled and recycled. A lot of women are being recycled and recycled and recycled. This is an area where we need to step in. Well, next thing, COVID time scenario. I must give an example of the COVID time scenario. Next. It's a study by ICPF. In a matter of 2 months' time, 5 million Indians have gone to the internet looking for child pornography. We are all safe at home. We are all safe at home. They were looking for child pornography. Who are these Indians? From 100 cities in India. That could be Shillong, that could be Coimbatore, that could be Delhi, any city. 100 cities in India. Secondary data. It's only secondary data. It's available. You go to net today, asking, looking for child pornography, you are leaving a trail there. You may close it and go back, but we can trail you. I'm sure Mr. Balaji Srivastava got all the resources at his command to do that. So wonderful systems have come in place. We can track. Based on the tracking we found, from 100 cities in India, matter 2 months' time, 50 lakh Indians have gone to the website looking for child pornography. What does it mean? 1, child pornography is in high demand. Number 2, it's available. Number 3, they are making huge money. You go and click somewhere, the fellow gets money. 1 click means 10 rupees or whatever money is there. Money, you get the money. And 4th and most important, some person is under exploitation somewhere. Some girl is under exploitation somewhere. Earlier used to be in Kumaragam beach in Kerala or Goa beach or Puri beach. Like that, we heard about that. Today, Goa beaches are closed. So they are being exploited in their own homes. These people are being exploited in their own homes. Pornography is being taken at homes. Ladies and gentlemen, now how do we enter the home? How do we track this? How do we track this? It's not difficult. We can track this. I'll give examples also. Next.
Who are these persons? The demand is very high. Therefore, what we need to do is prevention part, as Madam rightly said. Can we educate the adolescents? I'll tell you why. Next point. One interesting case of Kerala police, they have a cyber dome, very, very effective investigation unit. And cyber dome did a search in 125 places in the recent past and arrested 69 techies. Techies means IIT, IIMs. They are all qualified, educated people. What were they doing? They were transferring pornography. Women pornography, adult pornography and child pornography, they were transferring into that. Today, even sending pornography through your WhatsApp is also an offense under the law. IT Act. So now these people have been arrested by the Kerala police in the recent past. That means what? It has gone into the educated world also. We always thought it is trafficking or somewhere else, but today it's there. In my telephone is also, with the traffickers are there watching my telephone. They're all there. In the internet, they are all making immediate returns. Next. The present trends are, next. We have enough laws. Legislations are in plenty. Legislation anti-human trafficking is a constitutional obligation. My esteemed friend Balaji said about that. Article 23 of the Constitution. When Dr. Ambedkar made the Constitution, drug trafficking was there, arms trafficking was there, human trafficking was there, but Dr. Ambedkar thought human trafficking shall be put in the Constitution of India. Importance was given to that. Why? You know what it is. Article 23 says human trafficking, every form is prohibited. Constitution preamble says, we the people of India give to ourselves. Humne humko diya wahi mandate Constitution. In that Constitution we says, human trafficking, every form is prohibited. If I am a woman of 23 years or a child of 12 years, I have a constitutional right not to be trafficked. And you may be a rickshaw puller, you may be a bus conductor, you may be a police officer, you may be an NGO, you may be Child Rights Commission, you may be Women's Commission. You have a duty to ensure that I am not trafficked. That's what the Constitution says. So, ladies and gentlemen, we all swear by the Constitution of the country. So, let's take this, uphold this principle of the Constitution. Let's take this mission forward. No child is for sale. No woman is for sale. No human being is for sale. If we work together, we can take this forward. Well, next. We have impressive legal regime we have. I quote all, Srivastava sir spoke about the laws, Mr. Balaji Srivastava, and much more on the Supreme Court rulings, and we can have a number of strengths. ITPA, Immoral Traffic Prevention Act, it's going to be amended, etc. But I don't know how many of you are aware. I'm sure many of you are police officers are using that. Virendra Mishra will know. ITPA has got wonderful provisions under the law. Very interesting provisions are there in the Immoral Traffic Prevention Act. But today, many people are using only the 370 IPC. I would request all the police community, wherever there is sex trafficking, adult or child or whatever it is, wherever there is sex trafficking, along with 370, please use ITPA also. It has got very interesting provisions. There are a lot of interesting provisions are there, like special authorities have been created. Then you have the trafficking has been defined in a larger dimension. Then you have special provisions for child care, special provisions for women care, special provisions on gender care. Home verification is mandatory. And then against child trafficking, there are very special provisions. Law of presumption for TPA is there. Law of presumption is there in labor laws. Victim witness protections are available in any particular, you think about all these activities, anonymity, in-camera trial, legal representation, any item you think of, we have a provision under the law. We have a provision under the law or the Supreme Court rulings. There is no depth of legislations, that's my point. All this we have some legislation or some Supreme Court ruling. Now, rulings of the Supreme Court of India are plenty in number, and Mahendra Chavala's latest one on the victim protection scheme. I don't know how many of you are utilizing that. Very, very stringent provision we can utilize and very important provision. And ITPA, Immoral Traffic Prevention Act, provides very interesting. Section 18 of ITPA, the subdivisional magistrate has powers to close down a hotel. Let it be a 5-star hotel indoor. I'm giving an example only, 5-star hotel indoor. If in that hotel a child is being exploited, a woman is being exploited, a trafficked person is being exploited, the SDM has got the powers to close down the hotel. And the power of the SDM, if it is done properly, and based on a speaking order, the law says, section 18.3 says, that order of the SDM shall not be set aside or challenged by any court, including Supreme Court of India. Can you believe that? SDM's powers are ultimate, 18.3 ITPA. My SDM's powers are under 18.1 ITPA, and this power is 18.3 says that cannot be set aside by any court. Very interesting provision of the law.
Well, that eviction is a very important tool. Many people are utilizing the provision of the law. Many places it is being utilized, but other places they are not being utilized. I would request all of you to use that. If you want a guidance, we have an SOP on this. I have prepared an SOP also, all available on the website. Every document on these SOPs, etc., are all on the website. Some of them are on the BPRD website also. Please utilize them. Well, next point I would like to come upon is, next. SDM's powers, you spoke about that, yes. Supreme Court rulings are supporting that. Here is a SOP available, it's on the website. Challenges in the existing response. Well, ladies and gentlemen, we have islands of excellence. Islands of excellence across the country. Outstanding examples by police officers, right from the DGP down to the constable. Outstanding examples, salute them. Outstanding examples by NGOs across the country. Outstanding examples by the commissions across the country. But somehow it remain islands of excellence. I would request upon the Honorable DGP of BBRD to think of a compilation of good practice models. We can always select what is a good and bad. We can think about that. 2007, one document was brought in. It's time we brought out. People should know our country is doing a great job. Everybody criticizes the police and government and NGOs, etc., etc. But there are very many good things to appreciate. And so a good practice model can be a good thing. We can think of that. Well, the training part, one important part I would say is a lot of trainings are happening. BPRD is focused on police training. Their focus is very good. There are when I had the opportunity of working in the United Nations here in Delhi, and 5 states were given to me for training capacity building, what we focused was not only on the knowledge part. People didn't know much of the law and practices. Number 2 is the skill part. How to talk to a child. How to communicate with a person. Professor Seshadri will agree with me. It's not the way you investigate a murder case or a homicide case or a rape case, it's different in a trafficking crime. The victim will not even speak. The victim will not even say. The victim will not even speak at all. How to communicate with a person who doesn't speak? It's an art. So that skill part is very important. And third is attitudinal change. Attitudinal change. The person who is rescued is not a prostitute. The woman is not a prostitute. No woman is a prostitute. I did a study for the National Human Rights Commission for 2 years on human trafficking, for them, not for my PhD, and interviewed 629 women across the country, so-called prostitutes, 629. At the end of the day, I found none of them wanted to be there. They are not there because they wanted to be there. They have been lured, coerced, or deceived. None of them wanted to be there. Therefore, the woman is not a prostitute. It's a prostituted woman. The child is not a prostitute, it's a prostituted child. The man who violates is not a customer. The man who violates is not a customer, he's an offender, he's a criminal. We have to get that paradigm into our mind. Ladies and gentlemen, that's a human rights paradigm. When you get into that human rights paradigm, we can make a difference in the whole thing. Data management, I mentioned earlier also. Professional sensitive response, FIR can be lodged anywhere in the country. If a child was violated, trafficked from Assam, FIR can be in Assam. Tirupur, she was exploited. FIR can be in Tirupur. She was rescued in Thrissur. FIR can be in Thrissur. Law says you can be anywhere. Well, know the victim, the victimological perspective. I'm stepping it slightly into the domain of Professor Seshadri. The person has been violated so many things, and you have to get into all the reasons of trafficking. Reasons of trafficking. We always think it's poverty, it is not. Research shows it is not. It's first and foremost lack of education, lack of awareness, lack of livelihood options, lack of access to rights. If I educate a woman in Kerala or Anandapur, 35-year-old woman, graduate, was trafficked to another country, and she was exploited there because she had education, but she didn't have access to rights. So these are very important. I call it as vulnerability factors and demand factors. When you say vulnerability factors, socio-cultural factors are very important. 89% of the trafficked victims are from the backward sections of society, scheduled castes, scheduled tribes, backward sections, etc., 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 etc. And lack of access to rights. Lastly, disasters and response. Disasters, very important. The COVID time itself was a disaster. We have seen the COVID time trafficking. It was galore. Physical, mention about the Hyderabad rescue of 440 of children, and ICPS study on the internet. So in the trafficking world, physical world, and electronic world, the crimes have gone very high. The demand factors. Ladies and gentlemen, demand is the main thing. Madam spoke about prevention. Madam, for prevention, first and foremost is contained demand. Trafficking is demand-driven. Trafficking is demand-driven. The other day, when study came that most of the customers are college children. I was shocked to hear that. Most of the customers in the massage parlors and sexual exploitation places are college boys. College boys.
So what do? Can we pick the college boy and send him to jail under the trafficking law, section 5 and 7 of ITP and 370 IPC? No, that's not the way. We have to educate them. I have examples, I can give examples and examples on that manner. We have to make them aware of what is gender rights, what is health rights, what is child rights, what is human rights, to make the person aware. If your sister is not for sale, my sister is also not for sale. Your sister cannot be exploited, my sister also cannot be exploited. That simple methodology of human rights, if you can get to the mind of the youth, it can make a huge difference. Therefore, this knowing the offender is very important, the criminological perspective. The traffickers include the spotter, the recruiter, the offender, the seller, the purchaser, transporter, abuser. It goes on long list. My police colleagues here on the left side, are we investigating into all of them? Please get back to your police case diary and see. Go and see one case diary. Just take one case diary and see how many of them investigate all these cases. How many people are investigating all these cases? If you are not investigated, please go back and do that. Unless you break the nexus, that means each one has to be picked up. If you take only one part, it's like amoeba, it grows. We cannot allow the amoeba to grow there. The trafficking network has to be broken. Therefore, we have to take action against all of them. Customer is an offender, I mentioned earlier. Customer is not a customer, he's a criminal. So we have to link a source to transit to destination. Economics is huge. Economics is huge. This is studied by Kailash Satyarthi. But why do we need Kailash Satyarthi? I'll tell you an example. Bhaktaram Pandey in Tihar jail, arrested by Delhi police. 82 Bhaktaram Pandey came to Delhi as a taxi driver. Till 92 he was driving taxi. 92 he went into Kamala Market area as a customer. Then he became a trafficker. 92 to 2002 he was a trafficker there. Nobody arrested him. What the police did was, with all respect to police, they were arresting the victims and making them as prostitutes, prosecuting them and convicting them. And suddenly came Usha Mehra, High Court judge. She said, what is all this nonsense? Get the DCPs on board, and told the DCPs, listen, you can make an affidavit here that you will not arrest victims. Very interesting. And they started, the entire dimension changed. Then came Chaya Sharma and another inspector there. They went and rescued women from Kamala Market. 270 people were rescued, and the entire paradigm changed. That time we found the economics is very high. Bhaktaram Pandey was arrested for the first time. That fellow was trafficking girls into Delhi from Nepal, and he has got 19 crore asset. 19 crore asset, I'm talking about 2002. And we have another case of Mahato from Jharkhand. Another fellow again doing a trafficking for 8 years, trafficking girls to Delhi as domestic help. So-called domestic help, but it's a different facade. And that fellow's assets were also almost same amount, 18 crores in Jharkhand and Ranchi and Guti. Well, it's a huge money. Ladies and gentlemen, this we need to confiscate. I don't know how many of you are involved in the confiscation, but this Mahato case, they did do that. So other cases, we don't investigate into that. Huge money, ladies and gentlemen, huge money. All of you sitting here have to help out. The police needs information. You know, if you knew a trafficker has got money somewhere, has got information somewhere, pass it on to police. They need your help. Police and community have to work together. That's the message we want to spend forward. Post-rescue care, ladies and gentlemen, it has to be effective. Madam spoke about the rehabilitation not being effective. When there is rehabilitation is not being effective, the child is re-trafficked. I went to CWC Jaipur. An NGO had rescued 6,000 children from a bangle factory there. 6,000 children from Jaipur. Can you believe that? 6,000. I was also shocked. I said, what is all this? Went to CWC there and met the Mrs. Sharma, the CWC chairperson. She was telling, Nair Sahab, ये एक बच्चा मेरे सामने 3 बार आ गया 2 महीने में. ये बच्चा गया कहाँ है? I was SP गया way back. So my affiliate to that talked to गया CWC. वो कहता है मैं क्या करूँ नायर साहब? वो बच्चा मेरे पास आता है मैं उनको घर भेजता हूँ. Trafficker takes child back. Is it not shame on us? Is it not, should not our heads hang in shame? Allow a child to be trafficked. Just imagine a child being trafficked and recycled. You know, I was completely shocked. I was completely devastated. I said, what is all this? What are we doing to this? So we should do that. So what is required is a law enforcement. Get to the police. The Child Welfare Committee there, NGO comes and get to the police. You think the head constables are not active. Go to the SP, go to the commissioner. People are highly sensitive. People are there for this job. This is their duty. So get on to them. Anti-human trafficking unit. We have units in all over the district now. Make them functional. Support them. Walk the talk with them. Work the talk with them. I would request all the commissions here. Please make them effective. You can do it. You come into why don't you go to the police station or anti-human trafficking unit of our state or district? Just walk into them and say, boss, I am coming to help you out. I'm sure police will hug you. They will welcome you. That's what they want. So this synergy has been brought in. We have to step out. All of us have to step out. Police have to step out to the NGO. NGOs have to step out to the police. Well, we can do a lot. The State Commission can play a pivotal role.
Anti-Human Trafficking Cell of the National Commission for Women. I salute Madam Rekha Sharma for this wonderful initiative. I told her I am with you. I will be always standing behind. Any help you want, I am there. And I would request all the state commissions for women here, please go back and start anti-human trafficking cell. Make it effective. Make a small difference, but huge impact. A small change, a small impact on a woman's life that makes a huge impact in the entire society. That's what I think we can take it forward. Next. This is all. You may think they're, you may think they're all NCC training or scout training. Please don't take this picture. These are all trafficked victims. They have been trafficked into Naxalism. I was fortunate to be heading the operations in CRPF, went around the whole country for 7 years doing this business anti-Naxal operations. I thought, let me do a track to work. Rescued women from the Naxal stronghold. Rescued adolescents. They were trafficked as children. Now they become 23, 24. Brought them out very quietly. No media, no publicity, except the Home Minister, nobody knew. My DG and Home Minister knew, that's all. Nobody else. We didn't want any publicity or want any reward award for this. Many of them, 160 women and 260 men have been brought out. They were trained. Whatever their capacity, they are all now security guards. Some of them are security guards in Ambattur Industrial Estate. My Commissioner of Police is here. Sir, in your area also, they are security guards. The girls are from Jharkhand. Girls are from Sundargarh. But they are there. They are doing industrial stitching. The so-called branded shirt, what you wear, is being stitched in Ghaziabad or in Bhubaneswar or in Kotak or somewhere. Who is stitching? They are stitching. They are, mind you, 90% of them are HIV positive. And they are working there. This is quite rehabilitation, quite revolution. We can do a lot, and the convergence is very important. The convergence is very important. Madam spoke about convergence. You are the agency, you can converge. We keep talking about a lot about convergence. Anti-human trafficking units are there. You can bring all the people of the Labor Department, Women and Child Department, Health and Forensics, all of them can be brought together, and we can work them together, tie them together. That's what the Commission can do. NGOs and law enforcement. I don't know how many of you are aware, under the law, NGOs have been given very interesting provision. I mentioned I worked with the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC. They made a model trafficking law in the UN, Vienna. I was also there, that committee, 7-member committee. I could stand up and say, Indian law is supreme. I was supposed to speak about the entire Asian laws, but I could say that Indian law is supreme. Are you aware that under the Indian law, an NGO goes and conducts a rescue? The law says there shall not be a criminal case or a civil case against an NGO for conducting a rescue. There's an estoppel in the law itself. Nowhere in the world. Second, a person has been rescued. A woman has been rescued. Woman may be 32 or maybe 16. And Mr. Rathore, a very competent police commissioner sitting here, he cannot interview that person. He cannot, because he's a man. The law says rescued woman shall be interviewed by a female police officer. Law is not blind. And if a female police officer is not available, by a male police officer, Mr. Rathore, along with a female NGO. What a powerful law. We have given powers to NGOs under the law. How many of us know that? So, ladies and gentlemen, therefore, these ITPA provisions are very important. Take it forward. Next. Scientific investigation and stringent prosecution. We have to take that as a model for all of us, all the police officers. I think I don't want to speak on them. When you speak about the skills, Mr. Balaji is watching. Sir, very important on these important skills. I've been going around the entire country. Wherever we could train them on these skills, the impact is tremendous. Impact is tremendous. At least 5 or 6 of them, very important. Focused training on skills. Now, you don't have to have electronic in the classroom, chalk and talk and PowerPoint. We don't need. Electronic modules are available. Make a 30-minute or 40-minute module on each of them. I'll be too happy to lend my services free of cost. And let's work on this mission of electronic modules and take it forward. Next. Video conferencing the trial. Girl trafficked from Nepal. Another girl trafficked from West Bengal. Bombay trial, police charge sheeted. Trial came after 6 years, both. 6 years. Swati Chauhan is a judge. Karna kya hai? Kidab ladki chali gayi. Went back to Nepal and went back to Bangladesh also. And the girl won't come because she's married and settled there. So we thought we should do something. What did we do? The Swati Chauhan judge, you need salute such people, wonderful ladies on earth. Fantastic judge. She said, let's do video conferencing. The Praful Desai versus Union of India, Supreme Court allows video conferencing. But that does not say within the country or without outside the country. I said, let's take it forward. And administrative sanction was taken from the High Court, and video conferencing was done. Victim was sitting in Bangladesh, and another victim was sitting in Nepal. Video conferencing was done, trial was concluded, and 2 traffickers were convicted, 10 years and above. It's a wonderful work. How do you do that? Beyond the borders, it's one step forward.
That mindset, we have to take it out of the mindset, move forward. That one step forward, if we can do a great difference. There's a SOP on this, free of course. It's available on the website. Well, ladies and gentlemen, Madam spoke about the PPP model. In the PPP model, prevention, protection, prosecution, anti-human trafficking unit established. Great work they are doing. All districts, the Parliament Minister gave a statement, 649 districts are having anti-human trafficking units. Government of India supported that. There's a very important thing. SSB has got, BSF has got, CRP has got, all the border guarding forces have got. Please utilize the anti-human trafficking unit. What you should do is get a local appropriate NGO. Appropriate is very important. Honesty, integrity is very important. And there are hundreds and hundreds of them. Utilize them. So we need to have a synergy of a police officer, law enforcement agency, and NGO work together, and you can make a huge difference. Anti-human trafficking unit. Next, it needs mentoring, facilitating, hand-holding. Setting up anti-human trafficking unit is easy. Running is not so easy. What is required is hand-holding. When I set up 9 ASUs across the country, we stopped with the 9 because 9 should be a good number to do a mentoring part. We have to help the baby grow. And when the baby grew, there was an external evaluation by a Secretary, Government of India, and Secretary of US Government. They went around doing an evaluation. Finally, they come out and said, it's a wonderful model. We should replicate to all the districts in the country and even to Nepal and Bangladesh. So that's what anti-human trafficking model is. Work together, live together, deliver together. Work together, live together, deliver together. Who? Police, NGOs, and all the stakeholders together. Delivery and output was very good. Next. Post-UNODs, they have gone to all over the country, Nepal and Bangladesh. Supreme Court has given a ratification for this under the law, under the Bachpan Bachao Andolan. Well, prevention part, online exploitation is very important. Madam started by speaking about the online exploitation or the prevention part. Online, offline, both are very important. How many of us know that Government of India has got a wonderful portal? I keep going to colleges and telling children, do you have pornography in your cell phone? Yes, sir. What do you do? Delete, sir. Better don't delete. Keep that. Take a picture and pass it on to the MHA website. And when they did that, amazing response came. But they don't know. The children don't know. Can we open up an awareness campaign for all the college students? Take 10 colleges, Madam Tripura, West Bengal, all the people are here. I would request all of you, 10 colleges you take and make an awareness program. It is not rocket science, very humble, simple. Make the children, the girls aware what happens when a pornographic film comes there. Deletion is not the solution. How do we get that into the law enforcement machinery? And it can make a huge difference. Anti-human trafficking clubs in the colleges, prevention model. Anti-human trafficking clubs in the colleges. Set up anti-human trafficking clubs. You have a yachting club, you have a debating club, you have a fancy club. All these clubs are very good. They all develop the personality of the child. Fair enough. But let the child spend at least 1 hour a week on others. Not on one's personality, but others' personality. Anti-human trafficking clubs. NSS in the college, make them deliver into anti-human trafficking club. Fantastic work anti-human trafficking clubs are doing for addressing demand. For addressing demand, prevention part. And it's very interesting. The students and the college teacher is required. What is required? Every college, get hold of some students, one teacher, and local NGO. Full stop. That's all. You can be the trigger factor. You can be the coordinator. Please start setting up anti-human trafficking clubs. We have anti-human trafficking clubs in colleges, in so many colleges across the country. At least 500,000 colleges have already got. It's a very interesting mission. You can take it forward. Chief Justice of Kerala launched this in Kerala itself, and the government of Kerala issued a GO also to set up anti-human trafficking clubs in the colleges. Very interesting provision they have. Well, Panchayat against human trafficking. Madam spoke about the prevention. Again, that point, Madam, coming back to the Panchayat against human trafficking. Panchayat is, if I empower the Panchayat, you know how the idea came. Balaji sir will know. Gaya, a district called Gaya, vastly in the Panchayat. Very important Panchayat. All tribal population, scheduled caste population. COVID time, all the migrants came back. Panchayat Mukhya is an old man, 90-year-old man. बोला कि नैयर साहब कुछ बताइए क्या करना है? क्या करना है साहब तो परेशान है हम लोग. और कोई बोलेरो गाड़ी आती है, लड़कियों को गाड़ी में बैठाती है. Adult लड़की मीन से 32-35 ऑल्सो गाड़ी में बैठाती है. सुबह ले आते हैं, शाम को ले आते हैं. 200 रुपया देते हैं उनको. करता है क्या? आप जानबे करते हैं क्या होता है? No, I said मुखिया जी आपको नहीं पता है क्या करना है. जब मेरे को नहीं पता है, मैं क्या करूं? So empower the Panchayat under the constitution, under the law, under the administrative provisions. There are a lot of provisions. I said Chief Minister, Prime Minister Modi there, important. Chief Minister here, and you are the Panchayat President boss. That power you have. The Constitution Amendment 73 has given you all the powers. Empower the Panchayat. It made a huge difference. Ladies and gentlemen,
as a source area, if you can empower the panchayat against human trafficking, it can make a huge difference. I can give hundreds of examples. There's no time, I'll stop with that. But anti-human trafficking unit of the police, anti-human trafficking club of the colleges, panchayat against human trafficking, NGO, and triggered by the state commissions for women can make a dominant force against the traffickers. If the traffickers are organized there, we are also organized here. We can make a huge demand in that prevention can be done. All the SOPs are available for AHTC and Panchayat against human trafficking. Together we can and we will. Well, we can together work out, ensure our constitutional mandate. For the state commissions for women, the national commissions for women, a humble submission. Please consider coordination and convergence at your level. Different departments, labor department, women and child department, police action, AHCU, can you coordinate? Can make a huge difference. Do that. Number 2, SOP. We can bring out an SOP. I'm sure Madam can bring out an SOP on convergence. We have so many SOPs. Now that BPRD is there together, BPRD and NCW can together work out a simple, humble, workable SOP. Not complicated, just simple methodology. Maybe 3-page or 4-page, that's all. We can work it out. A single window, back. Single window approach, joint training. Mr. Balaji is giving training for the, BPRD is giving a lot of training for the police officers. Wonderful training program, capacity building, genuine effort, great contribution, because I've been participating in many other fantastic impact I've seen. But what is required now from the State Commission for Women and the NCW is a joint training of all the stakeholders. When you do a training at the district level or a state level, get hold of the NGOs, get hold of the labor department, get hold of the IT department, get hold of all the departments concerned and empower them. See the difference? We did that. We had a model in 2005 in Telangana, Andhra Pradesh that time, now Telangana. That model really worked. The Telangana model of a joint training, judiciary, prosecution and police together. Police, NGOs and all the other agencies together, caregivers together. That made a huge difference. That sort of training you can think of. Functional, then developing quality e-based training modules. Functional audit. A functional audit of the anti-human trafficking units. I'm sure the NCW can take this as a pilot project, madam. At least in a few states, a functional audit of the anti-human trafficking unit, how they are functioning. Need not be covering all the states, maybe 2 from Assam, 2 from Tamil Nadu, 3 from Delhi, like that you can take up 10 anti-human trafficking units, develop some template, whether they're functioning within the parameters or not. And reward those who are deliver and make a huge difference. If I wish we had called 2 NGOs and 2 police officers here across the country who made a huge difference in the last 1 year. That's what is required. They need appreciation. Fantastic work. Even SSB doing on the borders. If they come on the dais here, instead of my getting a medal, if they get a medal, I'll be too happy. That's what we should do. Get outstanding persons here in a podium like this. The nation should know. Nation should salute them. So reward and award are very important. Setting up anti-human trafficking club in the colleges. Please go back and try this mechanism. If anybody wants an SOP, I'll send you SOP. I'll be too happy to do that. Panchayat against human trafficking. Transborder trafficking is a major issue. I told madam in the morning, also showed a newspaper in Kerala, how the international trafficking has become a very serious issue. Anandapur example is another case. An NGO from Kishanganj is talking about huge trafficking of Bangladeshi and Nepali girls in that area. We can work together and take it forward. Well, last point I'd like to request the BPRD and in fact it should be NCRB and NCW is, we have Americans bring out a trafficking persons report, TIP. Every year they bring out a TIP assessing this country into that category, etc., etc. We don't care, but they do that. World over they do that. We don't have a trafficking persons report. Can we bring out India tip report? You can take the initiative. Data would be not only from the police, from the NGO, from the child lane, all agencies. We are only factual. We will not comment or criticize anybody. All the facts presented very nicely so that action plan can be taken over. With the help of BPRD, NCRB and NCW, we can think of an India trip report. We make it a point, no subjective comments, no judgment whatsoever. That's a paradigm. That's very important. Facts are to be collected, facts are to be collated, and facts are to be presented as it is. That's all. If that can be done, that will be a great service because we need to know the data. Data mining is very important. Once you get the data, only mining is possible and action plans are possible. Well, that's a requirement of the need of the hour. We can take this forward. Well, at the end of the day, spot it. All of us together, spot it, speak it, do it, and stop it. Prevention. Spot it,
Speak it. Make the children speak. Make the adolescents speak. Do it. Make the AHTUs deliver. Make all of us work together and stop it. Thank you. Namaste. Jai Hind. Thank you so much, sir. We are very fortunate to be trained by you in this session. And as you have rightly mentioned, human trafficking is a basket of crimes. There are so many crimes involved at all the stages of human trafficking. I request everybody to kindly be seated, please. And as sir has rightly mentioned, this line, spot it, speak it, act it, and stop it. I think this is the action which is required at our end to combat human trafficking. We'd have an open house discussion for 10 minutes. We limit it to 5 minutes because we are running short of time. So if anybody has any question to ask to sir, they may feel free to ask. We just have 5 minutes, so we'll just take 2-3 questions, so please ask. नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग से हूँ। अभी नेशनल कमीशन से जब हमें टास्क मिला है तो हमने अभी अपने कई जिलों में 8 जिलों में हमने अभी वर्कशॉप किया है। हमें इतनी जानकारी नहीं थी जितनी जानकारी आपने दिया है, पर चूँकि मैं प्रोफेशनली एडवोकेट भी रही हूँ तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जितने भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आपने केसेस की संख्या बताई है, इन केसेस के रिपोर्टिंग में उनके एक्विटल एंड कन्विक्शन रेट का डेटा क्या है, परसेंटेज डेटा क्या है? जिनको पुलिस इतनी मजबूती से पकड़ करके लाती है, उनके ऊपर केस रजिस्टर होते हैं, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, परंतु उसमें एक्विटल डेटा और कन्विक्शन डेटा की जानकारी भी आपके पास है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैडम, जो डेटा अवेलेबल है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड NCRB का क्राइम इन इंडिया में है, वही है जी। ऑथेंटिक डेटा वही है। वी कैन ओनली गो बाय दैट, बट दैट डेटा इज नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ फॉर वेरियस रीजन। मतलब एवरेज परसेंटेज ऑफ एक्विटल एंड कन्विक्शन वो है ना उसमें मैंने आपको दिखा 3 पॉइंट, लास्ट ईयर 3 पॉइंट बहुत कम है लास्ट ईयर। इसीलिए मैं इस पॉइंट पर आपको क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम इतने सारे एफर्ट करते हैं, उस एफर्ट के बाद में जब वो केस रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद उस महिला को हम कोई भी लीगल सपोर्ट नहीं देते हैं, और जो कोर्ट में जाकर के केस में गवाही देना और इन सारी चीज़ों पर हमारी कोई तैयारी नहीं होती और उसका कोई फीडबैक और फॉलोअप नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैकुना है कि हम इतना सब करते तो हैं परंतु उसके बाद उसको रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और जिसका फ़ायदा जो आदतन इस तरीके के अवैध व्यापार में लिप्त लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो इसके लिए कोई हमारे पास तैयारी या कोई और उसके बारे में जानना पॉइंट आपको समझ गया मैडम। मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा मैंने जल्दी बोल दिया, मे बी आई वाज नॉट क्लियर टू यू। सबसे पहला पॉइंट, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। जहाँ क्राइम होती है ना, मैं पुलिस आपसे यही कहा कि आपकी इतना सारा क्राइम है, छोड़ दो, एक केस को इन्वेस्टिगेट करो ना, एक केस सही करो, सोर्स ट्रांसिट डेस्टिनेशन मैंने किया था, एक बढ़िया प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए, प्रॉपर उसका ट्रायल कराए, और उसमें विक्टिम का सपोर्ट के लिए इतने सारे मैकेनिज्म हमारे पास है। विक्टिम को मैंने आपको दिखाया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विक्टिम को अभी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट जाए विक्टिम के पास, सेलफोन है ना, सेलफोन लेके विक्टिम के पास पहुंच जाओ, कोर्ट जाती है विक्टिम के पास, विक्टिम को कोर्ट में नहीं आना है, पहले था। तो ये सब किसको मालूम है? इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि साहब गुड प्रैक्टिस हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा है, उसको डॉक्यूमेंट करने से आपको आइडिया हुआ अरे ये भी तो है। नो, दिस सॉर्ट ऑफ आइडिया वी शुड नो बाई डॉक्यूमेंटिंग गुड प्रैक्टिस। आई एम वेरी हैप्पी NCW इनिशिएटिव से ये हो जाएगा। हमारे यहाँ गुड प्रैक्टिस से कोई कमी नहीं है, वो प्रैक्टिस आप समझ लेंगे तो इसमें नंबर 1 विक्टिम को कोर्ट नहीं जाना है, कोर्ट विक्टिम को पास आएगा, इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल करना है, पुलिस को ट्रेनिंग देना है। ये सेंसिटाइजेशन इज ओनली वन पार्ट। जो सोने वाला आदमी को उठाकर बैठा दिया वो सेंसिटाइज हो गया, उनको करना है क्या, उनको बताना चाहिए, नॉलेज, स्किल्स, स्किल ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन, तो ये होगा देन ही विल डिलीवर। तो हमको लगता है कि इस तरह का जो मैंने पॉइंट दिया था, इट वाज लिटिल टू फास्ट, मैं जानता हूँ, तो उसमें एंटायर रेसिपी मैंने दे रखा है, वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो यू आर अवेयर, छत्तीसगढ़िया एक बस्ती है, आपने सुना है? मुंबई में नहीं, उसकी जानकारी नहीं है।
वाम्बा द फेमस नोटोरियस एरिया में एक छत्तीसगढ़िया बस्ती है, मैं खुद गया वाम्बा, मैंने खुद देखा 7 साल की बच्ची को as a prostitute. You feel miserable. What has fallen on us? A lot of girls are even now being trafficked from Chhattisgarh to Mumbai. It's an area where we should work on. आप जाओ मुंबई जाके देखो छत्तीसगढ़िया बस्ती कहाँ है, and then take it backwards. You can do a lot of things. Thank you. सर मेरा भी एक पॉइंट है. Thank you so much. We'll just have one more question, please, and then we have to move on मैम to the एक next क्वेश्चन session. मेरा है. जी, सर, नमस्कार, मैं साई कृष्ण फरीदाबाद हरियाणा पुलिस से. सर मैं वुमेन ट्रैफिकिंग पे अपने लेवल पर अपने पैशन के कारण काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ और कुछ दिन मेरे मन में आइडिया आया जब लग पूरे डिपार्टमेंट एक प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करेंगे तब लग इसको रोकना इम्पॉसिबल है. मैंने एक साइट डेवलप करी मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन और उसको जनता को एक अथॉरिटी दे दी जिसका भी कोई बंदा गुम होता है पुलिस आपकी कार्रवाई करे या ना करे यदि आप इस पे अपना फोटो अपडेट करेंगे तो आपकी 100% कार्रवाई होगी. और 2017 से अब लग 39,000 मिसिंग केस उस पर रजिस्टर्ड हुए जिसमें जो फाउंड पर्सन हैं उनको भी कुछ एनजीओ को सीडब्ल्यूसी को भी हमने इसमें ऑप्शन रखा भाई जो भी बंदा मिलता है आप उस पर डाल सकते हैं. और अब तक इसमें 9,923 ऐसे पर्सन हैं जो अपडेट हैं जिनकी फैमिली नहीं मिली हुई है और 14,561 ऐसी लावारिस डेड बॉडी हैं जो बच्चे की हैं महिला की हैं जो या तो मर्डर करके फेंक दी गई हैं या किसी बीमारी के कारण वो उनकी डेथ हुई है. इसके साथ साथ लगभग 4,000 व्यक्ति उनकी फैमिली में भी मिलाए गए हैं. मेरा क्वेश्चन ये है हमारी तैयारियां तो बहुत हैं हम स्पीच भी हमारे काफी रहते हैं लेकिन विदेशों से भी हमारे काम की तारीफ हुई है कि भाई ये काम हमने यहाँ भी करना है. इंडिया से किसी भी आयोग की या किसी और सरकारी किसी मीडिया का हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है. तो मैम जैसे क्वेश्चन कर रही थी हमारी तैयारी नहीं है. शायद मुझे लगता है पुलिस पर अब भी बात आई थी भाई पुलिस की काफी कंप्लेंट आती हैं लेकिन पुलिस के काफी सराहनीय काम भी हैं अक्सर वो दिखाई नहीं जाते. सर आपने सवाल के जवाब ही आपने दे दिया, बहुत अच्छा काम है. मैंने भी यही रिक्वेस्ट किया था कि आप जाओ पुलिस स्टेशन में, मैंने रिक्वेस्ट किया ना आप जाओ पुलिस स्टेशन में, आप जाओ पुलिस स्टेशन में, वॉक द टॉक एंड वॉक द टॉक. पुलिस नीड्स यू, पुलिस आपको आपकी जरूरत है. आई कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस. थैंक यू सो मच. Thank you so much. We now move forward to our next session. Our second session is on understanding the different dimensions of human trafficking. And the speaker for this session would be Shri Virendra Mishra, sir. Let's have a huge round of applause for sir. He is currently the Assistant Inspector General of Police at Police Headquarters, Bhopal. Previously, he had held significant roles as Director, National Institute of Social Defense, Ministry of Social Justice and Empowerment, Director, National Service Scheme, NSS, Executive Director, Nehru Yuva Kendra Sanghatan and YKS, CEO, Central Adoption Resource Authority. Besides that, he has also served in 2 United Nations missions for 1 year each. He is a Fulbright Humphrey Fellow, a Kalinga Fellow, and also an honorary adjunct professor of law, teaching human trafficking at Jindal Global Law School. Besides holding several multidimensional roles, he is also on the advisory board of many organizations and published several highly acclaimed books and journals. He is one of the leading anti-human trafficking experts that India has today, and we are fortunate to listen into his views. Thank you, sir. The floor is yours. Thank you so much. Thank you, NCW Chairperson and BPR&D, DG sir. Each one of you who are here. PM नायर साहब के बोलने के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बोलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लेते हैं. फिर भी मैं कुछ बेसिक चीज़ों पे चर्चा करूँगा और उसका उद्देश्य यही है कि अगर पुलिस वाले हैं या कोई भी है तो ट्रैफिकिंग क्या होता है वो हमको समझ आ जाए. ह्यूमन ट्रैफिकिंग नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो डायमेंशंस की बात करते हैं, बट कोई अगर नॉर्मल अपराध है वो अपराध आईपीसी में आएगा कि वो धारा 370 में लें या डिफरेंट और जो होता है वो
मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है कि नहीं है, वो कैसे है, उसके सिर्फ थोड़ी बारीकियों के बारे में चर्चा करूंगा, ताकि हम जो आज जैसे हम बात कर रहे थे कि अवेयरनेस की जगह ये एक्शन होना चाहिए, तो हर व्यक्ति कैसे एक्शन ले सकता है, तो उसके बारे में चर्चा हो जाएगी। डायमेंशन सर ने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। कुछ डायमेंशन जो मुझे लगता है ये हमारे अप्रोच में और क्या बदलाव आना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। विद ऑल रिस्पेक्ट टू PM नायर सर, बिकॉज इज ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग, बट जो थोड़ा बहुत मुझे लगा, क्योंकि सर के पास समय का अभाव था, जहाँ गैप्स हैं, हो सकता है कोशिश मैं करूंगा मैं उसको फिल करूं। और तीसरा जो एक मिथ है, ये जो बहुत बड़ा मिथ है और ग्लोबल मिथ है, ये मैं सिर्फ भारत का नहीं कह रहा हूं, कि विचारों में यही है सबके कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रॉब्लम है, और जब भी हम बात करते हैं तो सिर्फ पुलिस बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का नहीं है, सोशल जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। और जिस दिन ये हम समझ लेंगे कि ये सोशल जस्टिस सिस्टम का फेलियर है, तो दबाव भी पुलिस पे कम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कम हो जाएगा, और हर व्यक्ति, जो सर ने बोला है, सभी ने बोला है, वो अपने आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे। अगर आप सभी एक्शन लेना शुरू कर देंगे, जिसमें कि आके लास्ट में भी बोल रहे थे कि अब हम नहीं कर पाते क्योंकि सब अपना सहभागीदारी नहीं होता है, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो जैसे ही हम समझ लेंगे कि सोशल जस्टिस सिस्टम, वी हैव टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम is a part of social justice system. We have developed into an independent identity now. But if you go to the history, criminal justice system was part of social justice system. It has branched out from that. तो जब हम इस बात को समझ लेंगे कि सोशल जस्टिस सिस्टम का ये इशू है, हर व्यक्ति एक सोशल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, और हम अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगे, तो वो खत्म हो जाएगा। उसमें से खाली एक दो मुद्दों पे शुरुआत करने के लिए, प्रेजेंटेशन बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है, समय में कोशिश करूंगा उसको खत्म करूं मैं। एक डेटा के बारे में बात हो रही थी, सर ने भी उसको पॉइंट आउट किया, डीजी सर ने, PM नायर सर ने भी बात किया, आप लोगों ने भी बात किया उसके डेटा के बारे में। तो डेटा का मैं एक बात आपको थोड़ा सा एक जानकारी दूं कि ILO ये कहता है, ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UN ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोग के हिसाब से प्रत्येक 1000 व्यक्ति में, प्रत्येक 1000 व्यक्ति के पीछे 5 व्यक्ति ट्रैफिकिंग का विक्टिम है। यानी इतना वाइड स्प्रेड ये प्रॉब्लम है। और प्रत्येक 1000 बच्चों में 4 बच्चे, 4.4 वो कहता है, तो हम 4 ही मान के चलते हैं, 4 बच्चा विक्टिम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। So just imagine the population of India is 135 crores, somewhere close to that. If we take that data and try to put it here, just imagine how many crores of population are vulnerable to victimization. And what does the NCRB data says, which sir has pointed out here? NCRB says we have around 4,700 victims as per the latest data. So is there a match? और इज देयर एन ह्यूज मिसमैच? तो अगर है तो क्या, अगेन चर्चाओं में ही ये बात आ चुकी है, क्या हम रजिस्टर नहीं कर रहे हैं केसेस का, या वो रजिस्टर नहीं करा रहे हैं केसेस का? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज्यादा समय विक्टिम को एहसास ही नहीं है कि वो विक्टिम है। दे डू नॉट रियलाइज दैट दे आर विक्टिम्स, बिकॉज there is a concept in sociology called normalization. So the victimization has got normalized in many fronts. उनको एहसास ही नहीं होता हम विक्टिम से। बहुत कहानी, जैसे सर ने बताया कि वो बच्चे रेस्क्यू हमने किए यहाँ से, हैदराबाद के अगल बगल के ही 5 अगर स्टेशन में इतने बच्चे रेस्क्यू हो रहे हैं, तो इमेजिन करिए कि कितना मूवमेंट है। मुझे याद है भोपाल में जब पदस्थ था मैं वहाँ पे CID में, तो वहाँ पे भी खूब बच्चे रेस्क्यू होते थे भोपाल में, और जिससे पूछे पता लगता था उनके माँ बाप भेज रहे हैं, या खुद शौक से जा रहे हैं, खुद जाना चाहते हैं। और उनसे क्या काम कराया जाता है, क्यों बच्चों को रिक्रूट किया जाता है? एक, क्योंकि उनको नुकसान हो जाए, स्टेक कम है, पैसा कम देना पड़ता है। और कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें कि बच्चों का हाथ ही काम आते हैं, जैसे अंडे निकालना है आपके चिकन फार्म से, छोटे छोटे हाथ है। बहुत ऐसे चीज है, छोटी छोटी नीटिंग के लिए बच्चों का ही हाथ या उंगली की जो उंगलियां हैं उसी का काम होता है। बट इट हैज बिकम नॉर्मलाइज्ड। हम यहां खड़े होकर बोल रहे हैं कि वो लेबर है, चाइल्ड लेबर है, एक्सप्लॉयटेशन है, बट उसको एहसास ही नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है। इसीलिए हो सकता है कि हमारे पास में जो विक्टिम्स का नंबर NCRB का है वो कम है। द ओनर शुड नॉट बी पुश्ड ऑन पुलिस सेइंग दैट वी हैवंट रजिस्टर्ड। Could be one of the factors, could be one of the reasons, but actuality is that there is possibility that victims do not know or the people are not coming to register as well.
नेक्स्ट। हिंदी में इसको आज क्योंकि चर्चा हो रही थी कि मानव दुर्व्यापार भी इस्तेमाल करते हैं और मानव तस्करी भी यूज करते हैं, तो एक्चुअल जैसे पीएम नायर सर ने बता ही दिया कि हिंदी में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हिंदी भाषी बहुत लोग हैं और जिस लेवल के हमारे लोग अधिकारी लोग हैं या पुलिस के भी लोग बैठे हुए हैं, तो शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो तस्करी, स्मगलिंग एंड दुर्व्यापार इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच सर हैज ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। बस उसमें खाली एक चीज मैं बता दूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बेसिकली वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन स्मगलिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट अ स्टेट। यह किसी देश के विरुद्ध क्या कहते हैं, क्राइम है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी व्यक्ति के वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ये बेसिक है, उसके बाद बाहर का है, विदेश विदेश, ये सारी चीजें सर ने बता ही दिया। मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा था, इसलिए ह्यूमन दुर्व्यापार और आपके इसमें मानव तस्करी और मानव दुर्व्यापार में फर्क है। नेक्स्ट। ये मैं सिर्फ इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि अगर जो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या ट्रैफिकिंग इन पर्संस है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मॉडर्न डे स्लेवरी है जो शब्द यूज करते हैं। अगर आप एमएचए का अगर आदेश निकालना शुरू करेंगे लगातार, आप देखेंगे कि प्रत्येक साल या प्रत्येक 2 साल में जो निकला हुआ है ऑर्डर्स, उसमें कोई ना कोई दूसरा शब्द यूज हुआ है। कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूज हुआ है, कभी आपका ट्रैफिकिंग इन पर्संस हुआ है, कभी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स हुआ है। बट मोर और लेस ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स यूरोप का कॉन्सेप्ट वर्ड है, वो टर्मिनोलॉजी है। ट्रैफिकिंग इन पर्संस यूएसए का टर्मिनोलॉजी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉलोकियल है जो हर आदमी बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और मॉडर्न डे स्लेवरी एक नया कॉन्सेप्ट है जिससे कि इसको हम लोग सेंसिटाइज कर पाए कि ये आज के दिन की स्लेवरी है। अदरवाइज सब एक ही मतलब है सभी का। मगर अभी जो लेटेस्ट बिल जो लाया गया था जिसको कि टेबल नहीं हो पाया अभी तक, वो ट्रैफिकिंग इन पर्संस है, लेटेस्ट ये है। नेक्स्ट। बहुत बेसिक्स में जानकारी दे रहा हूं। अब ये आता है कि ये एएमपी मॉडल है, ये जिसको मैं बोलता हूं कि अगर ये समझ जाए कोई व्यक्ति तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरा समझ जाता है। कोई भी कृत्य, थैंक यू, कोई भी कृत्य यानी एक्शन क्या होना चाहिए कोई भी कृत्य को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की परिधि में लाने के लिए। एक्शन क्या मीन्स अडॉप्ट होना चाहिए, यानी क्या माध्यम होना चाहिए उस एक्शन के लिए, और फाइनली किस पर्पस के लिए उसको किया जा रहा है। अगर ये 3 चीज हमको समझ आ जाए तो कोई भी क्राइम, जैसे सर बोल रहे थे कि स्लेवरी में सब कुछ कवर हो सकता है, ये अगर समझ आ जाए तो वो आराम से आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, क्राइम में रजिस्टर करने में आसान हो जाएगा, या कोई भी व्यक्ति समझ पड़ पाएगा। यानी एक्शन ये होना चाहिए कि एक्शन में ये बताया जाता है कि भाई एक जगह पे आप रिक्रूट करते हैं, यानी कोई विक्टिम जो होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वो एक जगह से आ रहा है, यानी ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जिसकी हम बात करते हैं, जिसपे मैडम चेयरपर्सन मैम बार बार बोल रही थी, सोर्स, ओरिजिन, वहां पे किसी विक्टिम को हम रिक्रूट करते हैं, यानी आप उसकी भर्ती करते हैं। जो लेना होता है विक्टिम को, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। देयर इज अ टर्म यूज फॉर दैट टेक्निकली। और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर। उसके बाद उसको कोई व्यक्ति उसको लेता है, रिसीव करता है, और फिर उसके बाद उसको मेंटेन करता है, जो लगातार एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये पूरा एक्शन है उसका, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अगर ये आ जाए एक्शन में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का संभावना है। अब उसमें जब हम बात करें रिसीविंग का, प्राप्त करना, मेंटेनिंग अ पर्सन, जब इसको खुद पढ़ेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि ये एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। और अगर एक व्यक्ति ये सब कुछ नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से अपने आप ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं, बिकॉज नॉट अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। रिक्रूटमेंट, मूवमेंट, हार्बरिंग, and then receiving, and then maintaining. So that is why there are a couple of people who are involved in that, so it becomes organized crime. And what are the means that has to be adopted? And that means is adopted when? कब वो हम लोग वो माध्यम यूज करते हैं? जब उसको रिक्रूट कर रहे होते हैं। जो उस व्यक्ति को हम भर्ती कर रहे हैं, विक्टिम को, उसको स्पॉट करते हैं। सर जैसे बोले कि हम लोग को स्पॉट करना चाहिए, वैसे ट्रैफिकर स्पॉट करता है उसको, विक्टिम को। और विक्टिम को स्पॉट करके वो क्या करता है? ये मीन्स इस्तेमाल करता है उसको। या तो उसको थ्रेट ऑफ फोर्स यूज करेगा, धमकी, बल प्रयोग, जो भी करना है। अदरवाइज वो फ्रॉड डिसेप्शन होगा, उसको बेवकूफ बनाएगा। जैसे बताया, एग्जाम्पल दिया गया कि उसको बोला भैया कि आप डोमेस्टिक हेल्प में आ जाइए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए मिलेगा, और यहाँ आने के बाद में उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है।
यानी फ्रॉड डिसेप्शन का यूज हुआ है, या एब्यूज ऑफ पावर, पोजीशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, गिविंग और रिसीविंग, यानी कहीं लेन देन पैसा का खरीद फरोख्त भी हुआ है, तो ये अगर मीन्स यूज होता है तो वो ट्रैफिकिंग है। रिक्रूटमेंट में अगर ये मीन्स होता है, अगर ये मीन्स इस्तेमाल नहीं हुआ है तो नॉर्मली ट्रैफिकिंग के परिधि में नहीं आता है। बड़ा सिंपल है समझने के लिए। और लास्ट जो बहुत जरूरी है, ये दोनों होने के बाद भी हो सकता है कि वो ट्रैफिकिंग ना हो अगर उसका पर्पस एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और वो एक्सप्लॉयटेशन डिफाइन किया गया है कि या तो शोषण वो सेक्स के लिए हो सकता है, लेबर के लिए हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हो सकता है, यानी तो कोई भी स्लेवरी और सर्विट्यूड के लिए हो सकता है। अब इसका इस्तेमाल हम बता देते हैं कैसे फर्क होता है। ये कि ये मीन्स और ये कृत आपका एब्डक्शन और किडनैपिंग में भी है। फोर्स यूज हो रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे भी किसी तरीके से हम एब्डक्ट कर रहे हैं किसी को, और मीन्स यही इस्तेमाल कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट, उठाया हमने किसी व्यक्ति को, अगर एब्डक्ट किया है, ट्रांसफर किया, ट्रांसपोर्ट किया, किसी व्यक्ति ने लिया, उसको मेंटेन कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, थ्रेट ये यूज किया या कोई भी यूज किया इस मीन्स को। बट वो ट्रैफिकिंग तब कन्वर्ट होगा जब उसको एक्सप्लॉयटेशन के लिए रखा जा रहा है। रैंसम के लिए अगर रखता है तो वो रैंसम का केस हो जाएगा। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे 363, 366, 370 में? दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ एएमपी मॉडल। सो इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट एएमपी इज, रट लीजिए एएमपी क्या होता है। अगर आप रख लेंगे तो एक क्या कौन सा कृत नॉर्मल आप प्रकरण उसमें धाराओं में डाल रहे हैं या नहीं तो आप ट्रैफिकिंग में डाल रहे हैं, बिकम्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। एनीथिंग हैपनिंग, इवन इफ इट इज नॉट गिवन, डेफिनेशन में 3 तरह का बड़ा क्लियर कट दिया हुआ है। स्लेवरी, सेक्स ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड फोर्स लेबर। उसके अलावा सब स्लेवरी और सर्विट्यूड में डाल दिया गया, जो बड़ा जनरलाइज टर्म है जिसमें आप डाल सकते हैं अगर ये सब चीज यूज हो जाता है। तो एएमपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज। नेक्स्ट, ये ओरिजिन, ट्रांजिट, डेस्टिनेशन जो मैंने बताया कि कहां रिक्रूटमेंट होता है, मूवमेंट होता है, डेस्टिनेशन। नेक्स्ट प्लीज। अब ये ट्रैफिकिंग के डायमेंशंस मुझे जो आज कवर करने का मेन है वो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात हो ही गई जो डेफिनेशन में दिया गया है। फोर्स लेबर डेफिनेशन का पार्ट है। मेडिकल ट्रैफिकिंग एक टर्म है जिस पे मैं चर्चा करता हूं। वैसे अगर डेफिनेशन में दिया है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं हम, बट मेडिकल ट्रैफिकिंग में ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी कुछ और भी है। और एडॉप्शन ट्रैफिकिंग, और अभी आप लोगों ने देखा होगा पैंडेमिक टाइम पे दुनिया भर के व्हाट्सएप मैसेजेस चले। कोई बच्चा है जिसके माता पिताओं की क्या कहते हैं देहांत हो गया है, इफ somebody wants to adopt a child, the child is available. Very common. Very clearly as per the law, legal, 2 ही प्रकार से adoption हो सकता है। I have been CARA के CEO, as I was introduced earlier, Central Adoption Resource Authority का, सिर्फ 2 माध्यम है। या तो आप JJ एक्ट के अंतर्गत कारा के माध्यम से आप अडॉप्ट करते हैं, एंड अदर वन इज हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। देयर आर ओनली 2 ways that a person can adopt, but all other means are illegal means. Next please. So what we need to understand is that these dimensions should not be generalized. I mean, जो इसका शब्द है उसको जनरलाइज करेंगे तो कभी भी हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। एंड पर्टिकुलरली ये जो लॉ एनफोर्समेंट के जो लोग बैठे हुए हैं वो बेहतर समझ पाएंगे कि अगर हम यूज कर रहे हैं बार बार सेक्स ट्रैफिकिंग, तो हमारे दिमाग में हरदम सेक्स ट्रैफिकिंग मतलब ब्रॉथल की बात याद आती कि वैश्यागृह एक चकला घर है, वहां पे किसी बच्ची को उठा के ले गएगा और वहां पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दैट इज व्हाट इट हिट्स अस। बट एक्चुअली इज सेक्स ट्रैफिकिंग सो सिंपल? सर ने बहुत चीजें और भी कवर की है, थोड़ा सा और हम डिटेल में जाते हैं कि क्यों हमें समझने की जरूरत है कि डायमेंशंस को रीक्लासिफाई और सब क्लासिफाई करना है अगर हमको उसको एड्रेस करना है। नेक्स्ट, सो लेट अस टॉक अबाउट कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, और अगर इस प्रकार को समझेंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज को एड्रेस करने के लिए आपका मैकेनिज्म डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कहते हैं एक ही झाड़ू से पूरा घर का झाड़ू नहीं दिया जा सकता है, एग्जैक्टली वैसे ही हमारा अप्रोच हर चीज के लिए अलग होने की जरूरत है। प्रोस्टिट्यूटेड जो बात हुआ, मोरलेस में ब्रॉथल की बात करता हूं, इसमें वैश्यावृत्ति जहां पे कि ब्रॉथल में हो रहा है या चकला घर की जहां बात करते हैं। सेकेंड इज कम्युनिटी बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, which perhaps ma'am while speaking she थोड़ा सा उसको अंडरलाइन किया था उन्होंने। कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कम्युनिटी बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसको कि CBSE बोलते हैं, वो आपको एग्जांपल ये आएगा जैसे कि बेड़िया बाछड़ा समुदाय जिसमें कि इंटरजनरेशनल प्रोस्टिट्यूशन होता है, कहीं पे नट कंजर सांसी
बहुत जगह पे देवदासी, ये सारे जो सिस्टम है, देयर इज अ कम्युनिटी बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। वो एक समुदाय में ही वो लोग रहते हैं, अगल बगल के लोग उसके कस्टमर हैं, और हम लोग जब बगल से निकलते हैं तो कहते हैं कि ये तो, क्योंकि वही नॉर्मलाइजेशन टर्म कम्स है, हम लोग कहते हैं कि अरे ये लोग इसी धंधे में लगे हुए। बस यहीं पे हमारी कहानी खत्म। वी नेवर एवर ट्राई टू somehow resolve or see that how they can be rehabilitated. कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में ये बात होती है कि भाई अगर वहां पर बेड़िया बाछड़े अगर कम्युनिटीज में इफ दे आर इनटू प्रोस्टिट्यूशन, एक और चीज, इटपा में पर से प्रोस्टिट्यूशन हैज नॉट बीन कंसिडर्ड टू बी क्राइम। डेफिनेशन में दिया हुआ है, बट कहीं भी प्रोस्टिट्यूशन एज सच क्राइम नहीं लिखा हुआ है इटपा में, इफ आई एम राइट। सो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में आपने पढ़ा है, बड़ा रिसेंटली आया, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है कि प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल। दे हैव टर्म, उन्होंने बड़ा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया है। सो अगर कम्युनिटी बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, एंड सपोज इट इज बाय कंसेंट, so then why do we consider it to be a human trafficking case? Even if it is a prostitution, then why do we say it is human trafficking? इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोस्टिट्यूटेड जो रहते हैं वो महिलाएं जिसे बोलते हैं, वो बच्चियां हैं। 13-14 साल की बच्चियों को प्रोस्टिट्यूट किया जाता है इन समुदाय में, और एज पर द डेफिनेशन द कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड इज नो कंसेंट, इट इज नल एंड वॉइड। अगर 18 साल से कम व्यक्ति का कंसेंट है किसी भी चीज में तो उसको मान्य ही नहीं है। सो यहां पे अगर कम्युनिटी बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में 12-13 साल की बच्चियां, 14 साल की बच्चियां अगर वो प्रोस्टिट्यूट हो रही हैं तो इट बिकम्स अ केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑटोमेटिकली। And in other case for adult, what is consent? If at all the means adopted which has been told earlier, पहले हमने जो means बताया था, अगर वो means इस्तेमाल किया गया consent लेने के लिए adult के लिए, तो वो consent null and void है। consent का बड़ा clear है definition, किसको consent को मान्य मानते, किसको नहीं मानते। If the consent for the adult is after using that means, then it is no consent. And for a child, it doesn't matter what means have been adopted. Because a child doesn't have the, they say that कि वो माना जाता है कि उनके पास वो consent देने की वो power नहीं है, whatever. They're not mature enough to give consent. So इसीलिए CBSE में आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट आता है। बट CBSE में देखिए, ब्रॉथल में पुलिस वाले हम लोग जो हैं चले जाएंगे, एक्शन ले लेंगे, बट बगल में ही गांव में हो रहा होगा तो हम नहीं एक्शन लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अ माइंडसेट। थर्ड इज सेक्स टूरिज्म। सेक्स टूरिज्म बहुत अलग है ब्रॉथल में जो प्रोस्टिट्यूशन होता है उससे। इसमें इन्वॉल्वमेंट जो लोगों का होता है, कितने बार परिवार वालों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ब्राइड ट्रैफिकिंग, फोर्स मैरिज, ब्राइड ट्रैफिकिंग केसेस आपने कितने सुने होंगे, जहां की बच्चों की भी शादियां हो रही है चाइल्ड मैरिजेस में, उसके अलावा एडल्ट्स भी बिक रहे हैं। पता लगता है कि एक कम्युनिटी है, आई वोंट लाइक टू नेम द कम्युनिटी, समवे क्लोज इन हरियाणा, मेनी पीपल हैव कम फ्रॉम हरियाणा, जहां की महिलाओं को दूर दूर से लेके शादी करते हैं उनसे, एंड द सेम गर्ल हु इज मैरिड देयर इज, she stays as wife of all the male members of that community, unless and until they have enough money to buy another girl. Bride trafficking, there are n number of cases. दुनिया भर के वेस्टर्न कंट्रीज में मेल ऑर्डर क्या कहते हैं ब्राइड है। अगर यूएसए में जाएंगे तो एक वेबसाइट है मेल ऑर्डर ब्राइड, वहां पे जाइए और पूरे संसार से किसी तरीके के महिला को अगर आपको लेना है, शादी करना है, तो वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। So it has gone online now. Bride trafficking has gone online. The bride harvesting is a new concept now which has grown, and it's growing in a big way. Bride harvesting चल रही है आज। Pornography. Pornography कहा जाता है कि ये पैंडेमिक के टाइम में सबसे ज्यादा जिसका बढ़ा है, that is pornography. Why pornography? Because skin to skin, कोविड का सेकेंड वेव, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कोई रखना चाहता होगा, बट pornography increased in a big way. That is, they say that कि कितने thousands आपके वेबसाइट्स बढ़े हैं पैंडेमिक के टाइम पे. Lot many websites on pornography increased. एक डेटा ये है जो कहता है कि कितने हजारों में हुआ करता था आज से 8 से 10 साल पहले. Only they were in thousands, this pornographic sites, and now it has gone to lakhs now. Just imagine the demand that we are talking about here, कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है. And entertainment, of course, बहुत तरीके के एंटरटेनमेंट्स में यूज होता है.
उनका exploitation होता है, which is a part of sex trafficking, because the body of the woman is considered to be like, is abused for entertainment. Next. Supreme Court का भी judgment. Next. Prostitution कैसे sex trafficking में convert होता है, उसके बारे में है ये पूरा का पूरा. कि जैसे केसेस अगर मान के चलें कि आजकल जो ये भी शिकायतें होती, कर्नाटका ने अभी एक स्टडी किया था, उसके हिसाब से उनका ये मानना था कि अगर क्या कहते हैं, बहुत आजकल बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जो सिंपल छोटे छोटे चीज के लिए दे आर रेडी टू सेल देयर बॉडी एंड दे आर डूइंग ऑन देयर ओन. मोबाइल चाहिए, बाहर हमको खाने के लिए चाहिए, शाम को हमको इवनिंग पे चाहिए, बिकॉज ऑफ कि जो हमारा पीयर प्रेशर है, पीयर ग्रुप जो है, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू डू दैट. वो जा रहे हैं, पता लगा कि आपको रात को स्पेंड करें किसी बार में, हम नहीं कर पा रहे हैं. फॉर दैट दे आर यूजिंग इट. सो दैट इज बेसिकली अ प्रोस्टिट्यूशन. But how it becomes sex trafficking, if that is violation and abused by others, then it becomes sexual exploitation. So ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये मूव होता है फ्रॉम क्या कहते हैं, prostitution to sex trafficking. Next please. Now let us talk about forced labor. फोर्स लेबर हमने बात किया, तो फोर्स लेबर में भी कितने तरीके के डायमेंशंस है, क्योंकि मैं जनरलाइज टर्म पे बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर हम लोग फेल कर रहे हैं अभी तक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इतने एक्टिव लोग हैं, इतने सेंसिटिव लोग हैं हमारे पास में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहा है, अधिकारी लोग सेंसिटिव हैं, आई वुड से द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज सेंसिटिव, द अदर स्टेक होल्डर्स आर सेंसिटिव, देन व्हाई आर वी अनएबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम और कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इट इज जस्ट बिकॉज वी जनरलाइज द टर्म. अब जनरलाइज करके चलेंगे तो नहीं होगा, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मैंने सेक्स ट्रैफिकिंग में बताया. नेक्स्ट प्लीज. सो इफ यू गो इनटू फोर्स लेबर, exploitation in agriculture sector would be different than exploitation in domestic health area. आप घरों में जब आते हैं आपके घर में, और खास करके जो मेट्रोज हैं यहाँ पे दिल्ली में देखेंगे, तो मेरे ख्याल से हर घर में कहीं ना कहीं बाहर से एक डोमेस्टिक हेल्प लिया गया है. एंड वी डोंट केयर कि वो कहाँ से आ रहा है. हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना सा रहता है कि बस हमारे घर में वो काम करे, और बस ये रहे कि अगर मैं रात को 1 बजे पार्टी करके लौट रहा हूं तो दरवाजा वो खोले, और सुबह में 4 बजे अगर दौड़ना चाहता हूं तो मुझे वो बेट्टी दे दे. बस ऐसा हमको लेबर चाहिए. सो वी आर लाइक ग्लैड टू एक्सप्लॉइट देम, एंड हाउ दे हैव कम वी डोंट केयर. सो डोमेस्टिक हेल्प इज अ बिग वे, एंड टू एड्रेस डोमेस्टिक हेल्प, it is different than how you address a problem of trafficking in agriculture. एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा जाता है कि चाइल्ड लेबर 60% चाइल्ड लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में है, मगर आप बात नहीं करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% ऑफ चाइल्ड लेबर. इंडस्ट्रीज डिफरेंट, बॉन्डेड लेबर डिफरेंट, स्मॉल बिजनेसेस, एज आई टोल्ड यू, लाइक बच्चों का जो मूवमेंट होता है, चाहे एग पिकिंग में हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए भी होता है, और वैसे भी हर जगह पे कॉटेज इंडस्ट्रीज में कैसे महिलाओं का होता है. चाइल्ड सोल्जर जो सर बता रहे थे, दैट्स अ ह्यूज थिंग, एंड बिलीव मी वी डू नॉट टॉक अबाउट चाइल्ड सोल्जर्स. अगर कभी भी चाइल्ड सोल्जर का अगर आप देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर गूगल करेंगे, तो वो कौन सा बोको हराम, you will see about exploitation as child soldiers only in Africa. ऐसा ही दिखता है आपको अगर गूगल करेंगे तो. Do we know how many kids are there in insurgency areas or Naxalite areas? Sir has been an example कि कितने लोगों को सर ने रेस्क्यू किया और उनको रिहैबिलिटेट किया है. But do we talk about here openly कि child soldier is a form of trafficking, we should be stopped? And what sort of trafficking, मतलब किस तरीके का exploitation होता है उनका? Child soldiers का 2 तरीके का exploitation होता है. When they are recruited, they are used, exploited either as combatant or a non-combatant. A combatant means a person who is given a weapon to fight. उसको फ्रंट लाइन में रखेंगे. और नॉन कॉम्बैटेंट वो होगा जो मैसेंजर होगा, खाना पीना लेके जा रहा है, खबरें फैला रहा है, सब कुछ जो दुनिया भर के वो बन गया, वो सारी चीजें नॉन कॉम्बैटेंट एरिया में होता है. एंड ऑलवेज देयर लाइफ इज एट थ्रेट. They are exploited. They are forced to do something which they won't like to do. All their rights, that is compromised. So it's a pure case of child soldier. It's a pure case of human trafficking. But we never talk about it. Begging, quite a common thing. Next, please. So, अब मेडिकल ट्रैफिकिंग टर्म देने का कारण यही था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तो डेफिनेशन में दिया गया, बट डेफिनेशन हम बताते कहां से आया है. आप समझ जाएंगे पूरी इसकी हिस्ट्री की डेफिनेशन क्यों बायस्ड है.
2000 में ही पैलर्मो प्रोटोकॉल डेफिनेशन आया, जो यूएन का पैलर्मो प्रोटोकॉल था। इटली में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां से डेफिनेशन लिया गया। उसके 1.5 या 2 महीने पहले सर जैसे टीआईपी रिपोर्ट बता रहे थे, वो ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट करके एक अमेरिका ने बनाया 2000 में। ये अगर नवंबर में किया होगा तो वो मेरे ख्याल से अक्टूबर या सितंबर में किया। दोनों एक डेफिनेशन लेके आए। क्योंकि अमेरिका का पहला आया यूएसए का, तो उन्होंने अपने ट्रैफिकिंग डेफिनेशन में एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ 2 ही तरह रखा। वो था ऑर्गन क्या कहते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर एंड स्लेवरी सर्विट्यूड ऑफ कोर्स। यहां पे जब यूएन ने लिया तो यूएन ने उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी ऐड कर दिया। बट उसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो इतना लोडेड है, क्योंकि उस जमाने में ये मान्यता या सोच ये था कि सोर्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, हम लोग सोर्स हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज डेस्टिनेशन है, यानी वहां ले जाके उनका एक्सप्लॉयटेशन वहां होता है, शोषण उनका वहां होता है। दिस इज व्हाट वाज all about the definition. That is why if you see a lot of emphasis is on transport transfer. Transit part में बहुत ज्यादा emphasis इसीलिए दिया गया है। Recruitment and then you see that it's transit, transport, harbor. पूरा का पूरा उन्होंने movement दिया उसको, क्योंकि मानना था कि वो तो होना ही होना है। It is always a cross-border trafficking. And now USA has realized, because I was there as Humphrey Fellow 2012 and 13, you won't believe the importance given by US government now. In 2012-13, that was the year when Obama का वो second tenure का election चल रहा था, and Bill Clinton Foundation तब खुला था या start हुआ था, बड़ा active हो रहा था। तो उन्होंने मिट रोमनी और ओबामा को बुलाया वहां पे कि आप लोग भाषण दीजिए, जो normally वहां होता है debate type का। And you won't believe, Obama talked about human trafficking, nothing else. Mitt Romney talked about economy and everything. So he started giving that much of importance to human trafficking. और अब and modern day slavery concept उन्होंने बहुत develop किया, USA का developed है ये concept, modern day slavery. Otherwise it was not there. No, you won't find it anywhere in the definitions otherwise. To emphasize the gravity and the seriousness of the crime, they said it is modern day slavery. और एक वीक ह्यूमन ट्रैफिकिंग वीक, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वीक और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मंथ ऑब्जर्व होता है अब यूएसए में। इट ऑल केम फ्रॉम देयर। सो देन दे रियलाइज इट जस्ट हैपेंड, जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं कि हो गया तो हम इसलिए मानना शुरू कर दें। उनको तब रियलाइज हुआ कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग से बड़ा तो हमारा डोमेस्टिक ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम हो गया। एक स्टडी ये कहती है वहां पे यूएसए का कि 48 घंटे के अंदर अगर कोई बच्ची भागती है, विच इज कॉल्ड रन अवे, within 48 hours of a runaway case, the girl is approached by a trafficker. And very recently I did a study for BPR&D on missing children and linkages with human trafficking. And there also I found, जो बच्चों से मैंने इंटरव्यू किया था मुंबई में, अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में CCIs में जाके, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, तो वहां भी यही हुआ। पता लगा कि जो वहां पे ट्रैफिक विक्टिम्स जो रेस्क्यूड वहां पे थे, 48 घंटे के अंदर, चाहे वो भागी हुई है कोई भी हो, 48 घंटे के अंदर उनके पास में कोई ना कोई व्यक्ति, एक ट्रैफिकर आया था। सो द नेटवर्क ऑफ ट्रैफिकर्स इज सो स्ट्रॉन्ग दैट दे जस्ट लुक फॉर द वल्नरेबिलिटी। कहते हैं ना कि किसकी ट्रैफिकिंग होती है? ट्रैफिकिंग सिर्फ उसी की होती है जो वल्नरेबल होता है। अगर मैं वल्नरेबल हूं यहां पर, तो ट्रैफिकर समझ जाएगा कि मैं वल्नरेबल हूं। इट डजंट मैटर टू हिम इफ आई एम अ पुलिस ऑफिसर, or if I am like, from some middle class or upper middle class or elite culture, they don't care. They would spot your vulnerability and they are going to traffic you. Because it is considered to be one of the 3 biggest money spinning organized crime in the world. Drugs, weapons, and third is human trafficking. और अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा मनी स्पिनिंग क्राइम होगा ऑर्गेनाइज्ड का। क्योंकि अगर आप वेपन किसी के हाथ में पकड़ते हैं तो वेपन बोल नहीं पाता कि मैं वेपन अपनी मर्जी से इसके साथ जा रहा था, ना ड्रग्स बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से इसके पॉकेट में पड़ा हुआ था। मगर आप विक्टिम को अगर आप कभी भी आप निकालेंगे, रेस्क्यू करेंगे, पहला स्टेटमेंट विक्टिम का यही होता है कि मैं अपनी मर्जी से थी या मैं अपनी मर्जी से था उसके साथ में। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव अ केस ऑफ ट्रैफिकिंग। सो दैट इज व्हाई देयर इज दैट गैप देयर। Human trafficking could be a bigger organized crime than any other organized crime. So coming to organ transplant, जो मैंने आपको definition बताया, सिर्फ organ transplant पैलर्मो प्रोटोकॉल में दिया हुआ है, मगर सरोगेसी एक बहुत बड़ा उभर के आया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में, इसलिए इंटरनेशनल सरोगेसी इंडिया में भी बंद कर दिया था। अब जो सरोगेसी का एक्ट आया है लेटेस्ट 2021 में और 22 का, जो जिसमें पूरा डिटेल्स आए हैं अभी,
तो वो एक्ट इसीलिए है कि रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट इंडिया में भी रेगुलेटरी बॉडी कोई था नहीं, और पूरे विदेशों में भी सरोगेसी। सरोगेसी इज व्हाट वी कॉल इट हार्वेस्टिंग ऑफ वूम, यानी कोक की हार्वेस्टिंग होती है, लोग स्पॉट करते हैं ट्रैफिकर। और इंटरनेशनल बहुत इतना जबरदस्त हुआ करता था। रिमेंबर कारा का जब मैं सीईओ था, एक मुझे ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, ऑस्ट्रेलियन प्रेस वाले मिलना चाहते थे, बोले केस आया उस पर आपका क्या कमेंट है। आई वॉज नॉट नोइंग द केस, सो व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाट इट वाज, आई वॉज टोल्ड दैट देयर अ पेरेंट केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सरोगेट मदर को लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो भी होना होता है, बच्चा जब पैदा हुआ तो वो ट्विन निकल गया। दे वे नॉट नोइंग इट, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हम लोग का मना है, तो नहीं पता लगा होगा या जो भी होगा, या नेचुरली कि उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड में तो पता लग ही गया होगा, बट वॉट एवर दे केप्ट लाइक यू नो केप्ट मम, क्योंकि कहीं माता भाग ना जाए, इसीलिए उसने कुछ पेरेंट ने कुछ नहीं किया। जैसे ही उसके बाद में डिलीवरी हुई, बच्चे को, एक बच्चे को लिया, बोला कॉन्ट्रैक्ट एक बच्चे के लिए था, दूसरा बच्चा मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड दैट चाइल्ड वॉज सेंट टू सीसीआई, एंड वो डिबेट चला, फिर हमारे पास आया कि भाई क्या है ये, अगर हो रहा है तो सही है क्या। दैट इज द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इट हैपेंस द मोमेंट दे टेक द किड। बच्चा लिया, उसके बाद में सरोगेट मदर से कोई संपर्क नहीं है, पूरा का पूरा इट इज अ कोमोडिफिकेशन ऑफ अ वूम। एक कोक को एक कोमोडिफाई कर दिया गया है सरोगेसी के रूप में, इसीलिए अब रेगुलेटरी बॉडी आया है और बताया जाता है कैसे होना है कैसे नहीं होना। दैट वाज अगेन, एंड नोबडी यूज्ड टू talk about it as if it is a human trafficking case. Clinical drug trial. Clinical drug trial, again I have to cross check it, but I'm telling you, like, you know, when I saw that and when I was writing a book on human trafficking, उस टाइम पे जो मुझे गूगल पे मिला था वो ये था कि 2010 में भारत में 10,000 करोड़ का बिजनेस था क्लिनिकल ड्रग ट्रायल पे। एंड एज एनएसएस डायरेक्टर, नेशनल हेड ऑफ एनएसएस, एंड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेहरू युवा केंद्र संगठन, कारा में भी बहुत ट्रैवल करता था मैं, और उसके बाद एनआईएसडी, आई मस्ट हैव गॉन, ऐसे ही मेरे ख्याल से पता नहीं कितने 100 मैंने जगह पे इंटरेक्ट किए होंगे लोगों से, और हर जगह मैं सवाल यही पूछता था, और अभी फिर दोबारा आपसे भी पूछता हूं कि क्या आपको या आपके परिवार या आपके मित्र में किसी पे क्लिनिकल ड्रग ट्रायल हुआ है? आपको खबर है क्या? किसी को खबर हो तो बताइए, जो क्लिनिकल ट्रायल का सब्जेक्ट रहा है, आप या आपके परिवार में से। अब परिवार मान के चलते कि 4 या 5 होते हैं, और उसके 5 के 5 होंगे। जब मैं एक से सवाल पूछता हूं तो आपका कम से कम सर्कल 10 का होगा, उस 10 का 10 होगा। किसी को पता है किसी को हुआ है क्लिनिकल ड्रग ट्रायल? नो, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल इज डिफरेंट। क्लिनिकल ड्रग ट्रायल होता है कि कोई मार्केट में दवाई आने से पहले ह्यूमन ट्रायल होना जरूरी होता है। सो देयर इज एथिकल कमेटी एज पर विच आपको साइन करना होता है। एक केस हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। सब्जेक्ट जो होता है नॉर्मली अगर देखेंगे तो वो रहेंगे जो अंगूठा छाप होंगे, जिसपे क्लिनिकल ड्रग चल रहा है, उनको पता ही नहीं है कि वो सब्जेक्ट है। Things might have changed a lot because अब हमारा MCI बहुत एक्टिव हो गया है, but I'm still telling you, I have been asking not a single person till date, including you guys, आप लोग जो बैठे हुए उसके बाद भी have come forward and said that कि clinical drug trial के बारे में हमको जानकारी है। Then who are the subjects of clinical drug trial? If fraud and deception is used, definition AMP model, हर चीज पे AMP में बोल रहा हूं सिंपल, fraud and deception is used, अंगूठा छाप, उसको पता ही नहीं है, and threat exploitation is that the life is at threat, is not a case of human trafficking. Simple AMP मॉडल आप अप्लाई करिए सब जगह पे, आपको जवाब मिल जाएगा वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि नहीं है। So clinical drug trial, we don't talk about it. So that's why I coined this term medical trafficking. We should talk about medical trafficking. There may be many more issues of trafficking. Next please. Adoption trafficking, बताई दिया मैंने आपको एग्जाम्पल। एडॉप्शन ट्रैफिकिंग का तो ये हाल है कि बड़ा विवाद होता है, और आज के दिन में भी जो अगर एडॉप्टिव पेरेंट यहाँ जिसे हम पैप बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट, इफ यू आस्क देम, दे सेड दैट द सिस्टम इन कारा और व्हाटएवर इन द कंट्री इज वेरी बैड। तो मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मैं बड़ा रिसर्च करके जाता था मंत्री जी के पास, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 30 दिन पेशी होती थी मंत्री जी के पास, तो मैं यही उनके पास रिसर्च करके आता था और उनको बताता था मैं कि अगर 15,000 बच्चे लोग हैं अडॉप्ट करने के लिए एक समय पे, तो उस 15,000 में से 13,000, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक व्हेन आई वाज देयर, कि उसमें से 13,000 भी नहीं 14,000 लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं 0 to 2 years। तो कोई नहीं चाहता 4 साल का बच्चा अडॉप्ट कर लूं, 5 साल का अडॉप्ट कर, हर व्यक्ति को चाहिए वो बच्चा जिसका डायपर में चेंज कर पाऊं। Certainly, emotions is that they want to have that feeling of being a mom, accepted,
तो अब मगर एक टाइम पे जब हम लोग रन करते थे उसको एडॉप्शन का जो नया पूरा प्रोसेस ऑनलाइन सिस्टम हम ही लोग लाए थे उसको कारा में, तो उसमें जब रेफरेंस दिया जाता था एक टाइम पे हमारे पास में 0 to 2 में सिर्फ 2 से 250 बच्चे हुआ करते थे. And the newspaper used to write 10,000, 20,000 kids on the street. Why are they not being adopted? There is a process to get adopted. The child has to be first abandoned, or the parent is not in a position to take care of them. CNCP, child in need of care and protection. और फिर उसको CWC के सामने रखना है. CWC उसको 2 महीने से 4 महीने. क्यों? क्योंकि JJ एक्ट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एक परिवार का राइट या बच्चे का राइट, वो है टू हैव अ बायोलॉजिकल पेरेंट फर्स्ट. एंड व्हाट इज द सेकेंड? To be adopted. Third is foster care. Fourth is जो बाहर से हम सपोर्ट करते हैं, sponsorship. And fifth is keeping them in CCI, child care institution. This should be the priority area. Why adoption second after the biological? Just because if a child is adopted, then all the rights which a normal biological child would have, the adopted child would have. जो foster care में नहीं होता है, आपका sponsorship में नहीं होता है. 18 साल बाद रिश्ता टूट जाता है, यहां टूटता नहीं है. तो एडॉप्शन में, अब एडॉप्शन में ये आया कि भाई अब क्यों नहीं 250 बच्चे क्यों हैं? क्योंकि हॉस्पिटल से बच्चे गायब हो जाते हैं. गायब चोरी से नहीं होते हैं. कितनी बार आप जाएंगे तो पता लगेगा कि कोई अनवेड मदर, बहुत केसेस हैं, एंड दिस हैज कम फ्रॉम द डॉक्टर्स, आई एम टेलिंग यू. मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं, ना कोई मैं थ्योरी दे रहा हूं. ये डॉक्टर्स का ही फीडबैक रहा है कि क्या होता है कि जैसे कि IVF पेरेंट है, वो आए, उनको चाहिए बच्चा, नहीं हो पा रहा है, फर्टिलिटी रेट, इनफर्टिलिटी रेट हैज इंक्रीज्ड इन कंट्री, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. और एक है पेरेंट जिसको कि बच्चा गोद लेना है, उनको लगता है कारा में 4 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, वट एवर टाइम. एंड द सेकेंड थिंग इज एडॉप्शन स्टिल इज अ स्टिग्मा. कोई भी माँ बाप आज भी दिन भी बोलना नहीं चाहता है, ना बच्चे से ना समाज से, कि मेरे पास में एडॉप्टेड चाइल्ड है. वो आज भी स्टिग्मा है हमारा. तो वो जाते हैं और डॉक्टर के पास कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, IVF के पास सब खत्म हो गया, सब फेल होगा. और इधर अनवेड मदर या कोई मदर है वो जो बच्चे के लिए वो नहीं चाहती है रखने के लिए, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कोई चिंता मत करो, वी हैव अ पेरेंट who wants the child, and there is a mother who had to deliver, not like to, who has to deliver because she has crossed that time जब abortion नहीं हो सकता. तो रजिस्टर कर देते हैं हॉस्पिटल में इस मदर को, IVF मदर को, एज अ बायोलॉजिकल मदर, एंड द मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न, द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू देम. एंड नाउ यू विल सी पीपल सेइंग कि इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है कि भाई एक अच्छा पेरेंट हमने हैंड ओवर कर दिया. समझा रहे हैं आपको एडॉप्शन ट्रैफिकिंग कैसे होता है. ये गलती आप लोग मत करिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन फ्यू थिंग्स वेयर यू शुड बी एम्बेसडर. टेल पीपल यू whom you come in touch with कि ये मत करिएगा. उसमें गलती ये होती है कि जब एडॉप्शन करते हैं हम कारा के थ्रू में, तो देयर इज अ होम स्टडी रिपोर्ट ऑफ द पेरेंट हु इज गोइंग टू अडॉप्ट. अब यहां पे डॉक्टर होम स्टडी रिपोर्ट तो कर नहीं रहे. और एक सिंपल केस है 2013 का कटनी में. कटनी मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पे ऐसे ही एक बच्चे को गोद लिया गया था. हॉस्पिटल से लेके जा रहे थे, पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और वो बच्चे को उन्होंने रेस्क्यू किया. जब पता लगा कि कौन है, जो अच्छा खासा डॉक्टर को लगा कि हम पैसा ले रहे हैं मगर अच्छा पेरेंट है, ये सोच के उन्होंने हैंड ओवर किया होगा, मान के चल रहे हैं, बट देयर वाज एक्सचेंज ऑफ मनी. एंड दैट पेरेंट टर्न्ड आउट टू बी फ्रॉम बाछड़ा कम्युनिटी. एंड 2012 में ही 82 बच्चे, 82 किड्स वे रेस्क्यूड फ्रॉम बाछड़ा कम्युनिटी इन मंदसौर एंड रतलाम. एंड वहां पे इंजेक्शंस भी दिया जा रहा था सो दैट द बॉडी कैन ग्रो फास्ट, so that they can be put into prostitution. They are into intergenerational prostitution. That's the community that I was talking about, CBSE. So the doctor is least bothered where the child is going. He is saying that मैं adopt करा रहा हूं एक बच्चे को, माँ जो नहीं कराना चाहती है वो भी खुश और वो भी खुश. But it doesn't happen that way. Where the child is going you don't know. So follow the procedure. Another case. If suppose a child is adopted, मैंने एक बच्चे को adopt कर लिया, and in case वो बच्चा 15 साल 16 साल का हो गया, मैंने प्रोसेस नहीं फॉलो किया है, एंड समथिंग हैपन्स टू मी, व्हाट इज द राइट ऑफ द चाइल्ड देयर? उसका क्या हक है मेरे सब चीज पे, प्रॉपर्टी पे, किसी पे? और मेरा कोई रिश्तेदार है, अकेला इकलौता भी बच्चा हो वो, तो अगर रिश्तेदार बोले कि नहीं ये तो परिवार का है ही नहीं, सो क्या एस्टैब्लिश करेगा पुलिस वाला, या क्या एस्टैब्लिश मेडिकल करेगी फ्रैटर्निटी? दैट इज ओनली DNA. और DNA में अगर नहीं मैच हुआ तो क्या हुआ उस बच्चे का और इस पेरेंट का रिश्ता?
Nothing. So the child is on road. So you're compromising just because of your lust to have a kid by compromising on their rights. So never ever this adoption should be done out of it. और उसी के चलते आपके जो 250 या 200 बच्चे आपके एक टाइम पे कारा के उस पे जो 0 to 2 घूम रहे होते हैं सिर्फ इसीलिए. We are unable to stop that market because everybody is looking for shortcuts and convenience. Entertainment, circles, ये सारी बात हो गई. Next please. सिंपल थोड़ा सा मैं टच करूंगा कि ये क्यों हम बोलते हैं प्रॉब्लम है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हम बोलते हैं जबकि ये एक्चुअल प्रॉब्लम सोशल जस्टिस सिस्टम का है. नेक्स्ट प्लीज. 3 P की बात की थी मैम ने, सर ने भी बात की उसके बारे में. प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन. प्रिवेंशन, प्रोसिक्यूशन, प्रोटेक्शन, 3 चीज की हम बात करते हैं. और चौथा पार्टिसिपेशन है. जो वे फॉरवर्ड हम बोल रहे हैं तो वे फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन में ही है. इफ नॉट एवरीबडी पार्टिसिपेट्स यू आर नॉट फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग. हम पुलिस को गाली दें, हम समाज को गाली दें, हम किसी को गाली दें, कुछ नहीं होने वाला अगर हर स्टेक होल्डर अपना रोल प्ले नहीं करता है तो. बिकॉज एज वी सेड इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. जैसे कि मैम बोल रही थी एक कदम वो हमसे आगे रहते हैं ट्रैफिकर्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट प्लीज. अब जैसे रोल ऑफ सीएस में प्रिवेंशन में कितना है, प्रिवेंशन में एक्चुअली देखें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रोल बहुत कम है. प्रिवेंशन में ज्यादा रोल सोशल जस्टिस सिस्टम का है. प्रोसिक्यूशन में भी बराबर है, जबकि हमको लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा है प्रोसिक्यूशन में. आपने ही मैडम ने एक बड़ा अच्छा सर ने एक मैडम का नाम लिया था स्वाति चौहान का, जज हैं इटपा की कोर्ट में है. तो उनसे मेरी जब बात हो रही थी तो तब उन्होंने ये बताया था कि बहुत ज्यादा विक्टिम्स जिसको हम वापस रीइंटीग्रेट कराते हैं, रिहैबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन की बात बार बार करते हैं हम लोग, तो जब कराते हैं तो बोले कि 4 महीने बाद देखो तो वही महिला दोबारा आ जाती है रेस्क्यू होके. तो हमने पूछा था क्यों. एक बोले कि जब हमको रेस्क्यू किया जाता है, रेस्क्यू करके जो प्रोसिक्यूशन में हमको क्या कहते हैं इसमें प्रोसिक्यूशन के पहले जो प्रोटेक्शन होम्स में डाला जाता है, बोले वो तो हमारे ब्रॉथल से भी खराब होता है. सो फील मोर कंफर्टेबल स्टेइंग विद दोज गैस बिकॉज यहां पे तो आने के बाद में इतना स्टिग्मा है, हमारे साथ तो ऐसे दुर्व्यवहार होता है कि हम कहीं रहना ही नहीं चाहते. एंड इवन व्हेन दे आर रीइंटीग्रेटेड, रीइंटीग्रेशन के बाद में आप हम ही अपने आप ही गिरबान के नीचे झांके और ये बोलें कि हमारे पास में अगर रेस्क्यूड सेक्स वर्कर आके रहना शुरू कर दे तो क्या आप अपने बच्चों को उनसे इंटरेक्ट करने देंगे? पुरुष अपने महिलाओं को इंटरेक्ट करने देंगे या महिलाएं अपने पुरुष को इंटरेक्ट करने देंगे उनसे? ये लेवल है स्टिग्मा का. और हम उसी समाज में जाके वापस रख देते हैं जिसने उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ाई थी. अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग, सेम स्टेटमेंट. Trafficking is nothing but exploitation of vulnerability. Very simple, one line. So are we addressing the causes, factors of vulnerability? And causes of vulnerability are many. Sir has given it in a point wise. I would say that it could be social, it could be cultural, it could be political, it could be environmental. It could be any. Caste factor could be from that place. M.N. Srinivas का dominant caste. पढ़ लीजिए आप. कितना होता है जो अलग caste हो? There are many theories on that. So it could be any. So are we addressing that प्रॉब्लम वल्नरेबिलिटी का, जो उसको हम रिइंटीग्रेट वापस जाके समाज में वहीं पटक देते हैं और सोचते हैं कि हो गया ठीक? नो. सो वो सब रोल किसका है? सोशल जस्टिस सिस्टम का है. अगर वो प्रोटेक्शन नहीं प्रॉपर मिलेगा तो प्रोसिक्यूशन में वो सपोर्ट नहीं करेंगे हमको, वो हरदम उनके फेवर में ही बोलेंगे. इसीलिए प्रोसिक्यूशन में वी नीड देयर सपोर्ट. प्रोसिक्यूशन डजंट हैपन ऑन इट्स ओन. वैसे भी भारत में तो पुलिस जो लिखता है उस पर तो कोई उसका औचित्य ही नहीं है. हम स्टेटमेंट ले रहे हैं तो स्टेटमेंट में कोर्ट में कितना है? इट हैज टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड वी हैव टू प्रूव व्हाट वी हैव रिटन इज ट्रू. एंड हु विल प्रूव दैट इफ द विक्टिम इटसेल्फ इज सेइंग दैट कि भाई नहीं है? एंड हाउ डू वी गिव दैट? एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है, एक ट्रस्ट डेवलप करना होता है. जो ट्रस्ट डेफिसिट है, हाउ डू वी एड्रेस दैट? एंड देयर द रोल ऑफ द प्रोटेक्शन mechanism is very important. Then only prosecution will be possible. We have to understand the role of social justice system. यही बता रहा हूं मैं आपको. और प्रोटेक्शन नेचुरली जब भी मैंने बताया. नेक्स्ट अब इसको प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन 2 तरीके का होता है, प्रोएक्टिव प्रिवेंशन एंड रिएक्टिव प्रिवेंशन. सो व्हाट इज प्रोएक्टिव प्रिवेंशन? दैट इज व्हाट मैम वाज टॉकिंग अबाउट इन आवर एड्रेस. Proactive prevention means at the source point ensure that a person is not victimized. And how do you do that? Try to address the vulnerability. What sir has done, कॉलेज लेवल पे हम क्लब्स बना रहे हैं, पंचायत पर हम बना रहे हैं. दिस इज प्रोएक्टिव प्रिवेंशन.
We're not addressing the demand. There is a big debate going on demand and supply. The point of origin में हम कैसे उसको कम करें, कैसे खत्म करें कि वो vulnerability रहेगी, but vulnerability exploit ना हो पाए, ये ensure करें. यही चीज फर्क है कि मैं गरीब और मेरा पड़ोसी गरीब, दोनों का खाने का सो दोनों एक ही जगह पे हम बैठे हुए हैं, उसके बाद भी वो ट्रैफिक नहीं हो रहा, मैं ट्रैफिक हो रहा हूं. Why? It is because मैं vulnerability को protect नहीं कर पा रहा and get exploited. So through proactive prevention, we have to ensure that कि vulnerability का exploitation को हम कैसे plug करते हैं. How can we stop that? वो at the source point है, and cutting demand at the destination. Reactive जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जब रेस्क्यू हम कर लेते हैं तो रेस्क्यू के बाद में वापस अगर हम उसको वहीं पे डालें, जो केस मैंने अभी स्वाति चौहान जी का बताया था कि अगर रीइंटीग्रेट करें तो वापस वो ना जाए, तो रिएक्टिव प्रिवेंशन, दैट इज इन रिएक्शन आफ्टर द रेस्क्यू व्हेन दे वी ब्रिंग देम एंड पुट देम देयर, देन वी एंश्योर दैट दे आर नॉट रिविक्टिमाइज्ड. That is what we have to do. So prevention has got two parts, and the proactive prevention may be or reactive prevention में social justice system का ही role है. And when I say social justice system, it is the government agencies, government institutions into development and everything. You, me, everyone. Everyone is part of social justice system. You have to create. ये जो mindset की जिसके मैंने बात की कि पड़ोसी में आ जाए नहीं रखना, उन चीजों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा. We have to support them. They have already been victimized. And why prevention is important? Prevention is important because once a victim is trafficked, you cannot even believe the trauma that they go through. Psychological trauma जो उनका होता है, ये physical abuse हम देखते हैं. हम लोग पुलिस वाले तो देखते हैं कि वहाँ MLC करा के कि भाई कितनी चोट है. चोट नहीं देखना है. यहाँ पे चोट की बात नहीं होती है ट्रैफिकिंग में. ट्रैफिकिंग विक्टिम का जो सबसे ज़्यादा जो आघात है, वो मानसिक है. Which cannot be measured. Immediate तो हो ही नहीं सकता. So that is why prevention is better than cure. That is, it applies here as well fully. Next, please. Same rescue rehabilitation की जो मैं बात कर रहा था. Next, please. Participation के simple बताते हुए कि सबका role है, सबकी सहभागीदारी, उसके बिना नहीं हो सकता है. Everyone has to grow. So as we say that when you move out of this place, आज के बाद इस ये awareness वाला program को action में convert करिए, you contribute. हर व्यक्ति अपना रोल प्ले करना शुरू कर दीजिए, देन आई थिंक लाइक देयर इज अ सॉल्यूशन टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग. वी कैन कॉम्बैट दैट. नेक्स्ट प्लीज. क्यों नहीं होता है? कंसेप्चुअल लिटरेसी, जैसे समझ कम है. एंटागोनिस्टिक माइंडसेट, सिंपल पुलिस वालों के लिए एक अगर शब्द में बोला जाए कि अगर लड़का भाग जाता है, ये ट्रैफिकिंग के उस स्टडी में आया था सर, जब भी मैं इंटरव्यू करता था, लड़के भागने पे आप क्या सोचते तो कहते थे घर से लड़ाई करके भाग गया. दैट्स व्हाई वी नॉर्मली डोंट रजिस्टर अ केस. दैट्स व्हाई परहैप्स 75-12 had to come to register a case within 24 hours. I mean immediately in fact. So and 48 hours का golden period भी हम बात कर चुके हैं, जिसमें कि अगर नहीं victim को अगर आप approach बचाने की कोशिश करेंगे, a trafficker will approach them. Antagonistic mindset, we have to come out. As for girls, it is always said that they have eloped. किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, चाहे उसका traffic हो गया. So that mindset we have to come out of it. Official complicity, there is a lot. We have to work on that, and confusing laws because there are so many laws. That is why perhaps the bill was there, which had to be tabled. Next, please. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर. आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमें डायमेंशंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, चाहे वो AMP मॉडल हो, चाहे वो रोल ऑफ सोशल जस्टिस सिस्टम या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो टू कॉम्बैट द 4 P's ऑफ ट्रैफिकिंग. एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन सच ग्रेट डिटेल एंड विथ सच सिंप्लिसिटी. बट सर एक बात जो आपने बोली वो अभी भी हमारे दिमाग में, एंड इट्स वेरी हार्ड हिटिंग, दैट एक विक्टिम को समझ ही नहीं आता शुरुआत में दैट शी इज़ अ विक्टिम. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, it is very shocking and saddening at the same time, and reminds us that we need to work with greater intensity and momentum to address trafficking. और जो awareness हमें यहाँ मिल रही है, हम इसको action में convert करें. Thank you so much. We'll just have a quick open round discussion for 5 minutes. We'll just take 2 of the questions, please. Ma'am को mic दे दीजिए. Anyhow, thank you for the wonderful presentation. And you have correctly pointed out how the laws are being violated in various ways. And one thing is community-based exploitation, and in the case of bride trafficking, adoption, and in surrogacy, these offenses are being committed either in a particular state, and it is related
to either international offender or in the offender may be in the country itself in other state. So I want to know how what is the machinery in our country to tackle these issues in the case of this bridal trafficking, in the case of surrogacy. If the offense is committed and the culprit is gone out of the country, what is the remedial measures that we can? I am the chairperson of Kerala Women's Commission. Lot of complaints are coming, but in these cases sometimes we are helpless. Because if the crime is conducted there and the application is before us, we are not able to tackle the issue since there is no coordination between the states and how this can be solved. You have correctly pointed out about the prevention, protection and protection. So how these laws can be useful and how we can use this system as a protective measures. Thank you, ma'am. This is, I think, a very relevant and very important question that you asked. So certainly for cases which have been committed and if the offender has moved out of the country, then the central agencies have to play their role. They have to come into that. So there is a process laid down. And that has to be followed. It doesn't matter what sort of crime it is. I mean, if it is under IPC or if it is a human trafficking case, there is the procedure and protocol laid down for investigation and in fact how to get extradition of the offenders. So that has to be followed. That's the only way. And as for coordination is concerned, I think more if we interact. As sir was pointing out, I love that term. What is called is the island of excellence, island of excellence. We work in silo and we try to boast about our work. That doesn't work in human trafficking. You can't boast about your work sitting in silo and say that, okay, I've rescued these many people. But what? Even after rehabilitation, what? Did we do that? There is a whole cycle. As the cycle of trafficking is a full cycle, complete cycle, exactly taking care of these cases should be in a full cycle. Thank you. Ma'am, we'll just have one more question. 1 minute. Okay. Sir, नमस्कार, मैं chairperson ओडिशा. एक्चुअली आपका प्रेजेंटेशन बहुत नाइस था. नायरा सर जो प्रेजेंटेशन दिया था वो ओडिशा के बारे में बताया थे. सुंदरगढ़ कटक भुवनेश्वर में स्किल डेवलपमेंट में बारे में काम चल रहा है वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए. लेकिन इस प्रेजेंटेशन में एक वर्ड जोड़ना चाहती हूँ कि लव मैटर. एक्चुअली लव मैटर में फंसा कर लड़कियों ले जाते हैं, एक दो साल के बाद वो ट्रैफिकिंग में लगा देते हैं. इसमें लव मैटर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. थैंक यू. लव मैटर, लव अफेयर्स में वो चल जाता है. Thank you so much. So you want to speak? Thank you so much. लव मैटर आपका जो ब्राइट ट्रैफिकिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो उसमें आ जाता है. वो लव जो है एक फ्रॉड के रूप में यूज करके आ जाता है. सर ऐसे ही करते हैं क्या? एक लड़का 1 2 3 लड़की के साथ लव अफेयर में आ जाता है, इसके बाद आउट ऑफ स्टेशन को ले जाता है, इसके बाद उसको छोड़ के आ जाता है लिविंग रिलेशन के बाद. Thank you so much. We had quite an informative and fruitful discussion in the first half. So let's rejuvenate ourselves with some lunch. Sir, next session में करेंगे. We'll just take one more question, ma'am. One more, last. Okay. सर, मेरा नाम संगीता अग्रवाल है. मैं दिल्ली दूरदर्शन से हूँ. आप सबका ध्यान एक बात की तरफ ले जाना चाहूँगी. सिर्फ दूरदर्शन पर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से लापता के बारे में गुमशुदा हमारे यहाँ खबर चलती है, जिसमें आप जानकारी दे सकते हैं. आप किसी भी सेशन में जाएं तो हमेशा जन भागीदारी की बात होती है. तो क्या आपने कभी सरकार के सामने ये बात रखी है कि आप दूरदर्शन के अलावा जो दूसरे चैनल हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो भी गुमशुदा के ऊपर खबरें चलाएं या फिर इस तरीके के ऐड को चलाएं जिससे जन जागरूकता आ सके? I request everybody to be please seated. We're just taking one last question and then we'll have the lunch. Please kindly be seated. जितना मैं सुन पाया आपका सवाल यही है कि दूसरे चैनल्स यूज होता है कि नहीं होता है दूरदर्शन के अलावा. मतलब That's what I'm saying. That's a suggestion. जो आपका गुमशुदा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लापता लोग हैं, उनकी खबर
भी चलाएं। Good suggestion. Thank you so much, ma'am. Let's break for lunch now, and we'll assemble here at 2:15 p.m. Thank you so much. I'd request everybody to kindly maintain decorum. And the lunch is there at the first floor. आज विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार कर रहा है। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान से लेकर तकनीक, नवाचार और युद्ध के मैदान तक दिखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर कैरियर और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की समान सहभागिता हो, हर जगह पे महिलाओं में सुरक्षा का एहसास हो, सम्मान का भाव हो। इस संकल्प को हमें आजादी के 75 साल का संकल्प बनाना है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फोकस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को देश का अभियान बनाकर लाखों बेटियों का भविष्य संवारा। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय बनने से महिलाओं को मिली सुरक्षा और सम्मान। उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को मिला मुफ्त गैस कनेक्शन और 3 तलाक को गैर कानूनी बनाकर मुस्लिम बहनों को दिलाया उनका अधिकार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं के कौशल और उद्यम को मिले अवसर। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी हो या मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 हफ्ते करना हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो या सुकन्या समृद्धि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिला स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना हो या सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोलना, आज बदलते हुए भारत में देश की बहनों बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को मिशन बनाकर आगे बढ़ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। पिछले 3 दशकों से महिलाओं के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करता आ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान NCW ने गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 24/7 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया। देश भर से महिलाओं ने मदद के लिए संपर्क किया और NCW की टीम ने हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई। NCW की 24/7 विमेन हेल्पलाइन पर महिलाएं किसी भी संकट की स्थिति में कॉल कर सकती हैं और उनकी जरूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोविड महामारी के बीच 24 घंटे कार्य करता रहा राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए NCW बड़े स्तर पर कई कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रदेशों के 18 संस्थानों के माध्यम से डेयरी फार्मिंग के उत्कृष्ट व मूल्यवर्धक उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके द्वारा सैकड़ों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस कार्यक्रम में दूध से बनने वाले विभिन्न उत्पादों के बारे में विस्तार में बताया जा रहा है। महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए NCW ने 6 हफ्ते का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत 1859 महिलाओं को IIM बैंगलोर से ट्रेनिंग दिलाई गई और 385 चयनित महिलाओं को इंडिया SME फोरम द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है NCW का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौशल क्षमता विकास व व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के तहत देश भर के 80 से अधिक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के माध्यम से हजारों छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, रोजगार के अवसरों की पहचान, साक्षात्कार, प्रस्तुति, रिज्यूमे बनाने की कला पर मार्गदर्शन दिया गया।
राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए NCW का शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम बेहद मददगार साबित हुआ है। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस जैसे कार्यक्रम महिलाओं को संकट की घड़ी के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो विभिन्न महिला संबंधित कानूनों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इसके साथ ही NCW और भी कई कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कि घरेलू हिंसा के मामलों में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम और लैंगिक समानता के लिए पुरुषों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम। NCW की ऐसी अनेक कोशिशों से लाखों महिलाओं को मिला है सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार। महिला अधिकारों का प्रहरी बन उनके सशक्तिकरण को समर्पित है राष्ट्रीय महिला आयोग। देश की नारी शक्ति का नया आत्मविश्वास।
I request everybody to kindly be seated here. We are about to start our next session in 5 minutes. I'd request everybody to be please seated fast. We'll begin the next session now.
get seated, everybody. We'll begin shortly for the next session. I'd request everybody to kindly get seated, please. We are starting the next session now, the third session. Everybody get seated, please. I'd request everybody to take their seats. I hope all of us had a good lunch and we are rejuvenated now for the next two sessions. So our third session is on the psychosociological impact of trafficking, and the speaker for this session is Dr. Shekhar Seshadri. Dr. Shekhar is a psychiatrist with over 35 years of experience in the field of child mental health. As a former senior professor in the Department of Child and Adolescent Psychiatry, NIMHANS, his work has extended beyond the clinical population to children and child care institutions, service providers across the country, as well as the South Asia region. Some of the special areas of interest of Dr. Shekhar are trauma, gender and sexuality issues, and life skill education. Samvad, a national initiative and integrated resource for child protection, mental health, and psychosocial care, supported by the Ministry of Women and Child Development, was conceptualized and initiated by Dr. Shekhar, of which he is the esteemed advisor to. I'd request Shekhar sir to come on stage. Let's have a huge round of applause for Shekhar sir. सबको मेरा सादर प्रणाम। संक्षिप्त में अपना परिचय मैं दोबारा कर दूं। मैं डॉक्टर हूं। इस हुलिये से ये मत सोचिएगा कि ये डॉक्टर लगता नहीं है, मैं वाकई में डॉक्टर हूं। मेरे एमबीबीएस के सर्टिफिकेट का एक छोटा सा कॉपी मैं अपने बटुए में लेके चलता हूं, किसी को देखना हो तो मुझे खुशी होगी बाद में दिखाने में। निम्हांस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्था जो बेंगलोर में स्थापित है, बहुत पुराना इतिहास है इसका। इट्स 100-year-old हॉस्पिटल। It became an All India Institute, then a National Institute, then a deemed university, and now an institute of national importance under the Ministry of Health. It is the only institute that had an independent department of child and adolescent psychiatry. स्वतंत्र बाल और किशोर मनोरोग विभाग और किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में उपस्थित न था, न है। पब्लिक चाइल्ड मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं या पब्लिक मेंटल हेल्थ की बात करते हैं
तो कम्युनिटी में हमारा काफ़ी सालों से काम चल रहा था और करीब 3 साल पहले 2019 में केंद्रीय सरकार महिला और बाल कल्याण मंत्रालय से हमारे पास एक कम्युनिकेशन आया to basically scale up our work in public child mental health और हमारा प्रस्ताव जो था उस पे फरवरी 2020 पैंडेमिक और लॉकडाउन से चंद हफ्तों पहले ये संवाद जो है ये एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिए। We work in 4 verticals: in child protection, in mental health, in education and in policy and law. संवाद का काम अभी 29 क्षेत्र और 2 यूनियन टेरिटरीज में है। तो जितने भी सीमावर्ती कार्यकर्ता हैं, जितने भी पुलिस अफसर यहाँ शामिल हैं, आप जैसे जो सीमावर्ती कार्यकर्ता हैं इस देश के, जिसको रेखा मैडम इंट्रोड्यूस्ड एज वॉरियर्स, जो फौज है हमारी सेनानी इस जंग में, तस्करी के खिलाफ जो जंग है हमारा। साथियों, मैं आपका ध्यान रेखा मैम के एक विचार पे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये आधार है कुछ चीजें समझने का। और 2 और चीजों को मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक जो डॉक्टर नायर ने किया था और एक वीरेंद्र मिश्र द्वारा जो आई थी। ध्यान दीजिएगा कि रेखा शर्मा मैम ने ये कहा कि फैमिलीज की मानसिकता जो है, जब हम सोर्स की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, कि महिलाओं के प्रति कौम के और सदस्य जो हैं, हाउ डू फैमिली मेंबर्स रिस्पॉन्ड टू वुमेन इन अ फैमिली कॉन्टेक्स्ट, हाउ आर दे ट्रीटेड, हाउ आर दे विक्टिमाइज्ड, एंड शी स्पोक अबाउट द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एज एन एग्जाम्पल। तो हमारी बात यहां शुरू होती है। हाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में एक सेंटर फॉर चाइल्ड शुरू हुआ है, डॉक्टर इलियास जो पुलिस अफसर हैं उनके नेतृत्व में। वहां हमने सोशल पुलिसिंग की बात की। वीरेंद्र मिश्र जी के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड सोशल जस्टिस सिस्टम्स। तो जब सोशल पुलिसिंग की बात होती है, और रेखा मैम ने डोमेस्टिक वायलेंस का जब जिक्र किया, आम तौर पे सभ्य समाज में, इन सिविल सोसाइटी, द रिस्पॉन्स टू डोमेस्टिक वायलेंस is that it is your personal problem. भैया आपके घर में हो रहा है, हम इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। Friends, domestic violence is not a personal and private problem. It is a public health problem. It is your problem, it is my problem, it is everybody else's problem. And that's why we had the Bell Bajao campaign. कि अगर आपको मालूम है कि बाजू वाले घर में तकलीफें हैं, समस्या है, बेल बजाओ। ये संभव है, यू विल बी टोल्ड माइंड योर ओन बिजनेस, गेट लॉस्ट, इट्स पॉसिबल, बट एटलीस्ट यू आर कन्वेइंग द मैसेज दैट समबडी इज नोटिसिंग। एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय सोशल responsibility and social cohesion as a paradigm to address issues, particularly as we emerge from the pandemic. दूसरा ध्यान मैं आपको डॉक्टर नायर ने जो बातें कही उस पर ले जाना चाहता हूं, और ये आधार बनेगा जो विचार मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। All the ideas that I want to present to you about good practice models that he referred to, and entreated all of us to work jointly to build on the 2007 report, to build on a national TIP report with new data and new approaches. याद कीजिए नायर साहब ने क्या कहा। नायर साहब said, one of the most important, whether it is the spotter, the recruiter, the seller, the purchaser, the transporter, the abuser, the exploiter, the financer, इस प्रक्रिया में
जो भी पात्र, जो भी शख्स, व्यक्ति शामिल हो, अल्टीमेटली जो आपको करना है, एक एनजीओ होने के नाते, सीएसओ होने के नाते, पुलिस ऑफिसर होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, वकील होने के नाते, the centrality of that is how to communicate. How do you communicate to a child? How do you communicate to a person in trauma? वीरेंद्र मिश्र साहब ने एक और बात पे फिर हमारा ध्यान वो लेके गए और उन्होंने ये कहा कि बाकी जो भी होता है कि तेलंगाना में अपहरण हुआ या फैमिली मेंबर्स ने बेचा, कर्नाटक के थ्रू ये गोवा या कमाठीपुरा मुंबई में पहुंची, शी रीच्ड what is proverbially called as a red light or a sex work area. And all the manipulation, the lying, the deceit, the threat, the injuries, the starving, and all that was caused, and then the breaking in process through sexual assault to basically weaken the person's resolve and morale. And you may rescue the child, the 14-year-old, the 18-year-old, the 24-year-old. 6 months after she's trafficked, 1 year after she's trafficked, there are injuries, she's HIV positive, she has STD, whatever. But remember what Mishra ji said, psychological trauma. मानसिकता पे क्या असर होता है? Because no health without mental health. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कहता है. And if we do not recognize the mental health dimensions of trafficking, we are really missing something here. May I have the next slide, please? तो अगर आप डायनामिक्स देखें, और मेरा आर्ग्यूमेंट आपसे ये है, देखिए लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, फोर्स माइग्रेशन की बात करी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं और जो डिमांड, ये डिमांड सप्लाई वाली जो बात है, which is the external forces, तो हमें मालूम है कि there are push and pull factors in trafficking of children, particularly towards sex work, and trafficking of women towards sex work. और जब भी मैं चाइल्ड शब्द का उपयोग करूंगा, आगे जाते जाते स्लाइड्स में चाइल्ड शब्द जो है वो ब्रैकेट्स में है, वो इसलिए क्योंकि मैं बाल और किशोर मनोरोग क्षेत्र से आता हूं, बट आई पुट चाइल्ड इन ब्रैकेट बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट women. Because when we speak about women's issues, we forget that the girls of today are the women of tomorrow. Next, please. So, the elements of trafficking have been spoken about, the act, the means. तो ये वीरेंद्र मिश्र साहब ने already इसका जिक्र किया है. Next, please. But if you look at the trafficking process, procurement with or without the complicity of the family. अब इसमें मानसिकता की बात देखिए. धोखा ये है कि मेरे माता पिता ने मुझे बेचा मेरी मंजूरी के बगैर. I was sold by my family without my consent. And what does that mean to a 14-year-old or an 18-year-old? And then there's the dislocation and transport. And what kind of dislocation are we talking about? साथियों, यहां से आप में कई लोग ऐसे शामिल होंगे जो ट्रांसफर से कतराते होंगे कि भैया मुझे ट्रांसफर मत करो, मुझे दिल्ली में रहना है. कई ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि मुझे अपने इलाके में एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करने में तकलीफ होती है. I wouldn't even shift in the same gated community I live from one flat to a flat right in front. Now, what does this kind of dislocation and transport mean? And then induction into sex work. तो हम जब विकास की बात करते हैं, 14 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 21 साल की महिला, उनका विकास जो है और उनका अस्तित्व जो है, their identity and personhood, what does it do to the identity and person of the child and the developmental processes and needs of the child? The need of a 14-year-old child is not to be sold by her family into sex work. That is not the need of the child. And this places the child at risk
for psychological morbidity, मानसिक पीड़ा जो उसको होती है, एक तो ये बात है, जोड़िए उसमें कामुकता और लैंगिकता, तो फिर उसके अस्तित्व क्या होता है? What does an average 14-year-old girl know or conceive as the idea of sexuality, of the agency of the personal body, and the embodiment of the selfhood in a consensual, loving context of relationships? Not this kind of exposure to what is essentially a sexual experience. Next, please. So if you look at a working structure, मदद के लिए, सहाय के लिए, सहारे के लिए अगर हम एक ढांचा खोजते हैं, तो हम कैसे समझें कि किसी बच्चे पे जब शोषण और अत्याचार होता है, उस शोषण को, उस धोखे को, उस मानसिक पीड़ा को हम किस तरीके से समझें, और उस समझ में एक सर्विस प्रोवाइडर, एक ड्यूटी बेरर होने के नाते मेरा पात्र क्या है? What is my role as a service provider and caregiver for that understanding in order to conduct interventions in the cultural setting of each country? Now, unfortunately, the notion of honor, ये इज्जत की जो बात होती है, the idea that honor resides in one part of the female anatomy, namely the vagina, or more specifically the hymen, is clearly a construction of patriarchy. There is no scientific, historical, or any ideological basis to this knowledge. ये पुरुष प्रधान और पितृ समाज जो है, ये इसका ढकोसला है, basically. And which is why when countries go to war, the ultimate sign of subjugation is you kill the men, you burn the village, and you rape the women. Bhavri Devi, जो राजस्थान में साथन थी, who opposed child marriage and she was gang raped, though it was a sexual assault, it was the use of sexuality for a power and domination issue. So one must understand that if we have to conduct interventions, keeping these cultural norms in mind and argue it with a child who is in this predicament, ये विडंबना जो है मन में, कामुकता और लैंगिकता और व्यक्तित्व को लेके, इसको हम वाद विवाद के जरिए जो गलतफहमियां हैं उसके मन में, the misconceptions and misinterpretations, is part of the healing process. And which is why this kind of training is essential, as we point out here. तो इसके लिए हमारे पास human resources कहाँ हैं? तो हमारे child welfare police officers हैं, या special juvenile police units जो हैं, one stop centers जो हैं, जहाँ पुलिस फौज इतने तादाद में आज यहाँ मौजूद हैं. आप में से कई लोग इस तरह के संदर्भ में काम करेंगे. तो how do we develop standards and guidelines for the operation and care of these facilities? तो संवाद राष्ट्रीय पहल के जरिए मंत्री महोदया का हमारे तरफ संकेत और आदेश ये था कि we must have standard guidelines and standard operating procedures across the country. No compromising on the quality of training. And next, please. अब प्रभाव पे एक नजर डालिए आप. सेक्स वर्क का इम्पैक्ट जो है, द ट्रॉमा ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स वर्क, जैसे नायर साहब ने कहा, मिनिस्टर ने भी कहा, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी और रेखा मैम ने भी अलग अलग संदर्भ दिया लेबर के लिए, सरोगेसी के लिए, एडॉप्शन के तौर पे. लेकिन सेक्स वर्क के लिए जब कोई ट्रैफिक होता है, इट गोज बियॉन्ड द कन्वेंशनल मॉडल्स ऑफ ट्रॉमा. तो हम लोग जब साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क से जब हम पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात करते हैं, हीलिंग इंटरवेंशंस मस्ट एड्रेस अ कॉम्प्लेक्स सेंस ऑफ इम्पैक्ट. ये केवल काउंसलिंग वाली बात नहीं है कि रेस्क्यू हो गई हो ना, अब तो सेफ हो ना, अब क्यों गुमसुम हो, अब क्यों हरकत कर रही हो, जैसे कि उसको आभारी होना चाहिए कि अब उस पर क्या बीती है. सो
This is necessary for caregivers to provide a comprehensive set of responses for the healing process. व्यक्तित्व के बारे में भी और कामुकता के बारे में भी, and the regaining of a sense of personal agency and mastery, कि मेरे जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार और हक मुझ पे है, मैं मजबूर नहीं हूं और किसी और का अधिकार नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई अड़चन लाए. नेक्स्ट प्लीज. तो इसका आधार जो है, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑन पर्सनहुड, अगर आप देखें कि डिसलोकेशन होता है, निर्लक्षण होता है, और ममता और वात्सल्य और भरोसा जब टूट जाता है, जो नॉर्मली ये हम सोचते हैं कि ये फैमिली की जिम्मेदारी है, और जब हम प्लेसमेंट ऑर्डर्स की बात करते हैं, और यही बात बार बार दोहराई गई है जब सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स करते हैं होम प्लेसमेंट की, प्लीज पे अटेंशन टू द पॉइंट दैट एवरीवन हैज मेड सो फार अबाउट री-ट्रैफिकिंग. अगेन, यहां मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी कठोर सत्य यह भी है कि आप सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को कभी देखें, अगर बच्चे का नाम हटा दें सब रिपोर्ट सेम है. कैसे संभव है? ऑल ऑफ अस कम, हम लोग सब अनोखे ब्रह्मांड से आते हैं. ईच ऑफ अस कम्स फ्रॉम अ यूनिक यूनिवर्स. हम सब की यूनिक कहानियां हैं. तो बच्ची ट्रैफिक हुई किसी काम के लिए, शायद वो किसी घर में डोमेस्टिक काम था, जो भी है, रेस्क्यू हुई, 6 महीने यहां थी, स्कूल जा रही थी, अच्छा पढ़ रही थी, खुश थी, फिर CWC के पास गई, उन्होंने कहा कि फैमिली तो है इनका, SIR दिखाओ, ठीक ठाक तो लगता है, वापस भेजो. लड़की हाथ जोड़ के कह रही है कि मुझे वापस मत भेजो, दे विल री-ट्रैफिक. नहीं जी, आपको तो जाना पड़ेगा क्योंकि फैमिली इज द बेस्ट प्लेस. She's sent back home and she's re-trafficked. एक और कठोर सत्य ये है साथियों, ट्रैफिकिंग के संदर्भ में, फैमिली इज ऑफन नॉट द बेस्ट प्लेस. प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ये धारणा जो होती है ना, unless you do a robust social investigation report, it is unjust and cruel to send a person back to the same circumstances from which she came when the trafficking was done. Next, please. अब ट्रैफिकिंग सिचुएशन में भी रिश्ते में उसको जो भरोसा होता है, शक और अनुमान जो होता है, और जो भी जीवन की सरल प्रक्रियाएं होती हैं, द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, कोहिरेंस, ये सब टूट जाता है. हाउ डू यू प्रोवाइड दिस through a secure environment in the counseling process, चाहे वो CCI में हो या महिलाओं के संस्था में हो या transit shelters में हो, wherever the rescued person may be. What are the kind of interventions that you do to bring the sense of continuity and coherence in a child and a woman's life? Next. So this is what you need to keep in mind. You look at the experiences that counter the impact of the trafficking, sexualizing, abuse process. तस्करी, लैंगिकता, कामुकता पे प्रभाव और शोषण, अत्याचार की प्रक्रिया जो है, एब्यूज सिचुएशन जो है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल. पूर्वानुमान, भविष्यवाणी करना मुश्किल है. इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, कोई दिनचर्या नहीं है. आज यहां, कल को चलो चलो जल्दी चलो, पुलिस आ रही है. यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग. देयर इज पोटेंशियल फॉर वायलेंस. धमकी दी जाती है, मारा जाता है, सिगरेट से जलाया जाता है. Then there is no opportunity for reflection. उनकी विकास की जरूरतें पूरी नहीं होती. There is no organized recreation, discussion, validation. उनके विकास के पे कोई ध्यान नहीं देता. उनसे कोई बातचीत नहीं, उनकी अनुमति, उनकी राय, वो उनकी सोच क्या है, उनकी आशाएं क्या हैं, उनके सपने क्या हैं. न उनके पास कोई कंट्रोल है, न उनके मोबिलिटी पे कोई स्कोप है. तो फिर हीलिंग कहां से होगा? तो जो भी हमें साइकोसोशल तरीके से करना है, इट हैज टू काउंटर ऑल दिस. सो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस इज नॉट अबाउट सिटिंग अ रेस्क्यूड पर्सन डाउन टू से आ बैठ, तेरा काउंसलिंग करना है. क्योंकि इस बात को हम समझ लें, आदेश, उपदेश, सलाह और समालोचन में फर्क है. Order
instruction, advice, counseling, and therapy are not the same. And we've had many children in institutions who've been trafficked, who are agitated, angry, and you know, and people say, देख संभल जा नहीं तो तेरा काउंसलिंग करा देंगे. नहीं 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 मुझे काउंसलिंग नहीं चाहिए. You know, जैसे कि काउंसलिंग कोई हवा है. काउंसलिंग करा देंगे तेरा. You know, is it a threat that you're using counseling as a threat? ये धमकी है क्या? So counseling has an ecological construct. और मैं जब इकोलॉजी की बात करता हूं, मैं ज्योग्राफिया की बात करता हूं, अबाउट स्पेसेस. मुझे पता नहीं आप लोगों ने यहाँ से जो भी लोग हैं, कितने लोगों ने सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करवाया होगा. वो गैंट्री के अंदर जाना होता है. 10% लोग कहते हैं मैं बीमारी से मर जाऊंगा, उसके अंदर नहीं जाऊंगा. इट्स कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया. हाउ इंपॉर्टेंट स्पेसेस आर. किसी राज्य में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सोशल सर्विस कॉम्प्लेक्स है, स्टेट रन, विमेन्स होम, बॉयज होम, गर्ल्स होम, शिशु विहार, and home for the intellectually disabled children. The 0 to 6 home and the intellectually disabled home are the worst run. Tell me why? They don't have a voice. कम से कम वो boys home या girls home में वो 14 साल का लड़का जो लेबर के लिए ट्रैफिक हुआ कहेगा कि आज चावल में कंकड़ हुआ. ये संभव है कि संस्था के कर्मचारी उसको बोलेंगे चुप रहे, तेरे को बिरयानी खाना है क्या? ये बात अलग है. लेकिन these people cannot raise their voice. ऐसी एक संस्था फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, एक 15 फुट बटा 20 फुट का स्लोपिंग फ्लोर जिसके एंड में 2 ड्रेन हैं, और ये सेरेब्रल पॉल्जी स्पैसिसिटी वाले बच्चे घुटने के तल रेंग रेंग के वहां मल मूत्र करते हैं और हर आधा घंटा होस पाइप से उसको साफ किया जाता है. इसके बगल में क्या था बताइए? रसोई घर. मैं वेयर इज ह्यूमन डिग्निटी? सर ये 40 साल पहले ये बनी थी. ऐसे आर्किटेक्चर बदलो ना, दीवार लगाओ, यहां किचन का एंट्रेंस कहीं और से दो. देखिए काउंसलिंग इज नॉट अबाउट आ बैठ तेरी काउंसलिंग करता हूं. क्यों गुमसुम? अच्छा हंस रही, चल ठीक है. ये दिस इज नॉट काउंसलिंग. काउंसलिंग इज अबाउट एन इंटरेस्ट. इट्स अबाउट ऑल दिस. इट्स अबाउट रूटीन, इट्स अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी. और तो इसको समझना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, तो इसके लक्षण जो है, द इम्पैक्ट एंड मैनिफेस्टेशंस, दिस, तो एक तो इमोशनल रिस्पॉन्सेस है, उदासी, रोना, गुमसुम होना या गुस्सा, खौफ, एंगर, वीपीनेस, एंड देन देयर इज नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन. अब मेरा क्या होगा, मुझसे कोई, यू नो, हु विल. And many people have asked, ठीक है मैं रेस्क्यू हो गए, अब मुझे रिपैट्रिएट कर रहे हैं, मेरी मम्मी पापा ने वो समझ रहे हैं कि एंड यू नो आई एम हैप्पी टू गो बैक होम. लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले, if they ask me, my neighbors ask me what happened, what should I tell them? So what will your response be? Your response, there are several ways in which you structure your response. One is to say you have no obligation to tell anyone कि मैं यहाँ से ट्रैफिक हुई, फलाने ने ट्रैफिक किया, मैं कर्नाटक के थ्रू गई, यू नो आई हैव हैड सेक्स विद सो मेनी. नोबडी इज आस्किंग यू फॉर ऑल दैट. नोबडी इज ऑल्सो टेलिंग यू कि झूठ बोलना है आपको. हाउ इन काउंसलिंग डू यू प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट टू से माई फैमिली वॉज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, in the hope of income generation, I went to such and such a place. I thought things would be okay. They were not. I didn't like the circumstances. I didn't like the people's behavior there. It was difficult for me to get away. But fortunately, I'm here. Thank you very much for your concern. It's the truth. You don't have to go into details about. This is counseling. So this is how you assess basically कि interpersonal relationships में negative जो इनके मन में जो guilt है या व्यथा जो है, पीड़ा जो है, whatever dilemmas and doubts and questions they have in their mind, इसका परिहार जो है आप किस तरीके से करते हैं? How do you resolve the doubts, questions and all kinds of confusion about the self, about relationships, about sexuality, about the future?
And they have questions, can I have a relationship? Can I love? Will I get married? If I get married to someone, should I tell him that this is what happened to me? One has to be prepared with responses to this. This preparation is what we are talking about as important, and this is exactly what Samvad does with service providers, and this is exactly how we would be privileged to assist the Commission as it rolls out on the way forward, kis tarike se karna hai, to empower first-level responders and other duty bearers and service providers, कि आपके सामने कोई व्यक्ति है, कोई शख्स है, जो इस तरह के अनुभव से गुजरा है, has endured and experienced these kind of processes. What are the kind of responses that reassures them, other than also recognizing severe levels of mental health morbidity, particularly complex post-traumatic stress disorder? Next, please. So the healing process is establishing a relationship. उसमें समय लगता है, because for many people, a known enemy is better than an unknown friend. जब मम्मी पापा खुद मुझे भेज सकते हैं, मैं कैसे भरोसा करूं कि नायर पुलिस अंकल जो हैं वो, I don't know him. So it is a struggle sometimes, not just in trafficking. अस्पताल में भी कोई 14-16 साल, 16-year-old adolescent who is cutting school, who's dragged by his parents to say, come, I'll take you to the psychiatrist, he'll fix you. And he's come there reluctantly. You think he's going to trust me because he looks at me as the same part of the oppressive system that has dragged him there. I have to spend a lot of energy in establishing my legitimacy in context to say, I support you. I respect your parents. But I'm here to listen to your story. I'm not saying you are the problem or you're creating the problem. All I'm saying is there is an issue here. Let us address it together and see what is the best that we can do. So then how do we identify immediate issues and the child's concerns? तो बच्चे की अंतर्ध्वनि जो है, तो काउंसलिंग प्रोसेस में संदर्भ, अनुभव, अंतर्ध्वनि, भावना और व्यवहार. Behind every behavior there is an emotion. Behind every emotion, there is an inner voice. Behind every inner voice, there is an experience. Behind every experience, there is a context. The context, as has been pointed out, as part of the source, poverty, lack of awareness. The experience, having been sold, trafficked, brutalized. The inner voice, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और किसी के साथ भी ऐसा होता है क्या? अब मेरा क्या होगा? इस तरह की अंतर्ध्वनि हो, then the emotions are one of despondency, बेबसी, उदासी, and the behavior is withdrawal or cutting behaviors. Whereas if the emotion is, मेरे मम्मी पापा का दिमाग खराब हो गया था क्या? How could they even do this to me? And what kind of people are there on this earth who do this kind of stuff? The emotion is one of anger, and therefore the behavior is acting out behaviors of fighting, of arguing, of breaking things. So we cannot merely look at a behavior and say, क्यों ऐसी कर रही हो? बचा लिया ना तुमको? Because you don't understand the context. So that's why containment techniques, and this is where techniques of journaling, of relaxation, of experiential creative work become such an important dimension before you go to any kind of memory work to do the internal healing process. Next. अब इस पे ध्यान दीजिए, हम लोग जब ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, ये मेरे कुछ आखिरी विचार हैं ताकि हम समय का सदुपयोग कर पाएं. Can you press the next please? तो पहले तो रेड होता है, चाहे वो कमाठीपुरा हो या सोनारगाची हो, वहाँ रेड होता है. उससे जुड़ी हुई is dramatic. Because suddenly someone will say, hey, police आ गई, and you know, people will run helter-skelter, and kids have been, you remember when the word normalization was used for victimization. Even in non-traffic situations, जब हम grooming की बात करते हैं, you remember what was said? How does a recruiter identify a vulnerable child? How does an abuser identify a vulnerable child? Not even for trafficking.
हर दिन देखता है कि दिस चाइल्ड कम्स होम फ्रॉम स्कूल, इज सिटिंग आउटसाइड, घर में ताला लगा है, मम्मी पापा नहीं है। पूरा मोहल्ला जानता है कि बाप दारू पीता है, घर में झगड़ा होता है, और every 2 months the mother goes away to her natal home. Everybody knows this. Everybody knows that every third day the father is brought at 2 o'clock in the morning drunk with vomit on his clothes. Then he befriends the child. Inducement, treat, gift, sweet, games, dolls, kitna acha lag raha hai, and you know, what good fun, you're my best friend, I like you so much. And then you start introducing stuff of secrecy. हमारी मतलब ये secret दोस्ती है, किसी को मत बताना. Then you alienate the child from the family to say, you know, तेरे माँ बाप सब बकवास हैं, you know. They don't understand you. I'm the only one who understands you. Then you sexualize the relationship. And then you ask the child for silence by 2 methods. One is by threat. किसी को बोलोगे तो खत्म कर दूंगा. Or to say किसी को बताना मत यार, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी. Putting the child in a double dilemma. This is how grooming takes place. So, how when a child is normalized, तो आपने रेड मारा, आपने रेस्क्यू किया, और फिर होता है next, you repatriate. तो CWC का ऑर्डर हुआ, किसी का ऑर्डर हुआ, अगर उनके परिवार वाले की मंजूरी है, और अगर वो मिलें, तो you repatriate to the family. और उसके बाद क्या होता है next? Then you try to reintegrate. उसके बाद क्या होता है? You try to rehabilitate. उसके बाद क्या होता है? फिर यहाँ compensation वगैरह आ जाए. But ये चीजें जो हैं, ये raid, rescue, repatriation, reintegration, rehabilitation, redressal, it misses one critical R next, which is reclamation of personhood and reclamation of affirmative sexuality. तो trafficking की मानसिकता की अगर हम बात करें, आप अंदाजा लगाएं. Let me present 2 aspects to this. That a 14 or 15-year-old is trafficked for sex work. 10 months, raid is done, she's rescued, orders are passed, she's in a childcare institution, by which time she may have seen 400, 500 men with their pants down. Does she have the right to a personhood and the right to an affirmative sexuality? So, as a counseling process, the extent to which you address this in your own minds, कार्यकर्ता होने के नाते ये क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया वाली जो बात होती है, क्रिया जो आपको करना है, प्रक्रिया उससे जुड़ी हुई प्रोसेसेस जो हैं, of 2 forms, what processes has she endured and what processes do you have to get through to understand the psychological, and pratikriya, which is your response. What will you say? तो काउंसलिंग की सूक्ष्मता कुछ ऐसी है कि कोई महिला आपसे अगर कहे कि मेरा शौहर कल रात को दारू पी के घर आया था, बड़े मतलब गुस्से के मूड में था, टेलीविजन सेट तोड़ दिया, मुझे बहुत मारा, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, अगर आप मदद करना चाहते तो आप क्या कहेंगे? You know, we do this as a counseling training exercise. My husband came home last night. He was very drunk. He broke the television set and he hit me. If you wanted to be helpful, what would you say? And we do this as a written exercise with trainee counselors, and they say, I will try to be reassuring. And my response is, I'm not asking you what your intention is. मैं सांत्वना देने की कोशिश करूंगा. मैं बोलता हूं मैं आपका इरादा नहीं पूछ रहा हूं. I'm not asking you what your intention is. Your intention to be reassuring is important and significant. What will you say? And it's so interesting because in the written response people write, did you do anything to provoke him? Arre, how is that helpful? No, you must not tolerate it. You should go to your mother's place. As opposed to saying that must have been difficult. How did it end? How are you feeling now? You know, which is a much more, the depth of reflection in how you respond to the microcosms and the interstitials, जो बारीकियां और सूक्ष्मता जो है, मानसिकता से जुड़ी हुई खास करके आघात की परिस्थिति में जो होता है, the importance of that and the importance again of affirmative sexuality. मेरा अधिकार है कि नहीं, या सब इस नजर से मुझे देखेंगे कि 400 लोगों के साथ तो तेरा sexual intercourse हो चुका है,
400 मर्दों को तो नग्न या अर्धनग्न स्थिति में देख चुकी है. You've seen 500 men with their pants down, man. So she has no right in a future loving, consenting relationship with the dilemma कि उसको बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं तो क्या बताऊं, वो क्या सोचेगा, will he reject me? So there are a lot of complexities in these processes that we have to keep in mind. Also, let us not forget one thing, which, it just blew my mind. Earlier when all of you spoke so much about how organized the trafficking industry is, if our response systems are not that organized, it's a very tough battle. ये जंग जो है, ये कठिन है. Now look at, इनकी चतुराई देखिए, जो trafficking करते हैं, the madam and the pimp and so on. Friends, they give these 14, 15-year-old girls hormonal tablets so that they do not menstruate, ताकि 4 दिन की आमदनी इनकी नहीं जाए, so that there's no loss of 4 days of income. Can you imagine what 10 months of giving someone non-prescription hormonal medicine does to their health? Now, if this is not a human rights violation, then what is that? So I want to leave you with these ideas. I have a lot more to really look at the counseling processes, but I'm leaving the PowerPoint with you. There's another half more here, which looks at every stage of this. So finally, I just wanted to say that all our materials on this issue, including how do you interview children, how do you start the introduction, रिश्ता कैसे बनाते हैं, substantial inquiry कैसे करते हैं, and how do you close the interview, all this is available with Samvad. I also wanted to tell you, in continuation with the whole Panchayat against human trafficking issue, that महिला और बाल कल्याण मंत्रालय मंत्री महोदया ने हमसे 1 साल पहले कहा था कि संवाद पहल का काम जो है ये पंचायत लेवल पे की जाए, particularly in the 118 odd aspirational districts of the 700 odd districts in this country. Ma'am, आपको बताने में मुझे खुशी है कि we are launching our panchayat program as a pilot. We are actually starting partly with Odisha in 8 aspirational districts, choosing 1 panchayat from each district, along with an NGO and also state representatives. We've recently finished our work with Meghalaya and submitted a statewide child mental health policy to look at some of these issues. But we are launching it with the panchayat system, focusing entirely on the prevention part, which is the source part, to look at elected panchayat representatives, CDPO schools. So Samvad ka jo mandate hai to work with the education system, with the protection system, with the police system, ताकि जो framework जो है, the scaffolding which really keeps protection mechanisms in place, does not allow a child or a woman to reach a stage where the trafficking process then follows an inexorable march. So that's one part of what we're doing. The other part is that it requires very intensive training to look at the nuances of trauma. So हम लोग trauma-informed care पे, खास करके in the context of sexual trauma and in the trauma of trafficking, our modules are ready to roll out, and it will be our honor and our privilege from Samvad to, and the Ministry of Women and Child Development, Government of India, to assist not just the National Commission, but all state commissions present here, और जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर और अफसरां यहाँ मौजूद हैं, ये हमारा सौभाग्य होगा कि इस जंग में हम लोग साथ मिलके सहयोग, संपर्क और स्नेह के साथ ये चुनौती जो है इस पे हम अवश्य आगे जाते जाते काबू पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद। Thank you so much, sir. You have explained the psychosociological effects of trafficking in such great detail, and we could actually keep on hearing you, but due to the paucity of time, we have to be limited
in our sessions. And you have rightly explained, sir, the impact that trafficking has on survivors, right from physical to psychological to social. And the most interesting, sir, thing you mentioned was the missing R, the reclamation part, and how we should be reassuring to the survivors of trafficking, foster a healthy relationship with them and build confidence and trust. That is what is required. So we'll just have a quick open house discussion, and if anybody has any questions, we would just take it for 5 minutes and then we would move on to the next session. I'm serving in Sashastra Seema Bal, and while serving on Indo-Nepal border, we have seen so many cases in which the kids from the poor families of poor Nepali families, they are being brought into India for work in the Delhi NCR region. And when they are being asked about whether their family members are well aware of the facts that they are being taken by their relatives, they said that yeah, they are aware of the facts. So we believe that we are just tackling the instant problem over there, but we are not dealing with the actual problem. The instant case is being dealt over there, but not the actual problem of trafficking. So my question is that how to deal with such problem? इस प्रश्न के दो भाग हैं और सर आप बैठ जाइए प्लीज. Lot has been said about how do we quell this issue at the source. Now, it is not my place here to try and tell this august audience. देखिए, अक्सर कार्यशालाएं जो होती हैं और प्रशिक्षण के प्रोग्राम्स जो होती हैं और मीटिंग वगैरह जो होते हैं, उसके एंड में एक रिकमेंडेशन का सेक्शन आता है एंड पीपल गिव रिकमेंडेशंस, वो दर्ज किया जाता है, फाइल में डाला जाता है और फिर वो फाइलें पता नहीं कहाँ जाती हैं. तो रिकमेंडेशन हम बहुत दे सकते हैं. आई रिकमेंड दैट द वर्ल्ड शुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. यू नो, आई रिकमेंड दैट पॉवर्टी शुड बी इरेडिकेटेड. यू नो, मैं किसको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, कौन सुन रहा है, दैट. हालांकि ये सब सत्य है कि तो सर मैं एक धारणा पे, मेरा पूरा करियर जो है एक धारणा पे चला है. मेरे लिए सत्य का क्षण एकमात्र है जब मेरा क्लाइंट मेरे सामने बैठा है. The only moment of truth for me is when my child client is sitting in front of me. Everything else is an approximation and an appropriation of the truth. वो सत्य का क्षण है. तो that is why if you understand कि क्या ये 15 बच्चे एक ही इलाके से आते हैं और उस इलाके की खासियत कुछ ऐसी है. वीरेंद्र मिश्र ने कुछ ट्राइबल परंपराएं की बातें करी. इनफैक्ट नायर साहब आज सुबह ही एक प्रकरण का जिक्र कर रहे थे जहां एक एयरपोर्ट में 15 बच्चे थे और उनके साथ 8 लोग विदेश जा रहे थे. बिल्कुल इमिग्रेशन सब हो चुका था, लेकिन एक सतर्क CISF ऑफिसर ने उसको कुछ लगा यार उनके व्यवहार से कि कुछ गड़बड़ है, और वो बंगाली में बात कर रहे थे. ये बंगाली समझ रहा था, तो उसने हल्के से किसी एक से पूछा तो वो रो पड़ा. तो फिर इसको शक हुआ तो पूरा उसने बंद करवाया दैट. सो हाउ अलर्ट आर वी नॉट टू व्हाट इज सेड बट व्हाट इज नॉट सेड, बिकॉज इनको तैयारी की जाती है कि अगर कोई पकड़े तो ऐसा बोलना कि सबको मालूम है दैट. तो जब काउंसलिंग की बात होती है, इनफैक्ट Justice Geeta Mittal, who set up the special court in Saket and she retired as the Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court, she said कि जब हम testimony लेते हैं, बात ये नहीं है कि क्या पूछना है. The issue is not what to ask, the issue is how to ask. How do you take information from a child, a girl? How do you take information from a traumatized, brutalized woman? How do you take information from a 14-year-old who has hearing and speech deficit? और ये हमको तब पता हुआ जब मुजफ्फरपुर कांड में
जब सुप्रीम कोर्ट ने केस बिहार पुलिस से लेके सीबीआई को सौंपा था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि हम सीबीआई की मदद करें, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की मदद करें। 47 लड़कियां थीं उस बाल संस्था में। 3 साल के पीरियड में दे वर सिस्टमैटिकली अब्यूज्ड बाय द स्टाफ ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। उनके दोस्त, वहाँ के कर्मचारी और जितने भी ऐरे गहरे आने जाने वाले, कोई इलेक्ट्रिशियन, हाथ मार लो काइंड ऑफ। जनाब, बात यह है, किसी एक बच्चे के साथ एक बार एक व्यक्ति ने शोषण किया और हम हिस्ट्री ले रहे हैं, वो एक बात है। 47 लड़कियों के साथ 3 साल अनगिनत परिचित और अपरिचित लोगों ने, नोन एंड अननोन, दे सेड विच इंसिडेंट आर यू टेकिंग एविडेंस ऑफ? इसने तो 20 बार कांड किया है, ये तो 300 बार मेरे साथ हुआ है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये प्रशिक्षण में उस वक्त जो वो एक बच्चा या 15 बच्चे आपके सामने हैं और कुछ आपके मन में शक, तो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हम इसको कहते हैं। जब हमें अनुमान होता है कि यहां कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा है, तो उसकी इंडिसेस क्या है, उसका संकेत क्या है, ये सब हम संवाद के द्वारा पढ़ाते हैं। और उसके बाद आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया, फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए, ताकि वो घबरा न जाए, क्योंकि उसको पता नहीं कि आपका इरादा क्या है। Like I said, a known enemy is better than an unknown friend. You can't immediately expect that they will trust you. तो ये कुछ बारीकियां हैं इस काम में. So I agree with what Mr. Ji and Nair Sahab also said in the beginning. Police work is not easy. It's very tough work, and the police work in very tough circumstances, and it's very easy to vilify. बड़े आसानी से, but it's tough work. और तो इसीलिए हम लोग मौजूद हैं ना. That is why we are here to assist that. मुझे मालूम है कि ये आपके प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर नहीं है, लेकिन I believe that इस तरह के प्रश्न का हम एक चौखट, we can have a framework of reference which then informs how you respond in a given situation, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. We'd have one more question, please. Anybody wants to ask? Nobody? All right, then we'll move on to the next session now. Thank you so much, sir. Thank you so much once again, sir. Let's have a huge round of applause for sir. So moving on, our fourth and final session is on the role of NGOs in rescue, post-rescue care and rehabilitation. And our speaker for this session is Ms. Hasina Kharbib, founder, Impulse NGO Network. Let's have a huge round of applause for Hasina. Ms. Hasina has been working to provide sustainable livelihood in a safe environment for women in the northeastern states of India. What started out as a mission in her home state of Meghalaya has today evolved into a global program that aims to put an end to human trafficking and exploitation worldwide. Her work stands on two pillars. The first is Impulse NGO Network, which was conceptualized in 1987 and is a significant force against human trafficking today. The second pillar is Impulse Social Enterprises, which aims to promote local artisans and create sustainable livelihood, covering more than 700 women artisans in 8 northeastern states. She is an Ashoka Fellow, a Fulbright Scholar, as well as a Fellow of the Aspen India Leadership Initiative, a recipient of several honors and awards, and also a part of various boards and committees of both government and non-government organizations involved in social welfare, development, and human rights. Ms. Hasina has recently been honored in the 5th edition of Women Transforming India Awards by the Niti Aayog. We are so glad to have Ms. Hasina with us here today. I'd request Ms. Hasina to come on stage. I just want you all to watch this film just to wake up,
before I'm going to start the session after so many of information that has been gathered. I dream to dance with the tide. I am fulfilling someday. Let this be the epilogue to my life. When somebody accepts a job somewhere or accepts some opportunity, it's not that they really want to be enslaved or caught into a sexual exploitation. She wanted better money. Yes, everybody wants better option in life, better opportunity in life, but nobody wants to be sold. My name is Hasina Karbi. I'm 47 years old. I am from Meghalaya and born and brought up in Shillong. I would call myself a human rights defender. Impulse NGO Network evolved over the last 26 years, a collective response to engage both the private and the public to come together to intervene to address human trafficking. There's so many unreported cases. There would be more than 80 to 90,000 of cases from across the 8 states of the northeast of India that we've been working. And that is amazingly really, really high in terms of the people coming from this region. As an individual, I took the first step, the bold step to say, any girls that you find from the northeast, please let us know. And that step led from 2 cases to 3 to 4, and in the course of 30 years now, we have more than 74,000 cases that the organization has dealt. When we started to work on the issue, I would say that women from the region, because of lack of economic opportunities, were moving out of the region for job opportunities. Today, the social media and the internet is far reach to every villages that people are looking as the best option and how beautiful it would be to get out of the region. We have seen that girls from the northeast are no longer going to different states in India like Mumbai or Calcutta or Bangalore. They're going Southeast Asia. Now, our states in the region, we are bordering China, we are bordering Myanmar, we're bordering Bangladesh in large way. We have the chicken neck, which is also connecting to Nepal. Most of the connectivity is by road, by bus. And the second connectivity that takes people from the different part of the northeast now is Guwahati is a train station that leads people to get out of the different parts of the northeast. Many family does not really understand that going out of the region can actually make the young girl or the young women unsafe, because they have not really understood the gravity that at the destination point, getting a job is just not getting a job. It's who's giving that job and what is the facilities in that job and what is the safety in that job. That is, the gap of understanding. Family allow because they didn't realize that that would, let them to be vulnerable. There has to be economic opportunities in the spaces that women and girls come from, whether we are talking about a rural context or we are talking about an urban context. Because that is an option where economic viability make them have more strength, not to accept, opportunities outside which will make them vulnerable. The secret of my success is identifying change makers in the respective communities that we work, whether it's states in the northeast, the neighboring countries, championing their leadership to accept that we can collectively come together to address the issue of human trafficking. Thank you very much. I thought I'd just open with that, but I'll take it from my last word when I said change makers. Change makers are not just people working in the NGO sector. Change makers are also people from the enforcement, people in the system, people in the government. So I think with that, I would say, Rekha ji,
you are making that change, being at the NCW, that NCW is taking this step forward in ensuring that if we have to address human trafficking, let's bring this whole convergence. And I think that convergence is very important. And when I take the other back, I really want to give gratitude to Dr. P.M. Nair, because the entire model that came up from the Northeast, this short film is just to open up and wake up all of us from a lot of session today, was an instrument to actually bring a lot of law enforcement in the Northeast, where NGO and law enforcement became collaborators. It's very important to actually, the role of NGO is to bring collaboration. Because if you bring collaboration, you actually disengage any silos. Because when we work in silos, we realize that we reinvent the wheel. So NGO cannot be reinventing the wheel and waste the resources. We are supposed to make it much more of a convergence so that resources are being plugged in. Now, when we talk about the subject matter that's being given to me today, 25 years of my journey, I would just say that most of us has been in this journey. I mean, many nonprofits in the country, in the Northeast, has been in together. We have seen that when there is a convergence, there's a higher success to address human trafficking. Wherever there is a silo, it becomes disengaged and we reinvent the wheel. So it's very critical that how we as NGO cannot be driven by a project. You know, we have to be driven by bringing those convergence together, whether for reporting, for rescue, for rehabilitation, for repatriation, for reintegration, or for restitution. These are the 6 R's that Impulse have journeyed through the many years, through these partnerships. And we have brought together organization, not only in the source. I know it's a good practice from the Northeast, but it's also in the destination. How we collaborated to engage the anti-human trafficking unit. When we start off, I still remember Mr. Nair, when we came to Shillong, we didn't have AHTU, we had nodal officer in the anti-trafficking when it was set in the very beginning. So I would say I journeyed from that time. And we have seen that the AHTU has the power because it's been provided. It has a system that it can really collaborate. So if an NGO, the role of an NGO is to add value to that creation, then you are engaging a better way and processes from end to end. And that's what we have done it with all the cases that we have dealt. 2012, this relationship of a good practice between the NGO and the law enforcement, and also the social welfare and the labor, got us the World Innovation Prize, that it can be replicated. Now, sensitivity and training can be collaborated. It can be by NGOs together with the enforcement. It can be by the enforcement with co-support from the NGOs. That's an important aspect that we need to understand. Because sometimes we realize that today in our country, there's so much of good practices, as Mr. Nair had said in the beginning. This has been done by various NGOs across the country. If day to day we have a compendium, my suggestion, a compendium, maybe National Commission, you know, of all these good practices and see which are the ones that can be replicated further. It would be a way forward to cut down on those resources and engage in a better intervention on human trafficking. Number 2, if you're looking at post-rescue rehabilitation, shelter home has been one of the required need that every state has to have. Some state have, some state don't have. Some state has rehabilitation center run by NGO, notified by the CWC and the JGB, and notified by the state. Some state has rehabilitation created. But the question here now is, wherever there is a rehabilitation that is being set up, the role of NGO is to strengthen this existence, not to reinvent and say they have X, Y, and Z gap. This gap will continue to be a gap forever. If we keep on pointing fingers, we have done it, the state hasn't done it. So what we have learned from our 20 years of experiences is engaging a support system. What is that engagement post-rescue in a support system? I think we had, Dr. Shekhar
we had Dr. Shekhar who mentioned about I will not repeat what he just said, but in a rehabilitation center, most of the NGO run in the country does not have a psychologist. They don't have a very trained counselor. Even if they have a counselor, they're not qualified to what has been shared already by the previous speaker. And that is a biggest challenge and will continue to be a challenge. What we have done in the post-rescue is we attach, at least in the Northeast, we have a list of professional counselors, psychologists who are pro bono attached to these centers, so that there is an add-on support system as and when the case is being required. But definitely, if the country today put a way forward that they will have one trained professional every state, that would be the best option ever. But in the absence of it, the role of NGO post-rescue is to engage professional, pro bono, to attach to this rehabilitation center, so that those kind of post-traumatic syndrome that I think our previous speaker has mentioned can be at least, engage in responding in an effective manner. That's a very, very critical part. The role of the National Commission for Women in the post-rescue, very often we have seen from our cases that we have dealt in the past, is when a rescued woman comes back home, her reintegration back in the community or in the society. She might have been rescued when she was, she was a child. She was trafficked when she was a child. But she was rescued when she was a woman. She's back home. Now the question here, she gets married. We have had many cases like that. And then the situation is these cases again referred to State Commission for Women because of domestic violence and many other violences that they face. And then it's very important that every State Women's Commission understand if domestic violence are actually happening to somebody who's already a victim of human trafficking. How should they engage? And how should they respond to that? Because everybody who gets reintegrated back in the society has every right to move on. I think our Dr. Shekhar will agree with me in that. But the post-traumatic doesn't get over in 1 or 2 years. We've had like many of those cases. They keep on happening the same situation. So I think the role of State Women's Commission is to also understand when cases are coming, the backdrop, sometimes these backdrop of who these women are very critical. So that's one role of doing it. The other is the shelter home. Engaging, because now in every state, we still have challenges on the number of shelter home available and the requirement. But above all, what we have taken as a way forward as a non-profit organization, our partner organization in the Northeast who work together is, we should prevent before it happens. Let's look at a long-term role of the NGOs in preventing, from taking place. And that's where we started the Livelihood Initiative. So I just wanted to correct, it's not 700, but it's 7,000 women who are engaged under the Impulse Social Enterprises, especially from those vulnerable areas in the Northeast, where they have traditional skills, and they have got, they can work from home, but we have given them a resilience market. What is a resilient market? If you don't have a resilient market, you cannot tell the woman don't go out. No NGO, no government has any right. But if you provide a resilient market in the home, then the woman make that choices not to migrate unsafely or not to send the children to work unsafely because she has a choice of the power. So I think when we talk about this subject matter that's being given to me right now is that what is a rehabilitation program for a survivor of human trafficking? It is economic livelihood, which is engaging in a sustainable way. And the sustainable way has to be a resilience market. If you don't have resilience market, don't expect that if those women are being put, or young girls in the shelter home, after assessing many shelter homes in the country, everybody doesn't want to do sewing and knitting and stitching, They don't want to do that. That is not the future of a rehabilitation for post-rescued. If all of us has choices to choose what we want to do, then definitely rescued survivor has choices as well. How do we create those choices? It's where a PPP model can work very, very well between an NGO, the government, and maybe a CSR initiative. CSR initiative in the country should be tapped, and I think that would be my suggestion, Rekha ji.
And we should get the corporate to tap into the economic livelihood initiative for post-rescue. I think Mr. Nair mentioned about how those girls, are making ready-made garments, they're making all of that. If we make this a nationwide program, then what happened after post-rescue, the girls has choices, with a opportunity. That's very important. Not that every rehabilitation home should just teach them how to make candle. Nobody wants us to want to make candle. That is not rehabilitation. Or stitching is not rehabilitation. That is not, if you ask somebody, would you just want to be a tailor? No, they have aspiration. We have to understand that aspiration has to be taken into consideration when we talk about rehabilitation program for rescued survivors. An NGO has to move a way forward and not just engage where the government scheme is there. When the government scheme say do A, B, C, NGO can be more creative, more engaging with CSR, make it much more viable, make it much more progressive. So you can always think out of the box. It is not necessary that when a program or a scheme say you have to run only tailoring center, it does not mean you limit your tailoring center. You can have an additional collaboration and provide openings and gateways. That is where we found the kind of collaboration we have done through the Impulse model to be more successful. We have many cases on a success rate of non-re-trafficking. Why? Because they had the choices and the engagement, which is consistent. So that's an important element of role of NGO, is bringing together the government scheme, which is quite outdated in many ways, candle making and this making, engaging into the new skill set, which is marketable in nature, to ensure that they don't get re-trafficked. So that's an important part that we need to see in a convergence manner, where we bring in, that would be the rehabilitation. We did it, we succeeded it. It is a small pilot, we did it for the northeast of India. We have a long way to go, we have many more, we have more organizations have to join hands into it, but it is a good success thing that can be replicated. The other aspect is vulnerable community. Like right now, every day we might be reading the floods in Assam, which is devastating. This is a yearly issue. Now it's affecting many other states in the Northeast as well. This year, there has been a research that was published in New York just 3 days ago by Professor Sharma. We were listed as the best good practices during COVID. Nobody got re-trafficked from the communities we work because we mapped it. Every market resilience continued to be during COVID time. The vulnerability did not, disengage. Disaster did not, so they were all weaving from home. That study shows that initiative or prevention activities will have to be linked to traditional skill, but with an enhancement for better market availability. So that communities that are there all over the country are being able to be engaged. I think we have this very interesting initiative by the Ministry of Tribal Affairs, which I think they tied up with Facebook as well, called the GOAL program. How can trafficking situation can be also part of that process? So we engage the livelihood, the strength in these, in these initiatives. We need to look at these convergence. We have to look at successful rehabilitation program. And that is where the role of NGO is not to work in isolation. I think the Impulse model has paved a way of bringing private and public partnership, bringing convergence, keeping ego behind. As many NGOs sometimes we have so much of ego, it's my program. The time that we keep saying my program, we will never be successful because we cannot engage more responses. The moment we say our program, and that's what the Impulse model has stretched across 4 countries, working scaling out and scaling deep in this country, because we said it's our program together. What we have learned from scratch, other NGO can do it together and collaborate it. Now the other thing is that if AH2 is already there to do rescue operation, the importance of what NGO can do is engage with the AH2. We did that all through. I know sometime we might not get 100% of success because of the, the network of operation.
But that always pave a way for better engagement of the law enforcement who are engaged in the AHTU. The challenge of AHTU today, we realize that the officer keep getting transferred. I think that's something we have to bring to the government. Every year they get transferred. You train them, they get transferred. You train them, they get transferred. So by the time they're fully engaged, you know, another person has come in their place. So that is a challenge. Even for NGOs too, is a challenge. But the moment we work with the system, we have to engage that the ongoing training has to comprehend that the next enforcement is sensitive and now who takes over constantly. Consistency has to be there. So we will be able to build a better response. Because what we have seen in our 20 years of experience is that in the HTU, there are officers who was very dive deep, you know, together, working together. But there are also officers who were there just for a few months and they have to go, you know. So whatever change they want to bring to, they are unable to bring it. That's another way of how NGO can constantly engage the whole system, not just the division, the whole system of the police department, so that there's matter of an engagement into it. So that is an important element of the role of NGOs. Not that I will do it because the HTU is not doing it. The moment we say if they don't do it, we will do it, then we disengage in a convergence. So that is something that we need, and I think every State Women's Commission can bring NGOs in each state in this dialogue with the AHTU. That's one way forward. Because then this dialogue can also enhance a collaborative response and also engage the NGO who's already working in those respective states under your own program that you're going on at the moment. And that brings more of a communication, not an isolated communication, you know. And the other thing is fill the gaps. Filling the gaps mean the rehabilitation program is still the biggest challenge that India has today, you know, post-rescue. How can these, maybe re-looking at the schemes of rehabilitation, I think it's time that, you know, the various schemes from the Ministry of Social Justice, Ministry of Women and Child, you know, we have many schemes that is there for rehabilitation. Can we re-look at those schemes? We have to go with the new century right now, not what we used to do, you know, 10 or 15 years ago. We really have to look at the scheme. Are they applicable in today's context? Is the skill building within the rehabilitation applicable in the next context? Because for us, we have seen as a challenge that it is not applicable sometimes. Because half the girls we have interviewed throughout many of the research that we have conducted, they say, "Humko to candle nahi banana hai. I need a better job." You know, so I mean, that is aspiration. But then the rehabilitation center does not have any other thing. There's no collaboration. How do we meet the gap? One, we need to review all the scheme. Two, we need to bring a PPP model in everywhere so we have a better integrated. Whatever integration we had done, we saw the success because half of our rescued girls are either running entrepreneurship program, they're running, you know, different production center, they are into, you know, there are many multiple choices. So we have to create this opportunity to make the anti-trafficking initiative in our country more progressive, and also giving non-re-trafficking to take place, because that is a very important element. The other is the inter-dialogue between departments, you know, and then the fact about, you know, I mean, we have this in children and women. Every time a child is trafficked, rescue as a woman. How do we deal, you know? So we have to bring NCPCR and National Women's Commission together to see this face, you know, I mean, as a child and then after, you know, being a woman. So how do we have that? So that is something that I would like to close with a positive thing. NGO will have to put the ego behind. We have to be more progressive. We have to ensure that there's better convergence. And we have to see how we add value to the existing units like AHTU in the country so that we are able to respond more positively. Thank you. Thank you so much, Hasina ma'am, for talking about how can we create sustainable life-enhancing opportunities and a safe environment for women and children post-rescue. You also mentioned a very important fact that the aspirations of survivors, their choices have to be taken into consideration. Everyone does not want to paint and stitch, and which skills they want to learn and which skills they want to upgrade, that we have to understand. And lastly, we cannot end human trafficking
until women at the grassroots are skillfully empowered and economically self-sufficient. Thank you so much. We have come to the conclusion of the session, and as our Honorable Chairperson had suggested in the beginning, that at the end we would have suggestions and way forward by all our speakers. So I would request all our speakers, Ms. Hasina is here, Shri PM Nair sir, Dr. Shekhar sir, and Dr. Virendra sir, to kindly come up on the dais, and if you could just wrap up the suggestions or way forward. Yes, sir, please. We can start with Nair sir. 5 minutes to each speaker for the way forward. Namaste again. I know my apologies if I was very fast in the morning. मेरे को किसने बताया कि आप इतना जल्दी क्यों बोलते हो? See, English we got English में 26 letters होता है ना English. I learned Malayalam. Malayalam में 53 letters होता है. तो 26 letters बोलने का टाइम में हमको 53 बोलना पड़ता है. On a lighter vein. Well. My apologies if I was too fast, but my presentation is there. Presentation जिसको चाहिए मैं दे दूँगा. You can ask for it. Send a WhatsApp or something. I'll send it across to you. Please use it. It is a very concise program. A lot of things I put information into that. Though I was skipping that with purpose, not that I was skipping for time. Skipping with purpose. Now suggestions recommendation में मैंने मेरा slide में ही presentation में last 2 slides में बताया था. Number 1. It is coordination and convergence, which I think all of us spoke. Everybody spoke here. Even Hasina madam was concluding with that part. And NCW and SCW, this great initiative by Rekhaji, national level with the anti-human trafficking cell. If all the states can have one cell, first and foremost is convergence, madam. Convergence. Hota nahi hai. Very, very frank, you know what it is. Police in different direction, NGO in different direction, welfare department different direction, women and child different direction. They have their own mandate. कोई गलती नहीं बता रहा हूँ. But एक साथ बैठ करके to think of that child or the woman and how if all of them come together, you can do marvelous work. So get that convergence could be your first and foremost agenda in your action plan. To bring out a convergence, you can even think of a small SOP on convergence. That's why I said, National Commission for Women, we can make out some sort of template. It's not that this is the be-all, end-all. Some sort of template, a matrix of the departments, their roles, and how the convergence can be there. I won't call it an SOP. SOP is a very abused word. I'm sorry if it's the right word about it. You know, everybody says SOP. So many SOPs have come. So it could be a matrix. It could be a template. हर डिपार्टमेंट का क्या रोल है, उसमें क्या किससे क्या लिंक करेगा. If a child is trafficked, what will happen? If a woman is trafficked, what will happen? If an adult woman is trafficked, what will happen? So उस तरह का एक sort of template we can bring in. Then joint training. BPRD is doing a great job, as I mentioned earlier, training different levels. But this joint training did not happen. Is not happening. I was giving the example of 2005 when I was training police officers in Andhra Pradesh. After police training, went to prosecutors training, and evening I got a message from the registrar that the Chief Justice wants to meet me. I went to the Chief Justice and the registrar gave me 10 minutes time.
And the Chief Justice of India, that Andhra Pradesh came to receive me and all those. He said, Mr. Nair, I heard so much about you. I was also quite surprised. He takes me in, he gives me coffee, tea, and then discussions went on till 11:30 night. Went at 8 o'clock. You know, what was Chief Justice of Andhra Pradesh talking to me? And he understood entire dimensions. He said, Mr. Nair, आपने ट्रेनिंग दिया पुलिस को, आपने ट्रेनिंग दिया प्रोसिक्यूटर्स को, आपने ट्रेनिंग जजेस को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, सर, आई वाज स्टिल इन द पुलिस. I said, I am a police officer, हम कैसे जजेस को? No, Mr. Nair. This is the problem with you guys. All of us have to be trained. You know, he said, I am opening that judicial academy for combined training. Very interesting, 2005. And he said, can you do it coming week? I said, yeah, why not, sir? And 2 resource persons, we had 15 judges, 15 prosecutors, and 15 police officers were identified. That training made a huge impact. Today, if I can tell you, vouchsafe that across the nation, across the country, in one state where the law enforcement is the best, with all respect, I am giving a very objective assessment. I am not in favor of any agency, any person, but the law enforcement is one of the best in the country, in Telangana. The foundation was laid there. You know, that foundation people took on. It's not one-time business. Usko close kar diya, band kar diya nahi hai. Usko went on and on. That training, joint training makes a huge impact. Police, prosecutors, and judiciary is one. Number 2, Hasina Madam rightly said, police needs public support. NGO needs police support. You know, this is missing. 35 years I was in the police, and there also we found this is very important to have to this joint convergence. So can the NGOs and the police be brought together? This joint training of the police in the states, madam, wherever you are coming from, since the women commissions are here, please organize joint training of the police officers, labor department, welfare department, women and child department, caregivers, psychological counselors, forensic scientists, and police together. आप देखो क्या impact पड़ेगा? It will make a huge impact. For the training program, we need to have modules, we need to have curriculum. Madam Rekha Sharma told me in the morning, we'll work on this. I'll all support, sit behind Madam and do everything for the National Commission. We'll work together. We'll find appropriate time and period, and we'll develop as early as possible the curriculum, E-based modules we'll develop. I mentioned earlier a functional audit of anti-human trafficking units, CWC and DCPU is required. Nobody does that. If the State Commission can take up, it is not fault finding. It's only telling them, boss, this is your mandate, this is what you have done, this is the way you have done, this is good, this is bad. Some sort of functional audit can be done of the AHCUs, it will be good. Reward those who have done a good job, please do that. Reward hota nahi hai. If you get the best, today I found one inspector from Indo doing magnificent work, the lady inspector here. You know, why not get the lady inspector here and unko shake hand here, give a set of books to her or some pen set to her? It makes a huge impact. It becomes a national daily. That inspector of so-and-so doing great job in Indore has been rewarded. That's what is required. Ranks are immaterial. Constable, head constables, like, who's doing a good job? That reward not only for the police, but also other caregivers, the psychological caregivers, the forensic scientists, the NGOs. That could be thought of next time we consider a problem like issue like this. Transport of trafficking, I don't want to speak on now because we have already told one-to-one with the NCW how to go about. Awareness to the adolescents, very important. Therefore, anti-human trafficking club in the colleges. I would request all of you to start this anti-human trafficking club in the colleges, empowering the youth that they shall not violate rights of women and children. They shall not fall in the trap. They shall never be a sort of customer. They should be a human rights person. And then demand control is a second part. The third is about the panchayat. Panchayat against human trafficking. If we can empower the panchayats, since Dr. Sheshadri is going to work with the panchayats in Odisha, I am not going to spare him now. We will work along with that panchayats. Human trafficking is a mission, so the panchayat against human trafficking, we can do wherever you want panchayats are, wherever available panchayats are there, we can take it forward. Last but not the least, I would still reiterate the point I mentioned earlier, the National Commission for Women, the National Commission for Protection of Child Rights, the BPRD and the National Crime Records Bureau, 2 government agencies and 2 commissions, can come together and we can work out India TIP report, India Trafficking Persons report. We don't want to go by somebody else's report. Many other countries are making that. We don't want that. We want our India report. It will only factual and database, complete data of the police and the NGOs, child line, everything will be part of that.
That sort of an India tip report we can consider bringing it. It's not a Herculean job. Things are available there. We only need an initiative, one person to sit together and do it. Other help can be given. Last but not the least, the islands of excellence have to be published. As many people also spoke, if we can bring out a compendium of the good practices across the country. Thank you. Namaste. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your valuable suggestions. We'll surely implement it in action. I request Virendra Mishra, sir, to give some suggestions. So you can be seated there. Yeah, thank you. I think more or less everything has been covered. That's what we should do. What has been suggested by PM Nair sir. Just one or two things that I would like to add on. Not add on, in fact, add to the points which he has already said. As we said, convergence is important. But normally, one thing we have to understand that India is, as we call it, we have demographic dividend. As you know, the population of India, the average age of India's population is 29 now. और अगर 29 साल हमारे पूरे भारत के पॉपुलेशन का एवरेज अगर निकलता है, वो मीडियन या मोड जो भी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने यूथ हैं हमारे पास में. तो हमको उनको मोबिलाइज करना ज़रूरी है. प्रॉब्लम होता है कि हम ही लोग लगता है कि हम ही लोग सब कुछ सॉल्व कर देंगे. सॉल्व आप अकेले नहीं कर सकते हैं और यूथ का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा. तो इसीलिए आप इस कमरे से सब जाएं. तो मैं इमीडिएट टेक अवे की बात कर रहा हूँ, वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ. बाकी चीज़ें सर ने बता ही दिया है. वो ये है कि जब इस कमरे से आप निकलें तो यू शुड बी एन एम्बेसडर ऑफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्क. आप इस कमरे से एम्बेसडर बन के बाहर निकलिए और जो आपने यहाँ पे समझा है, अगर कुछ बिंदु है जो टेक अवेज हैं इतने देर का, वो शेयर जरूर करिए, नहीं तो कल तक आप भूल जाएंगे इसको. हर व्यक्ति इतना बिजी है अपनी जिंदगी में कि यहाँ से जाते ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग वुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर यू. जो जिस प्रोफेशन में, वो प्रोफेशन में फिर धंस जाएगा वो. तो इसको धंसने मत दीजिए, इसको पीछे भूलिए मत, पीछे मत होने दीजिए. इसको टेक अवे के रूप में जो आपको मिलता है उससे एक बार चर्चा कर लीजिए. जो आपने यहाँ से टेक अवे है आपका, जो चीज़ें सीख के जा रहे हैं, तो इस तरीके से एक चेन बनेगा. और अगर चेन बनेगा तभी हम इसको रोक पाएंगे. थैंक यू. Thank you, sir. As you have rightly said, all of us should strive to become ambassadors of anti-human trafficking. Moving on, Dr. Shekhar, sir, we would love to hear your valuable suggestions. Thank you very much. I think 10 बिंदुओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ. I want to share 10 points based on everything that has been said today. But I want to predicate what I wish to say on certain aspects about training, because training is very central too. I retired last year in November after serving the government of India for 40 years. You know, सरकारी रूल क्या, जब आप 65 साल के होते तो वो टाटा बाय बाय बोल के आपको भेज देते हैं. ये अलग बात है कि अभी भी मैं संवाद में सलाहकार की हैसियत से काम कर रहा हूँ. We have no training culture in this country. And I'll tell you why. Somebody calls me to say, we are having a 5-day training for members of the Child Welfare Committee. Would you come to and care to do the program? I said, I'll be delighted to do this. I will send you the 5-day curriculum. They said, no, we don't want you to do the 5-day curriculum. Just take a session for half an hour. I said, why? National Institute, the senior most child psychiatrist in this country, is telling you that I will design a okay, forget it. Who are you calling? We don't know yet. We are looking at who we can call. I said, are they going to meet each other and discuss what they will deliver? What will you do for contradictions and repetitions? I said, don't call me. I do not wish to come for this kind of training. The instructions of the Honorable Minister is very clear. Standardized training, no negotiations, no compromising. I want to come to several points. First point raised by Asholi Chalai. Understanding the problem, where are the tools, where is the insight? Part of Samvad's mandate was to develop these tools. They are available in
our website, which is nimhanschildprotect.in, NIMHANS, nimhanschildprotect.in, and our YouTube channel is Samvad, SAMVAD, Samvad Nimhans. All the material in our website is public domain free access. We do not believe in copyright, we believe in copyleft. There's no point in developing material and holding on to ourselves. Please use it, adapt it, translate it, just acknowledge us. So these tools are available. The second point that Asholi Chalai made was about attitude to traffic survivors. It is my submission to the Commission that as far as the source is concerned and the way women and girls are looked upon in families, on the one hand, and on the other hand, what happens after trafficking, these two agendas need to be mounted on campaign mode if we have to address trafficking. My third point refers to what Balaji Srivastav said, कि कानूनी प्रावधान जो हैं, what are the provisions available in the legal systems, should be known to every person in panchayats. Schemes kya hai, compensation kya hai that, and this is what we are doing in our panchayat rollout program. The fourth point that Rekha ma'am made, which is that women and children are targeted because of their vulnerabilities, and that's where, at least from a child perspective, part of Samvad's work is empowerment of children in schools through life skills programs, particularly where gender and sexuality is concerned. रिश्तों को हम कैसे समझते हैं? रिश्तों की परिभाषा क्या है? And the thing is, whether you're 17 years old, whether you're 30 years old, or whether you're 66-year-old, the rules are the same for any relationship. What is the nature of the relationship? Issues of health and safety, issues of privacy and boundaries, issues of consent and permission, non-coercive. So there are a whole set of rules which we do as life skills so that they are in a position to be able to deal with pressures and challenges when they're approached by strangers for. The next point I wanted to make was in continuation with Dr. Nayar's whole Panchayat Against Human Trafficking issue. We personally believe that the Panchayat is a very powerful location, particularly with the new dispensation in the JJ Act, where the district magistrate is empowered to make decisions, including, as Virendra Mishra ji knows, for Kara as well, that adoption-related issues. And our Panchayat rollout is already ready. We have materials already ready, our pamphlets, our videos, and to add a component from the NCW framework would be a matter of just an addition. The other issue I want to draw your attention to is the whole issue of communication skills, which again Dr. Nair alluded to. साथियों, ये पॉक्सों का 10वां साल है. 2012 में ये कानून लागू हुआ था. We are in 2022. We are in discussion, as I was telling Mishra ji, with the National Judicial Academy to hold a 2-day intensive consultation कि 10 साल में हुआ क्या है, convictions कितनी है, pendency कितना है. Nair Sahab referred to the training of judges. I would like to let you know that we have done at least 14 programs for state judicial academies, both on children in conflict with the law and for POCSO, in the form of a parliamentary debate. We make 3 propositions for children in conflict with the law, which is section 15 of preliminary assessment for 16 to 18-year-olds accused of a heinous crime, and for POCSO. 3 judges speak for the motion, 3 judges speak against, and there are 3 people who are on the panel. So far, Justice Madan Lokur, retired Judge Supreme Court and ex-chairperson Supreme Court Committee on Juvenile Justice, the chairman of the Juvenile Justice Committee of that High Court, and I were on the panel, and all the judicial officers attended. And this style of training of a parliamentary debate is a very powerful way for learning to take place. The next point I wanted to make is the point that Mishra ji made about the importance of SIRs and home study reports, particularly in repatriation and in placing these children back, and how sometimes it lacks in details. And therefore, we have templates and formats about how these kind of assessments need to be done. And finally, I come back to the point, which is the provision of trained mental health counselors in rehab centers that, as I told Hasina, we've just come back from Meghalaya. After a 5-day trip, we did 27 meetings because I can sit in my office and write a policy.
That's not how you write a policy. You have to speak to duty bearers and stakeholders. And we've done an intensive study of the mental health system. So we were in Sandy's place, which is Sanker, with the Meghalaya Institute of Mental Health. We were with NEGRIMS and with the district mental health program. So we are actually working out a system by which you will have a list of people. In fact, the Honorable Minister wanted us to have a resource of mental health professionals across states, which is ready, and we hope to release it as Samvad completes 10 years. And finally, we have CSR initiatives to be tapped upon, which is what you referred to, as well as the livelihood issues to survivors, which Asholi Chalai referred to. We all know that recently a certain industrialist said that 60,000 crores would be dedicated toward corpus funding. I will not name the person. Here is the opportunity to tap into this 60,000 crores because it has been promised for education and for health and so on. And like I said, mental health is such a critical part of health that we need to look at these kind of corporate sources to really strengthen the kind of program that तो इससे जो भी राशि से जो भी हमें सहारा मिलेगा और हमारे काम में जो ताकत और हमारी काम की प्रक्रिया में जो सुविधा मिलेगी इसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है Thank you very much. Thank you so much, sir, for highlighting all the important points of the session of each speaker so beautifully and aptly. Moving on, our last speaker, Hasina ma'am, I just request you to share a few thoughts. So I think I'll just add that today I think we have the cyber crime division separately in the enforcement, and we have the anti-human trafficking division is separately. But if you look at all the speakers today most of the online trafficking is taking shape. So I think there has to be an integrated approach that cybercrime cannot be separate now, but they have to have an integrated approach so that AHTU also understand that trafficking happen online and how to deal with it. So that is something we need to look, because it's no longer about brothel-based, hotel-based, it's also online. Now, if the online is going to be dealt by cyber division and AHTU is not going to deal with it without a communication, there will always be a situation of understanding the clarity of it. So I think we need to bring that on board. Second is, I think from the training component, many handbook, many training materials has been developed. I mean, we have one of them sitting here, Mr. PM Nair, at different division, and we have Mr. Virendriji and everybody who's made many training, and many more in the country. Can State Women's Commission ensure a database of every state's what available training manual is there in the country now? Who have developed them? Very important. Whether it is an NGO development, a collaborative development, a government development. Can the National Commission for Women put a division to review existing material so we don't reinvent the wheel and go for an upgradation? That's very important. Upgradation means in the world of today, digitalization has become the mode. So do we go into the digitalization way, visual way, that people don't have the time to read 15 pages any longer? I mean, hardly even law enforcement when doing training, the capacity of retention is very, very less. It's like at a click of a button. We have to look at that. What is the mode that we will make them more proactively engage in the training is something we need to look into it. That's my other suggestion. The third, I think the resources that Dr. Shekhar has just mentioned, can we bring, collaborated, can CII, FICCI, all of them be called for a meeting with NCW to see where the role is, where the role of the corporate world in responding to post, rescued rehabilitation program. And if we are talking about creating opportunity and aspiration, then it's time the corporate world, join hands in the fight with human trafficking. Thank you. Thank you so much, Hasina ma'am, for mentioning about the upgradation and digitization of resources and talking about how corporates can play an important role, and I'm sure NCW would definitely look into this aspect too.
Lastly, I'd request our Honorable Chairperson, ma'am, to say a few words. The resource persons have touched every point. I only have to take all these points and work on these points. So I promise that today's working. It is okay. So today's takeaways, NCW is going to work, and we will be starting with the CSIR meeting with the FICI and Flow and all that. In another 1 month, I promise that we'll have a big meeting with them and see how we can get those funds for our drive against human trafficking. So thank you all for the suggestion. Thank you, each one of you. We will keep on meeting and we will keep on troubling. Especially we have to prepare the module for the cells, anti-human trafficking cells. We will take your help for those modules, and maybe we'll invite you in near future. Thank you so much once again. Thank you so much, ma'am. Let's have a huge round of applause for all the speakers. What an informative and insightful session we had throughout the day. And I think the biggest takeaway for all of us today, everybody would agree, is understanding and valuing the importance of a powerful partnership, the power of working collectively. Each of us is an ally and a partner in this fight against human trafficking. Each of us has a significant role to play. And if all of us harness our energies in that direction, work together, then there is no force that can stop us to make the world free of human trafficking and exploitation. I now request our senior coordinator, Madam Leelabati, to extend a vote of thanks to our distinguished speakers and our valued participants. Honorable Chairperson, National Commission for Women, Madam Rekha Sharma ji. Honorable Director General of BPRND, Sri Balaji Srivastav ji, in absentia. Distinguished resource persons of today, and senior officers of all the ministries and social welfare departments, police departments from UTs and states, paramilitary forces, as well as our distinguished guests and participants. A very good afternoon, ladies and gentlemen. As we come to the close of the seminar, it is a great honor and privilege to extend a vote of thanks to this august gathering. I express my heartfelt thanks to the Chairperson of National Commission for Women, Madam Rekha Sharma ji, for the initiative she took in holding this program and her constant support and guidance. Thank you, ma'am. We owe deep gratitude to the BPRND for collaborating with the National Commission for Women in organizing today's seminar, for their unstinting support and cooperation. I'm grateful to the distinguished resource persons who, despite heavy schedule, have spared time and made available for today's program, giving rich insight on the topic. I also take this opportunity to express my sincere thanks to all the state commissions for women, senior officers of ministries, police departments, women and child, representatives from SIRDs, various state training institutes, hospitals, representatives of civil society organizations, academia, and all the participants. And also special thanks to the young friends, students from law universities and colleges. Last but not the least, it would not have been possible to hold an event of such a scale and magnitude without this guidance of our Joint Secretary, Sri Asoli Chalai sir, and the sincere and untiring efforts and unflinching commitment of all the colleagues in the National Commission for Women. Thank you all. Have a wonderful evening, please.